can we have an absolutely energetic, a warm welcome for all the guests here on NDTV YUVA. A huge round of applause to open this wonderful day that we have planned for all of these young faces in front of us. Absolutely, Arun. A good morning and a very warm welcome to NDTV YUVA 2026. We have youngsters here. The vibe is young and dynamic, just like us. The ideas are bold and the main character energy that is non-negotiable. This is that room where Gen Z isn't just scrolling through change, they are creating it. Because let's be real, this generation doesn't wait for permission. Absolutely, Arun. We clock it, call it out, scroll on Instagram, meme it, and then turn it into a movement, isn't it? Yes, from Diet Coke shortages becoming a full-blown personality trait, to the comeback of wired headphones, to the rise of the dirty soda trend, we are laughing, posting, and romanticizing chaos. But there's also a stronger shift happening. Because across the Indian subcontinent, Gen Z today, they are questioning, they are challenging, and yes, sometimes even revolting. This is a generation that can switch from reels to real talk in seconds, from side hustles to startups, from content to consciousness. And that's exactly what today is about. Absolutely, Arun. We have a stellar lineup for all of you here. Over the next few hours, you'll hear from leaders, creators, athletes, entrepreneurs, people who don't just follow trends, they perhaps become them, and they will inspire you today. Of course, so whether you are here to learn, to network, or just to feel seen, you are in the right place, because this isn't just another event. This is a pulse check on a generation that refuses to be boxed in. Welcome to NDTV YUVA 2026. But before we go ahead, a huge round of applause. We want the energy to remain high before we start our first session. And we also want to start by introducing Radhia Agarwal, a holistic transformation coach and graphologist. She brings a unique perspective to the world of healing and self-discovery by blending ancient wisdom with modern tools. That's going to be really exciting, because today she brings forth Graphology. It's basically a study of one's handwriting in a way that is engaging, revealing, and thought-provoking. So we'll see her interact with our guests throughout the day, but we kick off the first session of NDTV YUVA 2026. That is with a personality who's here with us. He truly defines leadership, discipline, and excellence. From serving the nation in uniform to winning an Olympic medal, he showcases a champion's mindset. Absolutely, Arun, and there's more. He now shapes policy for the youth, for all of us. He brings experience from every arena that matters, and he truly represents the champion mindset. Please welcome Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, Minister for Industries, Youth and Sports Affairs, Government of Rajasthan, also a former Olympic medalist. Can we please have a round of applause for Colonel Rathore in conversation with NDTV's very own Padmaja Joshi. Thank you very much, Colonel Rathore, for being here with us. We've in fact spoken to him in his many, many avatars, from an Olympian to at the center, very vocal on social media, and now in Rajasthan. And you come and speak to us at a time when we are in the middle of an election season, Colonel Rathore. And, you know, if there's one thing that we have noticed election after election, is that now the voice of the youth is unmistakable and unmissable. जब आप सरकार में हैं, आपको क्या लगता है कि अब आज का युवा ही शेप करता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली किसकी सरकार को अब अगला मौका नहीं मिलने देना चाहिए? Hi Padmaja, good to see you after a long time, and congratulations to NDTV for setting up this youth conclave. I think it's the right time to get the youth to be part of governance and part of running the government here. Also, a big hello to everybody who's here. Namaskar. And now to your question, Padmaja. So, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में युवा तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जब पीढ़ी थी, जब हम इनकी उम्र में थे, हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत कम होता था. इनका लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है. जैसे हमेशा कहते हैं ना कि द ग्रोथ इज in your teenage and in your younger years, when you are learning a lot of things. So the amount of input information which is here right now is amazing. So
इन्हें दुनिया के बारे में पता है, इन्हें देश के बारे में पता है और ये बहुत परसेप्टिव है। तो निश्चित रूप से सरकार किस दिशा में जाए या मुझे लगता है देश किस दिशा में जाए, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी युवा ने कन्फ्रंट किया है, यूथ वोटर हैज कन्फ्रंटेड यू और आस्क्ड यू समथिंग व्हिच रियली गेव यू अ मोमेंट ऑफ पॉज एंड यू थॉट दैट मुझे नहीं लगा था कि इस लेवल का पॉलिटिकल अवेयरनेस किसी यंग माइंड के अंदर होगा? मुझे लगता है वो युवा मैं ही हूं अभी भी जो कन्फ्रंट करता है कि भारत में क्या हो रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली कमिटेड टू द फैक्ट दैट माय नेशन हैज टू बिकम स्ट्रांग। पंजाब, मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि मेरा एक ही जीवन है, उस जीवन को मुझे सार्थक बनाना है। वो सार्थक, मेरा जीवन सार्थक बने उसके लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। मैं उस फोन का इंतजार करता रहूंगा कि वो फोन कब आएगा जो मेरा जीवन बनाएगा। वो फोन कभी नहीं आने वाला। जो है वो हम ही है, जो करना है वो हम ही को करना है। एंड थैंक गॉड दैट वी आर डिपेंडिंग ऑन आवरसेल्व्स, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई वेंट इनटू स्पोर्ट्स, कि उस खेल के अंदर मैं हूंगा, बंदूक होगी, जो भविष्य तय होगा वो मैं ही करूंगा। अगर हारूंगा तो मैं हारूंगा, जीतूंगा तो मैं जीतूंगा, अपने दम से करूंगा। दैट इज हाउ यू हैव टू टेक लाइफ। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। खुद ही को करना है जो करना है। मैंने एक बहुत, उस समय 1998 की बात है, तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय कोई सिस्टम नहीं होता था, कोचेस का, स्पॉन्सरशिप्स का। बहुत ह्यूमिलेशन फेस करी है और हर ह्यूमिलेशन को एक फ्यूल की तरह यूज करा है, एनर्जी की तरह यूज करा है। किसी ने ह्यूमिलेट करा तो उसको वापस जवाब नहीं दिया, अंदर रखा कि जब फेफड़े फटेंगे उस दिन 2 किलोमीटर और दौड़ूंगा, जिस दिन थक जाऊंगा उस दिन और सीखूंगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, उस समय मैंने एक बहुत बढ़िया, किसी ने मेरे को एक जीवन का सूत्र दिया। उसने कहा कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी आपके जीवन की, कभी अच्छी होंगी कभी खराब होंगी, बट वो परिस्थितियां आपका भविष्य तय नहीं करेंगी। उन परिस्थितियों के अंदर आपके जो निर्णय होंगे वो आपका भविष्य तय करेंगे। और उसको पंजा मैंने एक A4 शीट के ऊपर प्रिंट करा और अपने घर में हर जगह उसको लगाया। बाथरूम में ब्रश करता तो सामने शीशे पे वो चिपका होता था, सुबह जब उठता था तो बिस्तर के सामने वो लगा होता था। मेरे घर में हर जगह वो था और वो मुझे हर समय याद दिलाता था कि कोई मदद के लिए नहीं आने वाला, मैं ही अपना भविष्य तय करूंगा। तो हमारे युवा ही अपना भविष्य तय करेंगे। एक ऐसे वक्त पे जहाँ पे हर कोई अवेयरनेस लोगों में है पर पार्टिसिपेशन है क्या? आपने यू हैड अ थ्राइविंग करियर इन द आर्मी, देन एज एन ओलंपियन, देन यू डिसाइडेड टू एंटर पॉलिटिक्स। क्या आपको लोगों में लगता है कि अवेयरनेस होने के बावजूद उस तरीके का एंथुजियाज्म नहीं है पॉलिटिक्स में, राजनीति में पार्टिसिपेट करने का? जैसे कि आपने कहा कि यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, कोई आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा नहीं। क्या किसी तरीके की आपको उदासीनता दिखती है? उदासीनता नहीं है। इस जनरेशन के सामने चुनौतियां बहुत है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये करूं या वो करूं। और सोशल मीडिया का एक जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो ये है कि जो झूठ भी है उसे सच मान लेते हैं और जो सच भी होता है उसे झूठ साबित कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम कंपैरिजन्स करने लग जाते हैं। वो इतना बढ़िया कर रहा है, वो कर रहा है, वो फिल्टर लगा रहा है बॉस। स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस एनहांसिंग इज प्रोहिबिटेड, लेकिन लुक्स में कहां परफॉर्मेंस एनहांसिंग प्रोहिबिट है? कई सारे फिल्टर लग जाते हैं। एक ओनरशिप चाहिए पंजा। आपका जो सवाल है पंजा वो ये है कि हम इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, कमिट कर रहे हैं या नहीं। कहीं एक ओनरशिप की जरूरत होती है, अ सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर योर इंस्टीट्यूशन, फॉर योर हाउस, फॉर योर फैमिली। सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूं, अपने परिवार के लिए क्या आप में सेंस ऑफ ओनरशिप है? ये मेरा परिवार है। इस परिवार, मेरी बहन के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे फादर की मैं इज्जत करता हूं, मैं उनके सामने खड़ा हूंगा। सेंस ऑफ ओनरशिप। और इस सेंस ऑफ ओनरशिप का मैं एक बहुत एक्सट्रीम उदाहरण देता हूं आपको। जब हम कश्मीर में ऑपरेशंस कर रहे थे,
वहां सख्त आदेश थे कि हिंदुस्तान की सेना की वर्दी में ही ऑपरेशंस करेगी, यू विल बी इन यूनिफॉर्म। वहां पर समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हम आतंकियों के भेष में, दाढ़ी बढ़ाकर, आतंकियों के भेष के पहन के, फिरन पहन के, उनके भेष में जाकर ऑपरेशंस करते थे। दे वर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूं, दे वर प्रोहिबिटेड, लेकिन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अपनापन था, ये देश अपना है। अगर इस तरीके से आतंकवादी न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से हम आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करेंगे, अपनेपन से, कानून के विरोध में भी जाकर। दैट सेंस ऑफ ओनरशिप हैज टू कम इन। अगर कोई युवा बोलता है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। बॉस, आपके 20 साल, सुबह से उठने से रात के सोने तक आपके 20 साल वही पॉलिटिशियन तय करेंगे जिनको आप बोल रहे हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। बोल दैट पॉलिटिक्स इज डर्टी। जब मुझे आना था राजनीति में, सबने बोला भाई तुम सब कुछ कर रहे हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, लोग जानते हैं, इसमें क्यों आना, इट्स डर्टी। देश तो मेरा है ना, देश तो अपना है, एक ही जीवन है। उस जीवन के अंदर खुद के लिए तो कुछ कर लिया, इस देश के लिए भी कुछ करना है, कुछ लौटाना भी है इस देश को। तो उसके लिए अगर कीचड़ में से निकलना पड़े, उछाल लो ना कीचड़ उछालेंगे, बदनाम करेंगे, कर लो ना, नहीं फर्क पड़ता। अंदर पड़ता है लेकिन बाहर से नहीं फर्क पड़ेगा। तो दैट सेंस ऑफ ओनरशिप हैज टू कम इन टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। क्योंकि आपने अभी आर्मी की बात की, अभी वी जस्ट हैड द फर्स्ट anniversary of the horrific Pahalgam attack in Jammu and Kashmir, a place that you have known very, very closely. You have served there as well. What do you say to the youth? Because बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में कही गई कि क्या हमने उसका बदला लिया, क्या उसका justice हुआ है। एक साल बीतने के बाद आप क्या कहेंगे to the youth of this country about Pahalgam, what we learned from it, why did it happen, did we get justice? देखिए, पहलगाम हो, पुलवामा हो, उड़ी हो और ऐसे कई सारे और वो उनके हमले हों, हमें एक बात समझनी चाहिए। ये जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसमें एक देश के अंदर दो देश हैं। एक उनकी सेना का परसेप्शन वाला देश है, उनके एलीट, उनकी सेना, और दूसरे उनकी आम जनता और उनका जो टूटा फूटा लोकतंत्र। दो अलग अलग है। उसमें जो उनका सेना है वो अपना प्रभाव बना के रखती है पाकिस्तान के ऊपर। उनका प्रभाव तभी तक जीवित रह सकता है जब तक वो ये बता पाए कि पाकिस्तान पे खतरा है और हिंदुस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। उन्हें जिंदा रहने के लिए उनको ये करना ही है। तो उनकी तो सांस है भाई, उनका जीवन का तरीका ये है। तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहेगी, पहली बात तो यह समझना जरूरी है। दूसरी बात, तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं जब पहलगाम होता है या पुलवामा होता है। एक है पैनिक, दूसरा है पोस्ट, एंड तीसरा है प्रिपरेशन। पैनिक है, ये क्या हो रहा है, हम सुरक्षित हैं या नहीं है, कौन हमारी रखवाली कर रहा है। दूसरा है पोस्ट, कि मैंने एक पोस्ट डाली, उसके बाद आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग टू अ डिस्को इन द इवनिंग। तीसरा है प्रिपरेशन, ये किसी दूसरे के साथ नहीं हुआ, ये हमारे साथ हुआ है, ये पराये के साथ नहीं हुआ, वो मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी। और नेवर फॉरगेट, इजराइल से कुछ सीखना है तो ये सीखना है, 2000 साल से युद्ध चल रहा है, इतना सा देश है, लगा के रखी हुई है सबकी उसने, उससे नेवर फॉरगेट। आप पहले याद दिलाओ कि भाई मारा गया था, एक पीढ़ी निकल जाए बोलो चाचा मारा गया था, तीसरी पीढ़ी निकल जाए बोलो दादा मारा गया था, भूलना नहीं है। और भूलना किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं कि प्रतिशोध के अंदर जलना है ना, प्रिपेयर, तैयारी करनी है। कल उधर हुआ है, परसों कहीं और होगा। यू टू प्रिपेयर इन विच एवर फील्ड यू आर, वहां प्रिपेयर करो। मैं युद्ध के लिए नहीं बोल रहा, आप आईटी में हैं वहां प्रिपेयर करो, आप किसी और चीज में, बिजनेस में, वहां प्रिपेयर करो। अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दो कि जो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है उसको यह पता चल जाए, एक मारेंगे, हमारे में दो मारने की क्षमता है। इतना आर्थिक रूप से मजबूत कर दो, जैसे अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था, बिना गोली चलाए आपकी पीढ़ी या अगली पीढ़ी पूरी पीएको को खरीद ले और पाकिस्तानियों को दिहाड़ी पे काम करवाए। यह ताकत होनी चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर। दैट इज द रियल रिवेंज ऑफ पहलगाम।
नॉट किलिंग ऑफ 3 people. वो 3-4 टट्टू थे, उनको मार दिया. दैट इज नॉट रिवेंज. रिवेंज इज दिस, कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो भारत की तरफ कभी देखने की. हमें उसके लिए तैयारी करनी है. क्योंकि आप देखते हैं कि लोग इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके का इमोशन अभी आपने बोला, क्या यूथ में वो इमोशन है? क्योंकि एक ना बैटल ऑफ नैरेटिव्स होता है. वन इज व्हाट यू सेड विच केम फ्रॉम द हार्ट. बट जब भी सोशल मीडिया पे कोई बोलता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, स्पेशली इन द यंगर ग्रुप. उसको कहते हैं अरे ये तो फेक पेट्रियोटिज्म है, देखो पाकिस्तान क्या करके चला गया. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मुझे लगता है सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं. ये मेरा रिस्पॉन्स है इमोशंस वाला. फौजी हूँ, 16 साल की उम्र से सेना में गया था, तो मुझे सेना ने यही सिखाया है. कोई हंस भी ले, लेकिन मन में रखे, कोई दिक्कत नहीं है. सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं. यू डोंट हैव टू शो योर पेट्रियोटिज्म एवरीवेयर. जब तक अंदर है तब तक ठीक है. और पेट्रियोटिज्म है आज के 100% है. 100% है. आइडेंटिटी ये है, आपकी पहचान ही ये है. लोग हमारी पहचान मिटाना चाहते हैं, ड्रग्स से, किसी और तरीके से, हर तरह से हमारी पहचान, हमारा सारा अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं. तो निश्चित रूप से ये युद्ध सीमा तक सीमित नहीं है. ये युद्ध आपके घर तक हो रहा है, आपके दिमाग के साथ इस समय भी खेला जा रहा है. आपको लगता है आपके घर पे मम्मी पापा बैठे हैं, दरवाजा बंद करा हुआ है, कोई अंदर नहीं आ सकता? यू आर रॉन्ग. आपके मोबाइल पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट कुड बी करप्टिंग योर माइंड और ट्राइंग टू करप्ट योर माइंड. तो निश्चित रूप से उसका जवाब कौन देगा? जरूरी थोड़ा ना वर्दी पहन के जवाब दिया जाए. So I'm very confident of this nation. I'm very confident of the youth. I'm telling you, you all, number one, your knowledge is far superior to what our knowledge was when we were as old as you. 100%. हमारे इतना स्ट्रेस नहीं होता था जितना आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस है. 100%. I'm saying it. You are far aware, you're far better, and you will do better. So I'm very confident of this nation. I'm very confident of the youth. Well, 3 cheers to the youth of our country. If that is what we have for the next generation, then there is hope. Nobody can take India down irrespective of how much they try. लेकिन जितना आपकी youth की population है, उतनी ही important है कि आपकी एक युवा leadership होनी चाहिए. What is the युवा, the next generation? We've got leaders like you, but then, you know, within different parties that we see, you've got some युवा नेताज in the opposition who say कि अरे आप कहते हो कि you are a party of the future. The BJP is the party of the future, but you are led by somebody who is past 75 years. तो कौन डिसाइड करता है कि युवा नेतृत्व क्या है इस देश के अंदर? सबसे पहले तो युवा नेतृत्व सामने बैठा हुआ है नहीं. हर फील्ड के अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहे हो तो युवा लीडर. यू डोंट हैव टू बी अ लीडर ओनली इन पॉलिटिक्स. दूसरी बात, व्हाट इज अ युवा? जिसमें ऊर्जा है. So if a 80-year-old or a 75-year-old has tremendous energy, and when you look at him and you see, wow, if I wish I could do so much, then वो युवा है या नहीं? मुझे बताओ. Hello? Guys, we really need to, if you are youth, you really need to act more youthful. अभी बहुत ही tired responses आ रहे हैं. क्या आपको लगता है आप युवा नेता है? आपके अंदर कोई युवा नेता है? किसी ने डरा के तो नहीं रखा हुआ भैया यहाँ पे सबको. सब ऐसे सहमे सहमे से बैठे हुए हैं. So you are the leaders. And जिसमें ऊर्जा है, that person is young, is youthful. Yeah. और राहुल गांधी जो युवा नेता है? No, why not? I mean, कौन कह रहा है कि वो युवा नहीं है? But युवाओं की डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए. So youth moving in a certain right direction together, that's what makes powerful India. तो एक, क्योंकि आपने युवा नेताओं की बात की, and I'm not going to talk about people from your party. Very quickly, your thoughts on राहुल गांधी के बारे में आपने बता ही दिया. प्रियंका गांधी, surprisingly, she is getting a lot of appreciation from your party members. आए दिन उनको पार्लियामेंट पर बोलते रहते हैं कि प्रियंका जी को कमान संभालनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की जगह. देखिए, हमारा कहना कि इसको नहीं, उसको नहीं, उसको कमान संभालनी चाहिए, that could be a psychological warfare also, right? But चलिए उसको छोड़ते हैं एक बार को. But Are you giving away trade secrets here? No, I'm just saying. मैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अनंत संभावनाएं हैं. बट क्यों नहीं अप्रिशिएट करना? कम से कम हंस के तो बोलती हैं. तो एनीबडी हु इज स्पीकिंग वेल, कम्युनिकेटिंग वेल, व्हाई नॉट? सो ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है. वी अप्रिशिएट एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ, इवन इन पॉलिटिक्स. हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं. ये तो फौज ने सबसे पहली चीज सिखाई है
सबसे पहले दुश्मन की खबर, उसके बाद अपनी खबर. आपके स्टेट से एक नेता है सचिन पायलट. No, the same applies for everyone. I'm happy that young people are there. Speaking of Sachin Pilot, what I really appreciate about him, he controls his language. He's never disrespectful to his elders, which is a very nice thing. Politics के अंदर एक भाषा का संयम रखना बहुत जरूरी है. आप प्रेशर में आ रहे हैं और प्रेशर में आकर आप खड़गे जी से कैसे कर रहे हैं तो कैसे काम चल सकता है. You have to control yourself, boss. And finally, somebody who's a new entrant to your party, Raghav Chadda. देखिए ऐसे आप एवरेज एज नीचे लेकर के आ रहे हैं, बाकी पार्टी के जो युवा है सारे आपकी पार्टी में भर्ती हो जा रहे हैं. So Raghav is also anybody who's welcome. See, धीरे-धीरे लोगों का जो भ्रम है वो मिटता जा रहा है और सही रास्ते पे लौट रहे हैं. एक कहावत भी है ना, जो दिन का भूला लौट के वापस आता है शाम को, उसको भूला नहीं कहते. उसको भूला नहीं कहते, उसको राघव चड्ढा कहते हैं. आपने कहा कि देखिए we thought that it's not possible to praise your opponents, but you have shown that सब कुछ संभव है. आपने अपने opponents को भी praise किया. You have made the transition successfully into politics from a thriving career that you had. What's your message to the youth of today when you say that सब कुछ क्या सच में संभव है उनके सामने? देखिए, मैसेज टू द यूथ हमेशा सबसे कठिन होता है, बिकॉज हम कौन हैं इनको मैसेज देने वाले. दे आर वेरी अवेयर, बहुत दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लाइफ. और मुझे लगता है कि खुद को विश्वास होना चाहिए. हमें तो विश्वास है. मैं जब युवाओं को देखता हूं तो वो यूथफुलनेस दिखता है कि कितना कुछ कर सकते हैं ये, लेकिन क्या आप में वो विश्वास है? या किसी का कोई वीडियो देखा और उसी के अंदर ही आप डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं या घबरा जाते हैं? वो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना. एडवर्सिटी फेस कर सकते हो या नहीं, और फोकस्ड रख सकते हो या नहीं. सो फोकस्ड रहना है. यू हैव योर ड्रीम, यू मस्ट ड्रीम, and you must dream big. वो जो the lady who's going to read my handwriting, वहाँ मैंने ये लिखा है, ड्रीम बिग, बट उसके बाद उसको एक्शन में भी तो डालो. और एक्शन में डालने के लिए फेलियर होगा. अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब आपके टारगेट्स ऊंचे हैं. अगर टारगेट ऊंचे ही नहीं है तो फेल ही नहीं होगे, और टारगेट ऊंचे नहीं है तो आगे बढ़ोगे भी नहीं. सो वी मस्ट फेल, ऑल ऑफ अस. और दिल खोल के फेल हो, मजे करो. आज मैं फेल होकर आई हूं, एंड डू अ डांस. टारगेट रखो, बड़े मेहनत करो और आगे बढ़ो. सो आई बिलीव दैट यू कैन मेक एनीथिंग अचीवेबल. यू कैन रीच योर गोल्स. यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड. और एक the concern also is that whenever you are dreaming big, now you've got technology to compete with. How does one dream big when you're constantly thinking that you're going to be made redundant by technology, by AI the next day? No, this is a misconception. AI is there to support you. आप AI को यूज करोगे, AI को बिल्ड करोगे, AI को अपने काम में लेकर आओगे, तो 10-15 लोगों का काम तो AI कर रही है. So use it. जैसे किसी ने कहा कि घोड़ा है, घोड़े के ऊपर सवारी करो, तो सवारी करने वाले बनो. AI यही है, कहीं नहीं जा रहा. बट यूज इट, एंड आई एम श्योर AI इज नॉट टेकिंग अवे जॉब्स. बहादुरी, करेज, इमोशन, सेंसिटिविटी, कोलैबोरेशन कहां कर सकता है AI? और उसी से सफलता मिलती है. किस तरह से आप एक साथ काम कर सकते हो, किस तरह से आप में वो संवेदना है जो दिखे आपके एक्शंस में, कहां कर सकता है AI? आप कर सकते हो. And that is why AI will never rule, you will rule. All right. In that hope and that very positive note, thank you very much, Colonel Rathore, for having come here and given that message to the Yuva of today. And like you said, you wrote Dream Big. What does that your writing tell us about you? Let's do that analysis. Ma'am, can you please have you here?
How are you feeling, sir? Have you ever gotten your handwriting analyzed before, though? मेरी हैंडराइटिंग तो कोई समझ ही नहीं पाता था, तो आज तक किसी ने Really? In fact, honestly, I'm going to keep it lighthearted, but it's also, you know, a lot of times, I remember back when I was a student, and we used to have someone speaking, तो एक thought आता था कि are they just speaking for the public, or are they really, like, with his handwriting? One thing I can genuinely say, he practices what he preaches. Because when he spoke about the motherland, it's not India, yes, is our motherland, but he's equally passionate about his own family. And very attached to the mother, grew up with that. I think a lot of what we hear is also a contribution to his mother. Because it clearly shows in his signature. And from there, that patriotism has arose. And he does not believe in quick gains. And I think the only thing, maybe a stronger message you have for Gen Z, because he's also written by perseverance and commitment, and his signature clearly shows that slow and steady wins the race. If I'm wrong, you can... No, thank you so much. And that steadiness also comes in his writing pattern, not just because signature is what we show to the public, but your writing is also who you are. So one thing that we may not know from the outside is he is very passionate about food and also passionate about grooming and self-growth that comes not just the outside, but definitely with the signature one thing, at the current stage, for you, you come later, your country and your family comes first. That's very true. Thank you so much. Also, an excellent listener, I would say. Definitely a great communicator, but wow, you listen to people very carefully. Thank you so thank you. Like, we are really proud to have a leader like you. Very kind of you. Thank you so much. Thank you. Just And as you a got all of that from the handwriting. Yeah, there's so much more, maybe off stage. Fabulous. This has been fascinating. Thank you very much. Thank you and so thank you much. very Thank much. you. Just as a parting note, since she mentioned about my mother, so I'm the only child, and my dad was also in the army. मेरे पिताजी सेना में थे और वहीं थे कश्मीर में. तो मेरी माँ ने वो कश्मीर देखा हुआ था, लेकिन उस समय आतंकवाद नहीं था. तो जब मैं वहाँ पे गया 1992, तो उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तो टावर पे जाकर बात करनी पड़ती थी. तो मैं एक टावर पे गया, वहाँ से मैंने कॉल करा, बस कश्मीर में पहुँचा ही था मैं. तो वहाँ से मेरी मदर ने बोला कि सुंदर है ना कश्मीर. तो मैंने कहा बहुत सुंदर है. एंड गेस व्हाट डिड शी से नेक्स्ट? शी सेड लड़ने लायक है ना. So you know, so you derive strength from words of your mother or father or someone. And when your mother says कि वो ज़मीन जहाँ पर तुम आज तक गए नहीं हो, वो लड़ने लायक है ना, that you are going to fight for it. And so, you know, these are the things that these words of my mother or somebody, and for you, your mother or somebody, will inspire you and take you ahead. God bless. Thank you so much. Thank you. Lovely. Thank you, sir. Thanks, Padmaja, for a lovely session. But guys, we have to keep the energy high. So we'll do a little exercise before we move on to the next session. Are you ready for it? Yes, are we ready for it? We need some enthusiasm. All you have to say is yes. Are we ready for it? Yes. Repeat after me. Why? Why? Say you. Say we. Say A. What are we? We are. Louder, guys. We've Come just on, started guys. the NDTV 2026. That can't be for on more energy right in the morning, right? Yeah. We are. A huge round of applause for what's coming next and for all of you. Our next speaker is someone who brings together a compelling blend of legacy and modern leadership and represents the spirit of NDTV YUVA, where legacy meets ambition and new age thinking. Absolutely, Arun. Well, he is someone who is balancing the heritage of Madhya Pradesh cricket with the future of technology as the founder of Ithara AI. Please give it up for Mahanaryaman Scindia in conversation with NDTV's Vedika Sood on new age leadership, legacy, sport and enterprise. A huge round of applause.
people inherit a legacy. Others try to break away from it. And then there are those who attempt something which is rare, far more difficult to carry it forward, but on their own terms. And our next guest is doing just that, ladies and gentlemen, moving between cricket boardrooms and AI startups, navigating the space between tradition and transformation. Please welcome Mahanaryaman Scindia, President, Madhya Pradesh Cricket Association, Thank you very much. Ithara Thank you very much. AI. So let me start on that note with that idea, Mahanaryaman, carrying legacy but on your own terms. How difficult is it to really balance both the convention, the tradition, and bringing in your beliefs to it? So I think legacy is derived from certain values, right? Your family values, what your family stands for, what your parents teach you. But then you take it, legacy is not just an occupation. People believe that, oh, legacy means because you're coming from a business family or a political family, you have to join business or politics, right? For me, legacy is values. So you have to derive the values which your family believes in, what you've learned from your experiences. Take that and move towards something that you're passionate about, a cause, a startup, a thought, and build on that with those values. For me, the value system that I came from was always build something that's impactful, build something that changes people's lives, always stay rooted in your country, and be humble. Right? These are the main core values that I was brought up with. And with that, I decided to say, okay, fine, you know what? I want to start my own startup and be an example for younger people in the country that you can do it. Right? I could have easily woken up one day and said, okay, fine, you know what? I'm going to join politics. But I decided not to take that route. I decided to go down the tougher path and say, I'm going to start something on my own, but I want to make it impactful, right? I want to change lives, and I want to make India the center of what I am doing. So that's the kind of path that I took. All right. Now, I want to talk to you about your family legacy. We have your mother sitting here as well. Welcome to NDTV YUVA. When your surname carries weight, does it feel like an advantage, or does it feel like there's a constant expectation coming your way? I think it's definitely a privilege to carry that surname, 100%. But it does come with certain expectations. It does come with you being in the spotlight. It does come with you have to be very careful with the decisions that you make, because the decision that I make doesn't only impact me, but it impacts my parents. It also impacts where I come from, because the whole of Madhya Pradesh is watching. The whole of Madhya Pradesh is looking up to you. So every decision counts, right? So you have to take that on your shoulders. But at the same time, what it does also is that it always keeps you extremely aware of your surroundings and extremely responsible and accountable for your actions. So you always think twice or thrice before making a decision. ऐसे कभी हुआ है कि उन उम्मीदों के खिलाफ आपको खड़ा उतरना पड़ा हो? Those expectations? मुझे नहीं लगता कि उन उम्मीदों के खिलाफ मैं कभी खड़ा हूँ. मुझे लगता है Those कि conversations in your house with your parents, look, these are the expectations, my line of thought is different. No, I think that मुझे लगता है मेरे जो मेरी परिवार है, especially मेरी माँ और मेरे पिता, उन्होंने हमेशा कहा है कि आपको वो करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि अगर आपकी रुचि नहीं है उसमें, तब आप कभी खुश नहीं होंगे. You're sounding very sorted, Mahanaryaman, for the age you're at. Well, there's certain things that you learn from your parents, I guess. But the point really is that you have to find something you're passionate about. But at the same time, like I said earlier, it should be something that drives impact. Right? Whether it's sports, whether it's art, whether it's music, whether it's business, pick something up, pick an idea, pick a problem up, work on it, and make it bigger and make it impactful. That's the kind of note that the general teaching that I follow from my parents, and that's the philosophy that I've always lived by. All right, so he's leading the Madhya Pradesh Cricket Association as well, as all of you know. So it's a system that's rooted in tradition. I want to ask you now, what is that one big change you think that the Indian cricket administration needs, keeping the youth in mind? So I think now being in the system for about 5 years, right,
and now also getting the opportunity and the privilege to head Madhya Pradesh Cricket Association, I've realized as a young leader, there are 2 or 3 ways in which I can bring about the change that you're talking about. One is the inclusion of technology within administration, right? So the world, or rather India, has never seen an ERP for cricket. So Tell us more about that. so with the background that I come from, which is basically I have my own AI startup, I decided why not infuse what I learned there into cricket as well. So what I'm building right now, and I'm now in the ideation phase, is a very novel ERP that manages administration, compliance, also cricket selection in my state. So what it'll do is that essentially when you have MPC as association, you have divisions and districts below that. But right now, there is no connection with the division and districts in terms of their compliance, in terms of their accounting, in terms of their selection committees. It's very, I would say, hazy. Right? So what this will do is that I will build this ERP in a way that all your grants, all your compliances, all your reimbursements will come through technology. So you have to first apply for a grant, right? Sometimes many people are not from an accounting background but are in divisions and districts. So they don't know where exactly their compliance is being missed or where the accounting is being wrong. So when you upload your requirements for a particular grant, the AI model will then come back and tell you that, okay, you are missing X, Y, or Z. Is this something that you have already spoken to the Cricket Association? Yeah, we're working, we're developing. And what has the response been? It's been fairly positive because what this will do is it will allow even transparency in selection processes. So all your data points, your cricketers, wickets, runs, innings, everything will be fed into this ERP. And then selectors have to, if they want to analyze a player, all the player analytics and profiles will come up on the dashboard. And then when he's making a selection, he'll have to search for a player and add him to his team. Then it'll come to the division and the MPCA board to approve. So it's fully a transparent process led by technology. I think IPL will want this more than anyone else. At this Well, point, well, I hope so. I hope so. given the number of teams and the aspiring cricketers that you have. But I want to come back to the Madhya Pradesh Cricket Association as well. It's a set system, right, that you're talking about. It's been there for so many years and decades. Has it been challenging? Usme badlav lana? Yes, I mean, absolutely. I think, but you have to find a midway, right? So we're a lot of young guys like me. There are also a lot more, I would say, experienced people, not old people, but experienced people on the other side. So what I love is healthy debate, right? So I put questions in front of them. You know, one of the main questions that we deal with on a daily basis is red ball cricket versus white ball cricket. Now, the more experienced people prefer red ball cricket. So healthy debate becomes a heated debate Becomes as well? a heated debate as well, but out of that comes very interesting solutions. So Alright. how do you keep, international cricket active versus T20 cricket, right? So we're building incentivization programs for international cricket as well. And we're also building leagues like Madhya Pradesh Premier League for T20 cricket as well. So there's always a balance that you have to set. Okay, we've spoken a bit about cricket. Let's talk about his AI ambitions as well, given that you have a startup. You know, AI is about speed, it's about disruption, it's about risk. What has drawn you to this, and what is that one big problem you want to resolve? So when I decided to start this company, I did a lot of analysis to understand where India lies in this, firstly, this AI landscape, right? So very interesting facts came out of my research. Some people may think that, these are actually very known facts, but it's quite interesting to learn that internationally, 30% of every company has Indian employees, right? Firstly, in the software development side, in the coding side. Number two, within the AI landscape, right? If you look at general AI literacy, India is number one, right? We also have the most AI LLM users, right? Most in the world. So these are certain facts that came about my research. But what I really was intrigued about is the fact that all these large language model companies had a large amount of Indians developing these LLMs, right? Training these LLMs. So when I started talking to my friends from college, they said, why don't you think about starting
an AI model training company. Considering a large amount of Indians are working in this area, and from this background, why don't you start in India itself? And that really made me think, right? What I thought was that if you look at the history of India, we've always been the back end of a lot of IT services, right? We've never really been the front end of large technology moves, right? Now, what AI has done is it's created an area for India to become a tech giant again, right? So what I'm doing right now is my mission through Ithara AI, which is the company that I run, which I'm co-founding, is that I want to make India the center of global AI model training, right? We have a huge opportunity here. We have, as I said before, the strongest community of STEM students and engineers. We have the strongest community of coders. We have the strongest community of software developers. My objective is to, A, retain them in India. Now, a lot of people... That's very important. That's going to be a big challenge. It's going to be a lot big challenge because a lot of people want to go to the US or want to go to Europe and work because there's a lot of research, right? Research is what drives these guys, right? So firstly, we're a research-first company. We first invest a large amount of our profits into research, into being on the frontier of model training techniques, into building environments for model training. These are virtual environments. So these are extensive research programs that we have started. The second is that we've built a lot of relationships with universities. So we become industry partners where we set curriculum, right? So a large amount of time is that what you're studying in computer science, you're studying in software development doesn't match the requirements of what you need to be in the AI industry. So we've actually set curriculum and assessments with these top colleges to ensure that we bring in the best talent and retain them in India itself. The third goal is to ensure that the talent that has already gone abroad, which is our Indian minds that are running large amounts of these companies, come back to India, right? But they need a mission, they need a cause, they need a sentiment. It's not just, oh, I'm running an AI company. It has to come in with, what is your mission? What is your goal? And while I talk to these people who are running these companies abroad or are part of very core teams of large language model companies, they get very excited when there is an Indian founder working on Indian techniques derived from Indian students, creating Indian IP for India. So that's a big, big move in terms of the AI landscape in India. We're going to wish you all the best. Thank you. For that endeavor of yours. Now we have Aryaman, who has been busy with cricket. He's been busy with AI. I want to understand from him, which has taught you more about leadership? So you actually learn very different lessons from both. You have one... You're very diplomatic. No, it's a fact. It's a fact. Cricket or AI? The fact is that one is a sport and one is a business. You can't compare the two. Okay. From cricket, you learn a lot from sportsmanship, right? How to play in a team, how to work with a team, how to also balance your wins with your losses, right? Even in AI, you don't win every battle, right? You don't get every contract, you don't get every project. But the ones you lose from, you got to learn where you lost out on. Was it quality? Was it throughput? Was it thought process? Was it pricing? What was it, right? So when you go back to the drawing board, you reanalyze what you're doing with your team, right? And you take out the strengths of your team rather than the weaknesses, right? You have to build on their strengths. You have to, although you analyze their weaknesses, you got to identify each person's strength and play them in that particular position. So this is the kind of stuff that you learn from sports and then you bring into business. What you learn from business and take into sports is administration, right? What I talked about is how do you bring technology into sports administration? How do you bring transparency into sports administration? How do you look at profitable models? Right? How do you invest money in areas that you can see a great ROI in? And that ROI is not in terms of money coming back to you, but that ROI is in terms of human impact that you create, right? So these are the kinds of learnings you get from both, which makes you a very strong leader all round. Let's talk about leadership. Let's talk about the youth. This room is full of very young people aspiring to do big things in life and be successful. But
You know, when you look at the generation before them, they say, ये लोग हैं, इनको instant gratification चाहिए, कोई धैर्य नहीं है इनमें. But would you say that's because of the fast-paced life we have today that you see impatience amongst the youth? I think you've touched on a very important point. And this could take an hour yeah, to discuss. it's a point that actually I've been dealing with for at last 3 to 4 years, because as I interact with I'm a young person itself, but as I interact with people younger than me, and all the people that I employ are between the ages of 20 and 23. Like that's the level of the company's demographic, right? So when I speak to these people, right, and I generally try and have a lot of group conversations, what I try and push them to think about is that we all of us, we all think about short-term gain, right? Yes. Okay, this year, what is my salary going to be? Next year, okay, how can I get it to 25 lakhs? Okay, next year, how can I get it to 50 lakhs? Are you all agreeing to this? Right, so everyone thinks about today, how much can I earn? Right? No one thinks about, okay, if I'm part of a company for 5 years, what experience do I build, right? And with that experience, what do I add to the company that will give me a return on investment, right? So if you get, say, 0.01% of $1 billion company, right, that itself makes you a huge, much more wealthy person. That's what I tell them, don't think about just pure play salary. Like even when I get people from, like I've been speaking to Indians. But where does the impatience come from? The impatience comes from instant gratification. It comes from the fact that, I've got that high of getting that salary and I can tell my parents, I've got that 25 lakh salary. But that's not going to give you anything, because what happens is that to catch that salary, young people end up moving jobs every 6 months to a year. So you'll meet people that every year have switched jobs to ensure that their salary goes higher and higher, but the experience remains stagnant. Okay. We want to know Aryaman a bit better now. We've asked him about cricket, we've asked him about AI, we've asked him about leadership. I want to know from you, one personal failure that has taught you the biggest lesson of your life to date. So, I think I would say, that's a very good question again. One personal failure that I have had, and it's... Which you're ready to share. Yeah, it's impacted me a lot in the recent times, is that I had another business, right? It was called My Mandi, okay? And the whole objective of that startup was to ensure, first, to democratize the way the agricultural sector was working, right? You have, all these farmers going to the mandi, and in the mandi there are a lot of other players. You have the arthya, you have the masha khor, you have the futkar, then it goes to the retailer. There's a whole layer that plays out over there. I spent like 3 years just traversing the mandi, and people are like very shocked that I was in the mandi at like 2 in the morning, running around this whole mandi with my co-founder and understanding how this market functions. So a lot of the times I'd wrap myself around so that no one would identify me, Okay. right? So I'd put a cap on, I'd wrap myself around, a scarf around my face, and like traverse through this mandi to try and understand the complexities. It was a very big idea, very big mission, where I wanted to provide quality produce at the best price to all retailers, so the retailers then could further upsell it to their consumers. And this was all done through a digital platform which had a map, which had heat maps of where you would find the biggest mandis, and within the mandis what the prices were, and then people could negotiate on the platform. So we worked on this for about 3 years. We tried pushing very hard, but there's some systems that take a lot more to break, right? The mindset, it's not just throwing money at it. It's the mindset that you need to change. And unfortunately, even though we were very passionate about it, we had to shut it down. So to me, it was a failure, But right? what was the learning? The learning was that you gotta cut your cords, Yes. right? When you feel like it's not working, right? Okay. Don't latch on to an idea and keep on going when you know what the reflection in the mirror is, right? So although it was my baby, it was our baby, it was something that I was very passionate about, I realized that, listen, sometimes some things have to come to an end to move to another chapter, right? And this Ithara was the next chapter that I moved towards. And that's a very big learning. I think he deserves a round of applause for being so honest about his failure and the biggest learning from it, ladies and gentlemen. We have about 3 minutes left, so very quickly, I want to know what the Scindia household looks like when you're away from responsibilities and doing what you do on a daily basis. Oh, you don't want to know that. No, we want to know, don't we, guys? We want to know. What does it look like?
No, it's actually a lot of fun. So generally, it's all of us cooking, right? We all are big foodies. Does so the minister yeah, he cooks as well. My mother cooks, I cook, my sister cooks. So there's a lot of cooking in the house that happens as we're all very big foodies. So everyone's researching different recipes, trying to find more innovative I ways should to have cook. asked you questions on fitness, because if you're a foodie, it doesn't show. Well, there is a lot of fitness that happens in the background. My mother gets tired of my diets. She's like, okay, now one more diet has come in. Now you're vegan. Now you're this. Now how is a cook going to make this? There's a lot of that debate that happens at home. But yeah, we love cooking, and B, we love outdoors. So we love going on safaris. We love wildlife. We love going on treks. So that's what kind of our family looks like when we're not working. It's Okay. also, my father is a huge, I would say a huge competitive person. So anything we do has a lot of competition. So if we're in the pool, it's not just swimming, or do laps. So who's doing more laps? 60 laps, 70 laps, 80 laps. So there's a whole debate on who's winning there. So yeah, there's a lot of competition, fun, games, cooking, trekking. That's what we do. Lovely. Wildlife, yeah. Before we let him go, a quick rapid fire round. All right? And Go you for have to it. be very quick Yeah. in responding. Favorite cricketer Sachin. in today's day and time? In today's Virat. Okay. Yeah. One word your friends use to describe you. I would say naughty. Naughty? Yeah. Okay. The mother is approving, sitting there. She's saying absolutely emphatic nod there. A habit you're trying to change? Impatience. Impatience. There's another side to him that we're not seeing, guys, out here. A book or podcast that you would recommend to the youth out here? So definitely, I'd say in terms of a book, I would say The Art of War. So Art of War teaches you a lot of daily things in life. When we talked about impatience, when we talked about instant gratitude, all these things are reflected upon Take that. note, guys. Yeah. Okay, early mornings or late nights? Right now, I have both. I'm hardly sleeping because I have clients in the US, so hardly. One decision that changed your life? Starting my own business. Okay. Success in one word? Actually, let me rewind. The one decision that changed my life was actually my gap year. Yeah. Is your? Gap year. Okay. Yeah. All right. Success in one word? Success in one word is impact. Legacy in one word? Legacy in one word is values. Okay, and finally, arranged marriage or love marriage? I would say definitely love. Love? I'd prefer that, yeah. Can we get your reaction to that, man? The last question, you have a mic right there behind you. I've kept this for the last so I get your reaction. Is the mic on? Yeah, go ahead. Arranged or love? It's his decision, I know, but your views. As long as he's in love. As long as he's in love. All right, thank you so much, everyone. Thank you so Ariman. much. Thank It's been a great session. All the very best, and thank you for being part of NDTV YUVA. Mahanaryaman Scindia for being so candid here with us at such a young age. A huge round of applause for Mr. Scindia for being so candid here with us. Can we have a huge round of applause? He shared with us his journey. He's doing so much at such a young age. Are all of you inspired here? I'm just checking the energy level of the room. Can I get a huge round of applause from people on my left? People on my right? All right, the tempo is high. Thank you so much. Moving on to our next session. Now, in a world where virality often outpaces verification, where reels on our phones right now, it trends faster than reality, and where Gen Z is not just consuming content, but they're also shaping narratives. We ask, what lies beyond the noise? And that's exactly what our next session is all about. Please welcome, with a round of applause, the students of Galgotia University in conversation with my co-host Arun Singh. The energy should remain high, ladies and gentlemen. Please welcome the students of Galgotia University. Lovely, a huge round of applause for our students from Galgotia University. Can we have all of them come on the stage, please? Be quick, guys. You are Yuva. We're talking about young people, youngsters.
So see, all of you, rather most of you are students here, so we thought it's important that we talk to students on stage. Where are your other friends? Where are they? This Gen Z, I tell you, they're always late. But anyway, the point was that, there are so many college students here, so it's important that we exchange some ideas and talk about their more than ideas, other you guys have built companies. So more than ideas, we talk about what companies they have built and also inspire a lot of us. So that's, of course, reason number one. Another reason is also very big. You'll see them as our title sponsor, Galgotia's University. So it's an honor to have all of you here. Where were you guys? Were you guys doing last minute touch up or something? Okay, lovely. Okay, so if you can come a little bit in the center, lovely. So Soumya, I want to start with you. You run Kisan Drishti. First of all, it's a very interesting setup that you've built. First, in 30 seconds, if you have to tell us what Kisan Drishti is. Kisan Drishti basically is a farm monitoring system, and we have created an early crop disease detection for it, and it's totally trained on Indian farm and regions. So it's trained on the data sets of Indian agriculture. And you have a 10-member team already? Yes. And how do you plan to scale it up? So since we are nearing our MVP deployment, our next big milestone is to impact at least 1,000 farmers this year and make them grow more with a 20% better yield. Oh, lovely. Huge round of applause. And you will be, again, impressed after knowing the age of this gentleman here. He's just 18, and he has also built Cybergenics. 30 seconds, tell us what you do at Cybergenics. So basically in Cybergenics, we have our own AI systems that are trained on the models of the corporate, and what we actually focus on that they learn by the human nature, the human working, the human workflows, and it's a automation workflow system. So this is what we build at Cybergenic Security. And you have received a seed funding of 9 crore rupees valuation, right? Yeah, so we have just cracked a funding at a valuation of 9 crores, and we have a team of 15 to 20 people. And you know what, this funding was too much for us because our system, our vision, and the investor who believed in us for this vision was too much for us. But Divyash, you're just 18. मतलब क्या motivation थी इस बाली उम्र में आप ये industry में आ गए? What made you start and what was your motivation? I don't think so. It's some crime to start at the age of 18. So, the age factor of 18 was never a limitation for me. It was always an opportunity that I have the time, I have the energy to learn, to take risk, to fail. Because I believe that as much I failed, I learned that much. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई इस बार मैं फेल हो रहा हूँ तो क्या पता मैं इसे अगले करूँ या ना करूँ. जब भी मैं फेल हूँ, it is always coming with a pros con as well. So starting so early was totally the benefit of my failures and the support I get from my university, from my parents, from especially my co-founder as well, my co-founder Prakhar. They all supported me a lot, literally. Like if I talk about my university, so my university has provided me the space. The labs, of course, the AI system is too much heavy to operate. Galgotia has provided me the whole infrastructure of NVIDIA labs with the high-end GPUs, CPUs, and the testing models as well, like many things more. Are you teacher's favorite as well? I can sense it. We'll go to Keshav as well, who's built Savvy Technologies. If you can take us through what you do at Savvy. Sure. So at Savvy, we are a big data analytic company. So what we do for legacy companies. So they have legacy architectures, right? To help them adapt the newest solutions, we tweak their pipelines, tweak their architectures to adapt them actionable insight, smart workflows, and smart automations. Not that thing for a very huge database, be it TVs of database. It's a very big thing to get analytics over that. Yeah. So that's what we do. And are you profitable? Yeah, we are profitable from day one. Of course, this matters a lot. We'll move to Ananya. You do Chop Finance. Again, 30 seconds if you could tell our audience what Chop Finance does. So Chop Finance is an AI-native accounting and finance firm for startups and MSMEs. So we have all full stack. We work like CA firms, but much better and much faster. Yash, if you could also take us through Techurious. For sure. Hello, everyone. So Techurious is basically very much spirited to
across the education crisis in India right now. So we are bringing VR-enabled laboratory education, let it be wet lab or dry lab, to Tier 2 and Tier 3 cities so that everyone can have the same platform to grow. So that's what we are doing at Tech Curious right now. And of course, there's a lot of international exposure as well. If you can talk us through that. For when I talk about Tech Curious right now, we are actually competing and representing Galgottias University and inherently India to Adventures competition next month at Hong Kong University. So yeah, I think the world needs to understand that we are really working for education here. We really want the education crisis to solve, especially in India and here. So that's what Tech Curious is focusing on right now. And Ananya, I'll go back to you. You focus a lot on MSMEs. Why that segment? Why that section? So, it's very important to understand finance has not been evolving at all. It's aged back. So now, for any startups or MSMEs, they get their books by the end of the month. And CA takes, 2 weeks to consolidate the report. And now, the founders have to decide on their gut feeling what happened last month and then do their marketing and stuff like that. Right. So what we are doing in Chop Finance is we are changing entirely that. So we have integrated with ERPs, marketplaces like Amazon, Myntra to give the real-time reports. And that change is something that is very game changers for startups and MSMEs because they are always juggling between products, marketing, and then apart from that, they also have to take the headache of finance because their chartered accountant do not care about them much. They just do the compliances, and then ultimately what happens is that there's a lot of GST notices, then there is a lot of issues, missing numbers. We sorted out for them. Yeah, we sorted out for them. They run great businesses, but all of them speak so well, right, guys? Huge round of applause for, presenting here their businesses, their ideas, and being so confident at this young and tender age. But now you must be wondering, we've got students from Galgottias University, and you must be thinking, Arun, you have to address the elephant in the room. Why don't we talk about the controversy that happened? And with your permission, I don't want to, force you guys on anything because you guys had no fault of yours. But what did that controversy do to you as students, if any one of you can take that answer? So I think I'll go first. So I am an alumni of Galgottias University, recent alumni. And it's very important to understand it has not affected me in any sense. And I think anybody, any alumni of Galgottias University will agree with me. Because I'll tell you why. When I joined university, I joined it as a student of BSc Forensic Science. And I joined Entrepreneurship Cell of Galgottias University. The energy and the support is so tremendous that now I have a business in finance and accounting, AI. And during that journey, I was the VP of Entrepreneurship Cell. And the amount of interaction that I had with founders, the amount of interaction that I had with industry people, VCs, I have the confidence to build my own business today. And I think because of the support and the environment they provide, I think today I'm at this place to speak in front of everybody and to actually build something on my own. And how about your friends? How about social media? Did that affect you? Did it come to you? Not really. So I am someone who understands this fact that negative is something that stays in your mind. First, entire day, if you see, a lot of things, good things will happen, but you'll still remember the one bad thing in your mind, and then it just goes haywire, right? So it's very important to understand there are a lot of good things that the institute has provided us, so many support. Yeah, good things like, receiving so much of funding. Yeah, definitely. Anybody else who wants to take that question? How did that, controversy? Taking a cue from my senior, Ananya. To be honest, as a current student, graduating student, I would say that it did not affect me at all because there's a social media reality to this, but at the same time, in the ground reality, we are seeing every day at the university that there are multiple 5,000 plus placements, as you see, and multiple industries are coming. Let me tell you why. For me personally, I have been 3 times delegate to Harvard University HPAR conference. I'm heading to Cambridge University in June. I am going to compete in Adventures next month in Hong Kong. Alongside with that, I have been a delegate to NTU ASEAN Summer Program at Singapore and Vietnam. My one startup is for fundraising in Vietnam this year. So you see, all of this is because Galgottias University is integrating so much of education and AI into the whole field and ecosystem of education right here. So to be honest, the whole conversation that is happening,
I feel that it did not affected me. I don't think it affected our peers altogether. What it affected was that I grew much stronger in my affinity towards Galgotia as a university, because I see that what is happening right now in the university, and even though people don't get the narrative, I know because I'm very outcome driven, and that I get from the university. But does it worry you that, for example, every time you list your credentials, you're telling about your achievements to somebody, and they want to maybe fact check it? Does that psyche affect you? Not actually, because you have to understand one thing. Right now, if I'm meeting someone who does not know what education, what field I come from, or they do not work in that field, that just discourage their own credentials. Yeah. See, when I'm in a stage where people know what I'm doing and they're also doing the same thing in their field, then it comes out that what I bring on the table, what outcome I'm giving. Then when I'm giving that outcome to them, they do not disregard that I have this credentials or that credential they want to check, because I'm giving a real-time example and experience to them. Sure. So I think it does not affect that much. Okay, we'll come back to the projects that these guys have done. And if you had to tell me one opportunity that came in front of you, or let's say challenge, which you overcome and which we can learn from. Like being the youngest entrepreneur, I just tackled one problem that no one was believing in a child, if I will say. No one believed that a child can do this, or that comes affecting the deals as well. When you go to any corporate nature, any client to meet and crack a deal, then there comes a point of trust. But how I overcome that was by building the connections. And grow the beard as well. Yeah, you can That say. helps, right? Yeah, it helps. I've also started at the young age of 18 itself, and then, that really helps when you... Yeah, like when you I was tackling this problem since 14. Like I had my first venture at the age of 14. So I was tackling that till 14. So like making the connections from the peoples and giving, taking and validity from higher peoples. So give you a connections. I'm going to ask that question to all of you. Any challenge that you overcome and which we can learn from? Yeah, actually, it's about the failures. Everyone fears failures. What if it doesn't happen? So getting into entrepreneurship really helped me to face the failures and then, stood up again. Learn, yeah. And the support from our Galgoria's incubation center and the mentors they gave me. Even since we have an agriculture startup, right, and it's an agri-tech startup, so making it work for the farmers and making it adaptable for the farmers in the field. Sure. With unpredictable conditions. So that really helped us a lot. We meet them, we understand them, their problems, and with that we make our early disease crop precision. Got it. Yes. And then what about you? Like challenges as young entrepreneur, I think it's more on I think it's actually better if you're young. You can knock on any doors and everybody's going to help you because, you are young and you have the and energy. they can cut you some slack as well because, ye to abhi naye bacche hain, koi baat nahi. I mean, they can always, you always get that discount because you're young and, they support, I think they love the energy of young people. I think so senior people, they like, okay, I love the energy. That helps. Got it. Very quickly, two of you as well. Yeah, so I think the challenge that come in my mind right now is that when I was in Vietnam, I had to go to a village where I was talking about water crisis, and I was giving them this particular machine that I developed, and they were not trusting me. They think that I'm just someone who wants their money. So the biggest challenge when you're so young and you go somewhere where people don't know, I think the trust. You have to get their trust to trust you, right? So I think, yeah, it was. How many banh mi did you eat in Vietnam? How many banh mi did you eat is what I was asking. 6 or 7 every single day. What about you? So what I will say is, trust the process. There were many times when we failed architecturally to understand the context, क्योंकि हमारे लिए daily ही new architecture आता है. There are no self-based output. We make custom solutions for everyone. So what I will say is, trust the process, dive deep in, and make it through. Okay, my last question. A lot of Gen Zs also here and a lot of non-Gen Zs also here. If you could teach us one Gen Z term that non-Gen Zs could take back home, what would it be? Which is your favorite Gen Z term that your generation has? Clock it. Clock it. Yeah, Guys, can we clock clock it? Yeah, just clock everyone with your talent, to be very honest. Anybody else? Any Gen Z term you want to teach us? I think they are quite serious kids who are busy building their businesses. They don't care about skibidi or clock it. You have one. If I talk about the Gen Z term, everyone says that Gen Z is so much impassionate one, right? I say, if we are getting a chance, then why to wait and why to just have a patience? We can give it a try. If it hits, hits. Lovely. Okay, give it up for these students, guys. Thank you very much.
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you very much. And of course, it was quite inspiring to see their stories and what they're building. I hope it will be helpful for our audience as well. Thank you, guys. Thank you very much. And of course, before we let you go, you can have a moment here on the stage for the memory's sake. I think you guys should also get one clicked just of your group as well. And can we also have some music as well? All right, can we have a huge round of applause for the students of Galgotia University for being so candid here with us and for sharing how they felt when that fiasco unfolded, truly. Moving on to our next session. Well, they say, Arun, that ambition gives you wings, but what truly takes you high is courage, resilience, and will to break barriers. We've heard that so many times, haven't we? Yes, we'll go on to our next session. But before that, we also wanted to have a little bit of chit-chat here with the audience because, as I said, it's a conversation. It is an interaction as well with our young members. So can we have the guest mic already? Now, we were talking about YUVA. If you guys had to describe your generation or YUVA of 2026, which one word would you describe this generation with? Can I get the mic, please? Let's start with you. What do you think? I would really say chill. Our Chill. generation is extremely chill about everything and we can handle a lot of stuff with relaxation and we are not impatient about stuff. One internet trend that you're obsessed with as Gen Z. One internet trend that I'm obsessed as Gen Z is clock it. Clock it All of you guys are and obsessed rage with baiting, clocking I it. guess. We are already clocking and rage baiting a lot of people and people are getting rage baited. So that's what our intention is. What do you rage bait most on? Uh, Do you also make videos on the internet? Just No, asking? not really, Okay. but- So what do you rage bait people most with? anything which can rage bait them. I would really just go She's at to it. their limitations. Let's also check some more Gen Z slangs. What does no cap means? Let's ask. I don't think we need to quiz them. I'm sure all of them know. What does... No cap is actually means no lie. Yeah, of course. All of you would know. And next, Rahisha, if there's any other... This term one next is easy, flex. But I want to ask somebody who's non-Gen Z. Maybe that's where the fun So begins. what does flex mean? Any guess? No idea. So take a guess. What do you think flex is? I can know flex means flexibility. But if I say you are flexing your glasses, so what would that mean? Adjusting. No. Flaunting. Tuning. Flaunting. Flex Flaunting. means Ah, show off. Flex is flaunting, but thank you very much, sir. Thank you. Give a huge round of Thank you, applause for sir for being such a sport. And this is what we'll keep doing, okay? So brace yourself. We'll keep coming to you. And sir, the mic can stay with you. That's your moment. But now we move on to our next session. But before that, Arun, let's also ask the youth today, all the youngsters here, how do you feel about NDTV YUVA 2026? We've been doing this for many, many years, but the Delhi edition. Can we please have the mic and any answers here? Your one thought, does it inspire you? Your thoughts, can we have a mic to the lady here? Your thoughts on NDTV YUVA 2026 and how perhaps does it inspire you in ways to come? Can we have the mic? The for mic her? is there. It's wonderful to be here, and it is actually very inspiring. We are getting to know a lot of stories that we would have not known otherwise, and we are getting insights which are really candid. So yeah, that is what makes it. Okay, don't tell us the meaning, but what is your favorite Gen Z term? Don't tell us the meaning. Uh, Okay, anybody else? There's so many. Any of you? Any one of you? I cannot think of my favorite right now. Okay, not a problem, not a problem. Anybody else who wants to suggest a Gen Z term which we'll take to a non-Gen Z? Yes, ma'am. What would that one term be? Baddie. Love that. Where's But the we mic? need to ask a non-Gen Z what Yes. baddie means. Sir, if we could come to you. Where's the mic, guys? Okay, so if you had to take a guess. Baddie. These guys use this term a lot. You can give a hint, Arun. No, first we'll make him take the guess. Something which is not suitable. Yeah, something which is bad.
Okay, I'll give you a hint now. Sir, what do you do if I may know? I'm in education. Okay, and you think you have accomplished a lot of, achievements? You have. Would you say you are an achiever? Yes. Yes, so I would say Yes. you are a baddie in education field. That's great. Thank you. So that's what baddie is. But thank you very much, sir. It's so exciting to see non-Gen Zs participate in something which is called NDTV YUVA. So this collaboration has to continue. Okay, I'll keep asking you for terms and we'll keep going to non-Gen Zs to decode those terms, Rahisha. Absolutely. But let's move on to our next session. We've had students here, we've had young leaders here who've inspired all of us here today. But our next session is about the aspirational yuva, where we certainly celebrate young India that dares to dream and turn them into reality, like all of us present here today, isn't it? Of course, coming up, our next two powerhouses. Please give it up for Kanika Tekriwal, founder and CEO, Jet Set Go, and Ghazal Kalra, co-founder Nuke, in conversation with NDTV's Siddharth Sharma. The energy should remain high, ladies and gentlemen. Can we have a huge round of applause for two powerful women here on stage? All right, let's have a round of applause for the two ladies here, please. Good afternoon, everyone. That round of applause was thoda fika, right? Let's have a big one, guys. Let's go. All right, we are joined by Kanika Tekriwal, founder and CEO of Jet Set Go, and Ghazal Kalra, co-founder of Nuke. Thank you, ladies, for joining us today. Obviously, the topic of discussion is the aspirational yuva. And we've seen, today's yuva is spending, earlier. They're expecting faster, and they're valuing experiences over ownership. So let's get straight into it. Let me ask Ghazal this to you. The rise of aspirational yuva consumer has been growing. How do you think that the young yuva is spending these days? That's a great question, because that was exactly the problem we saw when we started Nuke. I think the yuva is very, very, aware, and they are looking for great experiences. For the first time, India is not buying sabse sasta, right? The yuva in India is buying, products and services that are great, because I feel that finally we've waken up to the fact that, Indians deserve better, and the yuva is sort of leading that charge. So just simple examples, right? I mean, we build products for homes till my grandmother's age or my parents' age. Pankha hai to hawa chahiye. Lekin with the yuva, you want mist cooling function, you want it to be looking good, it to be silent, portable, and you want it personalized, right? So it's no longer about just price or, just function, but it's now more and more about value. And I think somewhere the other thing that's happening with yuva is that they're not buying brands for just status, that ye American brand hai to ye India mein chalna chahiye, and if I use it, then I am a certain kind of person. The young in India, the Gen Zs and millennials, are actually buying experiences, they're buying expression, they're buying stories, they're buying identity. Kanika, if I lead on from that question, they're buying experiences these days, and they're okay to try newer brands as well. What shift have you seen in your industry? You've been a big change maker yourself in the aviation space. So, if I had to give you a very simple example, the average age of a Jet Set Go customer pre-COVID was about 48. The average age of a Jet Set Go customer post-COVID is about 35. And that shows you the big shift that the world is seeing. I think it's no longer about owning things. It's about feeling things. It's about seeing things. It's about,
when I was small, I remember कि my parents used to always say, buy jewelry every birthday, फिर land खरीद लो, घर खरीद लो. I don't think the yuva is about खरीदोing things anymore. I mean, not in the, not in, in the, what sense I'm talking about. I think the yuva is about, trying new things, going down the path that's not been taken. You see 10 friends split money to take a private jet to go to the Maldives, which was unheard of before. You're seeing bachelor parties happen on private jets. You're seeing, our parents also agreeing to spend on these things. So I think it's a transition through and through. But having said that, what the big change that I'm really seeing is, we're no longer hoarders. Indians, I think, generationally, the previous generation especially, you would see us we were hoarders. We used to love to acquire things. And like Ghazal said, it wasn't about the brand. It wasn't about, it was more about status. कि मेरे पास इतने acre land है या मेरे पास इतना बड़ा घर है. Now renting is cool. I think we've moved away from the owning economy as well, and we're seeing a new age yuva who is about living life in the now, and I think which is what makes all of us relevant. If I may ask both of you, and either one of you can choose to answer it, how are you reimagining brands, targeting the young consumers out there in India, and how can someone learn, a new entrepreneur can learn from, your own experiences? Maybe you can start. I mean, again, right, in the spirit of what we answered before, the first thing for any brand that's getting started today is authenticity, right? And what that means is that, who you are as a brand needs to be communicated to the user and vice versa, which is what you're communicating to the consumer, you better be that, right? Because the young customer can see through that. There is just access to the brand and behind the story that's available. Now, how do you therefore become a very authentic brand? Some founders choose to become the face of the brand. It becomes a founder-led storytelling. For us, we do a mix of both. With every content, every communication that you hear about Nook, it's said with the same level of authenticity. Another thing you can do with authenticity is, letting people behind the process. So I think you'll see a lot of new age brands sort of letting consumers into the raw, the real, not the made up, not the makeup, content, but what's behind the scenes. And that really resonates with more and more younger consumers. I've tested this. I tested this on my parents and it didn't really move them. But I know that, they were like, isme aisa bhi kya hai, this warehouse visit, etc. But we know with a lot of our younger TG, and for Nook, our consumer is right between the age of 28 to 35 years. It resonates. I think the other thing is, if I were to add, if you're building a consumer brand today, is you cannot you cannot market a bad product. Because, somebody mentioned, and I don't want to generalize or stereotype it, but given the choices that are available to the young consumer and given how much they are researching on everything, you have to win the trust the first time you interact with a young consumer. And that comes through not just in the product, but the entire product experience, the unboxing, the WhatsApp messaging, the social media communication. So it's while you're able to get to them, you have to win the trust in the first instance itself. Well, I agree with you. BTS works like crazy on social media. A lot of yuvas over here would agree with that. Do you post a lot of BTS stuff? I'm not a poster at all. I mean, I don't think we post anything on Jet Set Go as such. Our social media sucks, to be honest. But airplane under maintenance. Yeah, the airplane under maintenance is not something I want the world to see. But I think I'll just add to what Ghazal said. Ullu banane ka zamana gaya. And to put it very bluntly. And I remember when we were small, wo Fair and Lovely ka ad aata tha. Okay, and your face would become white on one side by putting a little Fair and Lovely. You can't do that anymore. And that's the yuva for you. It's a very smart generation. It's people who are way smarter than us. I hired a chief of staff recently who did something for me on AI, which my CFO, who is very senior, asked for a week to do in 10 minutes. So this is the generation you're dealing with. So it's not only about authenticity, I also think it's about being very fast. You have to adapt to what they need like this. And they wake up with 10 ideas, they go to sleep with 20 more ideas, the next day they have 30 more ideas, and you've got to keep changing your product. You've got to keep adapting to what they need. You've got to keep adapting to what they want to see, what they want to read.
And I think staying relevant with this generation is a very, very hard job. I think today's Yuva is going to keep every entrepreneur on their feet, and they're going to make the best entrepreneurs, according to me, because they know how to adapt. They're so flexible and nimble, which I don't think we've seen before, in India. Zara used to be about fast fashion. I don't think that works with this generation anymore, to be honest. So, Kanika, just a follow-up there, we all know experience is like the new currency, but is the future of luxury all about, like hyper-personal service at scale for you? Oh, absolutely. I think one size never fit all before. It was a compromise. And at least in my space, I've seen it like even with, a slightly older generation. I think going forward, it's all about, very, very personalized service, very, very personalized products. But like you said, on a hyper scale. Just to give you an example today, if I'm giving a private, so I have pink pillows in our private jets, pink cushions, okay? And I had a customer who's also a friend tell me, कि यार, I sat in Kanika's plane. I'll say it in the language he said it, in Hindi, exactly the way he said it. यार, मैं Kanika के plane में बैठा और मेरे को पता पड़ गया ये तो लड़की का plane था, उसमें pink cushion लगे हुए थे. ठीक है, और मैं आज तक कोई plane में नहीं बैठा हूँ जहाँ पे pink cushion लगे हुए हैं. It never ever struck me that someone's ever going to think the pink cushions means the plane's owned by a girl. Right? The pink cushions were put because the plane was drab, it was grey and boring and dull. I said, let's liven it up, put pink cushions in there, right? And it looks beautiful. But to have a customer say that to you just made you realize, every customer, you need to even customize every inch of the interior, every flight. So if you're turning around the plane 6 times a day, you've got to turn around the colors, you've got to turn around the service, the uniforms, the food, because every customer wants something different. The same customer to go to Bombay wants a very different experience. And I think that's where the challenge is coming in for newer brands. And you're seeing that even in-store experiences, like, someone wants to deal with a computer, someone wants to deal with a human being. And I think the new retail stores now are, I think, managing this really well. So, I mean, if I add to that, right, in our context, we personalize fans. That's what we started with, right? And we did it as an experiment because, again, if you understand the young consumer, they want that identity, they want to personalize things and experiences, right? Like what Kanika was saying. And we started, and today, 85% of the fans that we sell on our website are personalized. And it's interesting because, people are having birthday, like now gifting fans, and who would have thought that, right, when we started out. So even, and that transcends into store experiences, but that also means, as a brand, how do you, give identity to your products, right? So colors become another thing, right? And people have strong preferences. And when someone looks at our brand, they say, you guys are bold, you guys are young, fun. But that's actually coming very intentionally through the design process. Now, experiential for sure, and thank God he was your friend as well, right? That could have helped you give a good insight into, that entire experience there as well. But how do brands build that trust, with so much bespoke, marketing, so much bespoke branding and consumerism out there? Like, how do brands like yours build trust over and over time and get that repeat customer as well? I think, you can do as much branding as you want. You can do as much packaging as you want. At least in the space I am in, I think it's about product. And you have to have the safest plane in flying in the sky. You have to have on-time service. You have to have a clean plane. It starts with very basic stuff like having a clean aircraft, the right water bottle, going up to never having an incident or an accident in the sky. Or even if it's the hotel space, for example, would you like to go stay in a hotel where a room's caught fire? No, you wouldn't, right? Or would you like to stay in a hotel which has bad service? No. So I think it's a lot to do with, acing the product. This consumer is a fussy consumer. This consumer has liquidity, this consumer has money to spend, and this consumer is an intelligent consumer. Usko internet khojna aata hai. When my dad goes and books, he'll see the first 5 Google reviews. This consumer uses AI, okay, and he or she knows, the Yuva knows what is best for him. And it takes them 10 seconds to change. There's no, I wouldn't say there's no loyalty left, but there is loyalty towards the right product at the right price, the right service. So for me, what I tell the team all the time is, you've got to have the best product at the best price, available at the best time. If you don't answer their call at 7 a.m. in the morning to book a flight, you're going to lose that flight. They're not going to think it's a 7 a.m. phone kar rahe hain, maybe the person's not available. So you've got to be there and ace your product and keep acing your product more and more and more to get there. Like, I'll give you an example about her product. My brother, who's
a very cool yuva. He's very against buying anything. You know, it's the most minimalist lifestyle you'll ever see. When he saw that we were speaking together, he's like, oh, tell her I have an air fryer. It's the best thing that's happened to me. You know, and that's what the yuva is looking for, right? I use her fans. Okay, I'm someone who hates carrying things in my bag again. But I've got so many of them with my name on it because it just, I think, makes you feel cool, right? And it's a great product, ultimately. I won't buy the second one, third one, or fourth one if the product wasn't great. I think it's a very, very product-oriented, TG, who you've got to latch on to by keeping on improving what you're providing to them. And Ghazal, like if I may, like in consumer electronic, building that trust is really important for that repeat buy. Like what are the kind of challenges you were facing as well, in building that trust? Great. So you're absolutely, like you've exactly articulated what this industry is about, which is, the repeats come from trust. These are low frequency, high value purchases, right? You've bought, let's say an air fryer, you're unlikely to buy another air fryer within a month or two, unlike beauty and personal care. But the next time you think of buying something, am I there in your mind somewhere saying that, hey, look us up? And the thing, what she was saying, started with just building a very strong culture of product first DNA within our team, which was, to me, the biggest challenge, because historically, India mein, and I'm going to switch to Hindi here, दो ही तरीके से products बनते हैं. या तो इंडिया में ये belief है कि सबको सस्ता चाहिए, तो आपको बहुत ही खराब low cost products मिलेंगे, उसकी भी market है, लेकिन the young generation has moved past it. या दूसरा, आपको बाहर की brands मिलेंगी और उन पे एक इंडिया का एक इंडिया मार्केटिंग करके एक इंडिया का सोशल पेज बन जाएगा और आपको सेल हो जाएगा. फॉर अस एंड देयरफॉर द टैलेंट in India to build great products for India, from India, didn't exist. So for us, that meant that we had to go and find this talent that understood hardware, software, and Indian consumers. And for us, that was, once we nail that, then it becomes a flywheel. तो वो culture बनाना और वो talent use करना, हम कह सकते थे हम product first, and if you'd gone and hired the same talent, what works in Dallas homes does not work in Delhi daris, right? What works on London carpets does not work in Lucknow daris, because वहाँ पे, like I'm giving an example of vacuum, right? जितने दुनिया में vacuums बनते हैं वो बहुत ही साफ AQI 6 के environment के लिए बनते हैं. Indian homes are very dusty. I mean, look at the amount of construction dust around us, and any vacuum you pick and localize here will fail. So we didn't localize, we understood the Indian consumer and build back from there. So that was the biggest challenge. Well, this was an insightful session, but we have a surprise for both of you. We have two young people over here, young entrepreneurs. Maybe get the mics to them and get them on stage. They're here to pitch you an idea, right? And let's see. She's a shark, so I'm sure she's used to it. So yeah, maybe have the mics and the guests up here as well. Let's go. So if you want, just for your reference, you can refer to this. For sure. Actually, why don't you show this to the camera over there and picture. So quickly, guys, let's come here. Let's come here. Why get the chairs in the frame? We're all good-looking people. Come ahead. So quickly, just share your name. 1-minute pitch to both of our entrepreneurs over here, and let's go. Let's start with you. So I'd like to start talking about my friend Amber. He recently he called me and said that he got a scholarship from Dell Technologies. He got a laptop. He said, but मैं इस चीज़ का करूँ क्या? ना मेरे को GPT चलाना आता है, ना Word, ना Excel, मैं इस चीज़ का करूँ क्या? That thing is of no use for him. That's where we bridge the gap. 60% of the students are similar to Amber. Their dropout rate in college is 3 to 5 times more than regular students. Now, if we talk about where we step in, that's where we bridge the gap. We teach them 4 skills mainly: MS tools, Excel communication, and networking. We are an anonymous mentorship platform, Bridgin. We connect them with the mentorship, the mentors who are of the same college, the alums, and we focus, our revenue model basically focus on earning licensing through colleges and CSR grants. We have a 3-fold impact system.
Firstly, the mentees get better internship opportunities, the mentors earn above industry average stipend, and the institutions experience lesser dropout rates, more aggregate placement reports, and better aggregate results. All right, that was an interesting pitch. Like, let's have a big round of applause. So I'm going to ask both my guests over here. Let's start with you. You know, you heard that young man's pitch. One fix that you think that he needs to do. For any business idea, you should think about iske paise kaun dega, because relying on grants, etc. is a good start, but eventually you need somebody to pay. And usually in India, people pay, like at least in education, pay for jab naukri lagti hai, right? So you may want to sort of bridge this very quickly with, employment, because your chances of monetizing this are higher when they are able to monetize this skill. To answer that, our main revenue source is licensing through colleges. Like I said, how the college will be benefiting from us is that as we identified, the people who are not getting placed are these people only. So we'll improve the college placement report, reduce their dropout results, and that we talked to like 3-4 colleges, and we realized that they are willing to pay for such systems 10 to 15 lakhs. But initially, we plan on like starting this in our own college to build credibility. If this gets successful in Shahid Sukhdev itself, which is a like leading DU college in management, I think eventually like after building this credibility, colleges would be willing to pay that 5 lakh rupees per year. Okay, let me flip this. Yeah. What if you were to go to the end user of this talent, which is companies, and say, hey, today when you go to these colleges, you're not able to find the right skill. We will do this prep for you in these campuses, and you pay us, because वो companies तो जा ही रही हैं college में, उनको अच्छा hireable talent नहीं मिल रहा, right? So Yeah. I would still push you to say that monetize from the end customer, जिसको इसकी value है, rather than the intermediary, because उसको हमेशा ये cost लगेगा. Well, I'll tell you what. The young man is really passionate over here, Yes. for sure. So you two definitely need to catch up after this session for sure. But quickly moving on to our next participant. Please state your name and go ahead with your Just pitch. a quick question. How many of you take protein powders here? How many of you all? Take protein powders. There you go. We've Okay. got hands. Yeah. So just imagine, सुबह के टाइम आप जिम जा रहे हो, आपके बैग में प्रोटीन का एक इतना भारी डब्बा और वो भी आधा खुला हुआ. Now imagine that you are tossing a sachet into a bottle and it just completely dissolves, no wrapper at all. So basically what happens is India generates around 5.5 million tons of plastic waste every year, and only 13% of it gets recycled. About 15 to 25% of the protein powders are adulterated in the market. Fake fillers and chalk powders are used. हमें ये सब पता भी नहीं चलता. Even in the kitchens we use masala के pouches, coffee के pouches. These are just multi-layered plastic sachets. So what happens is that I am Sia and I'll introduce you to Resolve. So what is Resolve? Resolve is a fill packaging. So what it does, it is made from 100% food ingredients. It gets completely dissolved in your solution. So when you like, the protein powder is in that, and you just have to pour it in the bottle and it will just completely get dissolved. So there is no waste, no adulteration, nothing at all. So what happens is just companies, the factories itself, you have to fill it in the sachets, and जो brands हैं उनके लिए भी trust build होता है, and ये environment के लिए भी safe है. So in the future packaging ऐसी होगी कि वो बनते ही मिट जाए. There will be no waste at all. Well, that was an interesting pitch. A big round of applause. I must ask Kanika this. You have a feedback for the young lady here? So I'm 8.5 months pregnant, and my problems seem very similar to what you're saying. I've been asked to have protein powder every day, and I travel so much. I have someone carrying big boxes all the time. So I think you're really solving a problem, and I know exactly what you're talking about in terms of all the plastic and foil layers that go into all the packaging. In fact, that's something I've been struggling to come to terms with a lot. So I think you're on the right track. I obviously don't know the chemical composition of what you're doing, but I would love to talk more and understand more. I think it's something the country really needs. So only Well, there you good go. to A big round of applause. Thank you so much for pitching in your ideas over here. Let's give a big round of applause to both our guests over here. Thank you so much for joining us. Our next session continues.
while the conversation is going on here, it's important that our conversation also continues, because this session was about the aspirational yuva. I'll come to few of you, and ask you what your aspiration is, your name and what your aspiration is. Hi, my name is Manjinder Panu, and my aspiration is to be one of those persons who could achieve her goals going forward in life. A huge round of applause for her. Your name and what do you aim to do? What do you study as well? My name is Sheetal, and my aspiration is to be someone like who everyone want to be, like inspiration for all of us. Okay. Like someone who can stand for right and be the right all the time. That's really nice. So all the youngsters here, they are perhaps walking towards change. They are being the change makers. Let's go to people here on my left side who are on the older side, perhaps, not the Gen Z. We had the Gen Z terms going on. Coming to you, sir, your name and what does main character energy mean? My name is Anil Behel, and for me, Gen Z represents dare people. They dare to dream. Only thing what I like, they are very impatient. And me also, I did 32 years job, and then I am now an entrepreneur, a very successful entrepreneur in electric three-wheeler, and very nice to attend this program also. And we are sponsors also from Shubh Bharati. Okay. Yeah, thank you. Okay, thank you. Round of applause for all of you here. I've been asked not to reveal what our next session is. For that, I'll call on stage my co-host Arun Singh. Arun, over to you. Lovely. Before we move on to the next session, I want you guys to give all of us a huge round of applause. Because NDTV YUVA is not an easy task. We move on to our next session. Now, some people follow a path, and some people create their own language along the way. My next guest is someone who genuinely proves that you weren't born for just one version of life. From mastering Bharatnatyam to moving seamlessly across Tamil, Telugu, and Kannada cinema, from theatre roots to big screen impact, language has never been a barrier. It's been her playground. She's worked with some of the most exciting names in the industry, and she will be seen with many more. From Yash in Toxic to collaborations with Junior NTR, Rishabh Shetty, and continues to choose stories that feel personal, not just popular. But beyond the films, there's a deeper story, growing up as the daughter of a martyr, working closely with war widows through Veer Ratna, and carrying that strength into everything she does. And of course, being part of a cultural phenomenon like Kantara, a film that didn't just succeed, but stayed. She paints, she performs, she shifts accent like it's second nature. And somewhere between all of that, she's still discovering what's real life even means. Let's get into it. A huge round of applause for Rukmini Vasant. Lovely, Rukmini, a very warm welcome. Guys, I want a louder cheer and a huge round of applause. Yes, we are a young audience. I don't mind a woohoo. Lovely, Rukmini, before we talk about movies, work, we first go on anybody's Instagram profile every time, we are about to chat with them. I went on yours. Your bio is really interesting. Can you explain what your bio is and why do you have that? Everyone, I'm so excited to be here with you all today. Thank you to the band also. What a welcome. Oh my God. My bio, and this is going to sound, it's not very dramatic. My bio just says, Rukmini, you weren't born for real life. Yes, that sounds very deep, but it is something my sister shouted at me when I didn't clean our room once. She was just yelling at me because I apparently was not born for the day-to-day mundane activities of keeping our shared space clean. So, yeah, it's not as deep as I would wish for it. It is. I mean, you weren't born for real life, hence you go on to join movies. It's a reminder for me to clean my room. That's what it is, a personal reminder. Lovely. Now, of course, congratulations on all the work that you've done in the past and what's coming next. When you come on screen, the relatability that there is has made you reach masses. And today, in 2026, now when you pick a script, I'm sure there's a lot of pressure.
And it's an art to pick the right kind of script. What makes you say yes? What makes you say, I have to do this? I think there's a lot of things. It's a cumulative decision that you have to come to. The first thing, obviously, is the plot, the story that we're going about to tell. That's something that needs to be deeply engaging. But one thing that I do care about quite deeply also is the arc that my particular character will go through. It's not essential to me that that has to be at the forefront of everything that happens. It's not necessary that that character needs to be in frame and constantly being the one to push the action forward. But as long as there's some growth, as long as there's a beginning, a middle, and an end, I find that that gives me something selfishly also, but it also is something I can grow along with. Right. And how many of you have watched Kantara? Most of you. Now, when you were approaching Kantara, what made you say yes to that? Because, when films do good, of course, you can always ask what made you feel, the success. But it's important to ask what led you to that success. Did you anticipate it to become that big? That, I think, was baked into the story itself. I mean, it was a Dhurandhar much before Dhurandhar, right? So did you imagine it to be like that? I think I did. And see, Kantara is a bit of an unfair example because the first film had been so widely accepted by audiences across the country and the world. People were so enamored by this new culture that they were learning about, this fascinating culture that exists in the south, in the Karavali region. And I think that that was something that spoke to a lot of people. So the prospect of simply being involved in that world, that mythical, fantastic creation, and being able to push it along myself and contribute in whatever small capacity I could, that was just too exciting. And then as I got to know the story, the level to which it would go, the world building was phenomenal. But would you believe that, since it's a sensitive story, and then, of course, it talks about a culture, so because of that, when it goes mainstream, a lot of cultural appropriation also, sorts to become, very common. I mean, we've seen several celebrities also, let's say, mimic that particular style that became a controversy. So do you think cultural appropriation gets really common when a film like Kantara goes mainstream? It is a double-edged sword, certainly, because this is a beautiful and fascinating culture that exists, but it's also a living, breathing belief. It is a faith that's very important to people. So I think that, films also do attempt it. I think Kantara also did have a couple of slates in the beginning where they say that this is a very sensitive and important belief to a lot of people, in this part of the world. And so to please approach it with the sensitivity and divinity that it holds within itself. So I think filmmakers do what they can in order to set the mahol, so to speak, of how we should be approaching these films, because they are also entertainment, but it is also laced with faith. And sometimes it can be a bit of a double-edged sword, but I think people find their resolutions along the way. A lot of people, they do understand when a boundary's been crossed, and that's also part of education. Right, of course. And thanks for educating us, through cinema. And as we talk about your movies across different languages, and we get to talk to you about your language proficiencies, you do your British accent so well. Can we see you do a little bit of British accent? If I was to ask Rukmini, how are you doing today? I'm doing very well, Aaron. How are you doing today? I have been told that this accent is not very good, so forgive me if you don't enjoy it. American is always a lot easier. We can all just do the American accent. I think that would be easier. Let's just stick to that, shall we? For being such a sport. Now you have also, DM'd a director for a role, and this is something, this is a masterclass for all of us, especially young ones. Sometimes we feel, isn't it too pushy? Will I be perceived in a certain way if I do that? And a lot of youngsters feel that. What would you want to tell them? How did you back that role? And what can they learn from it? So, it's kind of complicated, right? Because I studied in a drama school in the UK, and they're very proper over there. They're very serious. They're like, you do not DM people. You do not, if you happen to see them in the tube, you don't go up to them and be like, listen, hi, I'd like to work with you. You approach it in a very professional manner. You have an agent, they have an agent. Agents speak to each other, figure it out.
So coming from that tradition of professionalism to just be like, I know this director is making a film, I know I would love to be a part of it, I'm going to shoot my shot, was a bit of a dodgy decision. Also, given the fact that he ignored me for 10 days after. Like, I was scene zoned for 10 days. On scene. I was left on scene for 10 days and I was left to think the worst. At that point, I was like, I'm not getting any work. Clearly, everyone thinks I'm way too unprofessional for this. Eventually, I bagged that role because of the audition that I later on gave. But I think the thing that I would say is that there is no harm in shooting your shot, whatever that may be. Obviously, you do it in a respectful manner and you make clear your openness to try for it. There is no entitlement in, demanding anything, but knowing that you have what it takes, perhaps, to just try for that role and see if it sticks. A great learning here is that yes, you shoot your shots, yes, you DM the person that you want to work with, but then be prepared for that audition. Be prepared, right? yeah, be prepared for that those credentials. Yeah, you need the nerve to shoot your shot and to reach out for something. Sure. But you also need to have the work, the ability that is the spine that will then hold that bravado of spirit up. So I think it's twofold. Right. So it's 2026. It's a great time for women in cinema. Of course, we have a long way to go. You're loving the roles that, heroines today are portraying on the big screen. But now you have worked with such big male stars, whether it's Rishabh Shetty. Now we'll be seeing you with Junior NTR. There's Yash also, where you are collaborating with him for Toxic. How do you, first, do you ever have that in your mind that, okay, I have to, hold a position where I am not being overpowered by anybody else? Do you have that approach first, and then we'll go on to the second part of the question? I think that a lot of the people that I've had the privilege of working with are people who understand that everybody comes to this space with their own contribution, and everybody kind of makes room for the other to take up space and to contribute in whatever capacity they can. So, for instance, in Kantara, Rishabh sir was very open about that, about the space that I had as the character Kanakavati to perform and to occupy whatever space that character needed. So I think I have been privileged in working with people who allow you that room to do your thing. My second question, and before that, I also want to tell you, I'll take one question from the audience as well, so be prepared for that, because, we want young minds also to participate in this, and it becomes a conversation. My second question was going to be, forget the gender, but when you work with a big star, somebody who's massive, of course, you are, doing great work, you've become big, your work is great, but then when you're collaborating with somebody who has a big name as well, does that ever become daunting? Or if it does, how do you manage that? I think it can be kind of daunting in the beginning. For instance, the first time I met Yash Even sir, for Rukmini, it's daunting? Please. Exceedingly daunting. The first time I met Yash sir, I think I walked into the room carrying the legacy of all the work that he's done before. And, being someone from the Kannada film industry, I've seen a lot of his work growing up. So when I walked into the room the first time to meet him, I was carrying the weight of all of that. And then you see that they are not really carrying that weight. They approach every film afresh and new and with a real lightness of spirit that is infectious. So that was something that was very, very eye-opening for me, to see that the legacy that they've built so far is not really a burden. It's work that they've done. It's a path that they've paved along the way, and now they're completely consumed by what it is that they're creating at this point, which was it was amazing for me. It was a great learning, and I think that that's also a privilege of working with huge stars. You get to see how they approach their work. Lovely. So you learn the process while working with them. I'll take one quick question from young minds here. Anybody, you can raise your hand and the mic shall reach you. Can we get her a mic, please? Please start with your name and then your question. Hello, ma'am. Hi. Hello, sir. Hi. My name is Manjinder Pannu. And ma'am, like you mentioned earlier, that you had a nerve to DM one of the persons for a role. And then you also later spoke of how in the UK you wouldn't have done that. You would have taken a professional recourse to it. Say, suppose the way you mentioned that it was
on, the person left that on scene, would you suggest, had the person not replied after those 10 days, would you suggest to a young person to still follow the same course or, be on a back foot? That's a great question because that has also happened to me. And in that circumstance, I did drop a reminder once, sir, I'd reached out about this. If there still is a possibility, I'd love to. This was for a completely different film that I am not in. And I didn't get a reply. But I think the best thing to do at that point is to know that you tried whatever you could do. At that point, whatever avenue you had to access a person that you wanted to work with all your heart, you did try. And if it didn't work, that one opportunity is not meant to happen in this way. And then you take that energy that you have, because you clearly have it, and you redirect it to something else that you think that you can reach at that point. As they say in Hindi, man ka hua badhiya, nahi hua to aur bhi badhiya. Exactly. So I think that's what you take away from this. But thank you very much for answering that question. Thanks a lot, ma'am. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you for interaction. Thank you for that lovely question as well. And my question was going to be that would you do something like that in today's day and age as well after you've established yourself? But as you mentioned, you did. I did. And it didn't work. It didn't work. So does that hurt you? A little bit. I mean, it does a little bit, and then you know that sometimes it's probability, or sometimes you don't know necessarily what's going on with other people. You don't know how busy they are. We tend to think of these things very much rooted in our own experience of things. Oh no, they didn't reply to me. Oh no, they didn't acknowledge me. You don't know what folks are dealing with, and whether it's not a burden that you can put on them necessarily. I think, again, what I try and teach myself to do is to take that energy to what is in my control. Right. And actor is all about their experiences. Whatever you show on screen, it's a lot of it is dependent on what you've experienced in your life. Now, I also want to talk about another aspect of your life, which is about your father. In 2007, he laid his life for Uri, for protecting us. How has that impacted your experiences later on? Now you also work with war widows as well. Mm-hmm. How has that made you a better actor, a person, a better professional? That's... And because a lot to learn and a lot to heal from, and a lot of experiences, a lot of feelings, which a lot of us won't even understand. I think possibly the biggest learning of that part of my life has been sensitivity, to understand. As an actor, we work a lot with empathy, with emotions. I think that experience in my life has given me an understanding of a depth of pain that I hope, lots of people are not privy to, but it's something that I think emotions are a spectrum. Sure. It's taken me to one end of a spectrum, which I believe has taught me to use different colors in my painting. If my acting is an analogy, it's given me more colors in my toolkit. But the work that I have to say, it's more my mother's work that she does. That has been an amazing learning for me, to see that sort of generosity of spirit where someone has suffered a traumatic loss of their own, but chooses to redirect that to the betterment of other people who are in the same situation. I think that's been one of my biggest takeaways from that experience as well. And it's really taught me that human beings can use our pain almost in a proactive, generative way. Sure. You can redirect all that pain into action around you. And since you use that analogy of painting, we've also stalked you enough to know that you paint a lot. So is that also therapeutic for you? Is it your passion? Or did you ever want to become an artist, a sketch artist first? What is the story behind that? It was a possible career option for me until I failed in school. I got a D at that point. So clearly in art. What are you saying? Fine art. You must check her highlights, which is art by R. It's spectacular. Yeah, the board of examinations closed that door for me very, very thoroughly.
But I found my way back to it on my own terms in that sense, not as a professional, but as an enthusiast, as someone who just enjoys a certain kind of outlet. Sure. Because I think that acting can be very emotionally heavy. Sometimes you need to work with your hands, whether that's pottery or art or origami or whatever it is. You need some outlet, some hand-eye coordination sort of thing. Lovely. And before we start to wrap this, my last question to you is, of course, absolutely exciting projects lined up for you. Which is that one thing that they should really hold their breath for? Any one project, any assignment, which you can talk about. Of course, there's a lot in your kitty. So if you had to tell them for one thing which they can hold their breath for. I mean, I really want to. There's lots of things. My God, don't make me pick. Problem of plenty she has when it comes to work. I know. That's a That's a great good problem to have. Great place to be. I'm very I'm blessed. But I think what I'm really very excited about is Toxic, which is out on June 4th. I feel like that's Yay! It's a very, very exciting project. I think the scale of which is certainly unlike anything that I've seen yet. And I just think that the world that our director Geetu Mohandas and our star Yash is building is just so expansive, so new. It feels really pioneering to me, so I'm excited to be involved in it. And I think I'm really excited to see how people respond to it and how they react to this new world. Lovely. And Gen Z loves this term anyway, toxic, right? Anything that you don't approve of is toxic for you guys. But as we wrap, we also have a graphologist here with us, and you have signed with her. Can we have the graphologist on stage, please, and let her analyze what she's found about Rukmini? Okay. What are your learnings now? I'm terrified, by the way. Terrified. I can make it. No, but frankly speaking, if I didn't know what field you were in, I would honestly be like, this is someone from within who we could have found sitting on the mountains, reading a lot of books, having discussions with people, and on the go traveling. Even though she is out there, but very selective with the people she chooses to trust. Is that true, Rukmini? Is that true? Are you very selective? Yes. Selective to trust. Oh my God, yeah. It's and scary. Even if you wish to get to know her, it's like the mind is your gateway. Any kind of ideas, imaginations, high-level thinking. And I feel even the films you do, instead of the glam, what attracts you more is the vision in that film, and to come across as an independent, self-made person. That's very important. Do you want to redo the interview with Radhya? I feel like she's got it spot on. Oh my God. But of course, you see that through your work, for sure. Whatever she's reading about you. And stagnancy is not at all her thing. Like, boredom can be like lethal for her, dangerous. Like, keep me on the move. Are you fidgety by any chance? Are you fidgety? Madly. Oh my God. That's a great observation. Then thank you very much. Thank you so much. Thank you. Rest we'll take it off stage. Don't worry. Thank you. With that, we've come to the end of this conversation, Rukmini. Thank you very much. It was lovely chatting with you. Thank you. Thank you. Lovely. Rahesha, we've talked about young leaders shaking up politics and business. Young stars also owning their field. Absolutely, Arun. But our next session is themed under being a Malikin. I want to ask all the Gen Z here, do you know what being a Malikin is? Yes? No? You can be loud about your answers, guys. Yes. Entrepreneurs. Okay, any other answer? Niche hair. Okay. Lovely marketing there. Cheating because you saw her coming. Well, being a Malikin means being a true boss lady like so many youngsters here, isn't it, Arun? Yes, and that's why our next session is themed under being a Malikin with none other than Parul Gulati, who's not only dominated your Instagram screens, but is also the queen of her own Marzi Ki Malikin philosophy. Please welcome Parul Gulati in conversation with NDTV's Simran. The stage is all yours.
Cool. Yeah, I think so. Hi guys. Can I? Yeah. Checking. It's all good. Okay. Our Jhumru took the mic. Hey guys, the more interactive you guys are, the funner the session will be. And one of y'all, no, three of y'all will also be getting a transformation by Nish Hair. So it's going to be fun, a lot of fun. This, let's start. Okay guys, so we are sitting next to someone who is the definition of a desi baddie. She's a CEO, businesswoman, actor, model, the Malikin of her life, and I think pretty much the Malikin of our lives as well with all of her business ventures. Welcome to YUVA, Parul. Thank you so much, Simran. You're so kind. It was a nice intro. Thanks. I want to ask you, Parul Gulati, are you a fan of Gulati kebabs? Breaking news, I am a vegetarian Gulati. So I go to vegetarian Gulatis if I go to Delhi Gulatis. Cute. Okay. So tell me, you started all these ventures in India. You have opened so many boutiques and your hair extensions basically started here. And then you opened up in Dubai. So tell me, how's the market in Dubai like compared to India's? So I think hair loss is something that is everywhere, and I'm catering mainly to Indians and brown people. So I guess the questions, the query stays the same no matter where you are. But what worked for me in Dubai was doing a lot of these pop-ups before I identified that that is my market. And it worked out, it turned out well, I guess. Yeah. So Dubai's market, like, is it similar to India's market or is it quite different, like the demographic you get there? 100% you get the access to the world because everyone's coming and living there. But in my case, because I appeal mainly to Indians, Pakistanis, Arab women, so they end up coming more to the stores, Nepalese women, Sri Lankan, so that kind of Asia I'm capturing, and Asian women mainly, which I would not get the access staying here. Why did you pick Dubai to expand to apart from India? It was a lot of these pop-ups where numbers were there, and when numbers speak for itself, you don't want to miss out on that number game. That's true. And you are one to really uplift those around you. Like you've been doing it constantly, be it with your business, the way you speak to them, the way you interact. So why is that important to you? Well, I think when you come from a smaller town, you always wish कि आप scout हो जाओ, आपको कोई choose कर ले, आपके लिए कोई कुछ कर दे. In a way, it happened with me. I got selected on Facebook as how I became an actress. In 2010, I got my message on Facebook. So just imagine. So that happening, then with my business, I just getting the idea and me working on it worked out so well. So I felt like when you come as an outsider, the one thing that I can give back is build other people with me, whether it is small businesses, whether it's new content creators. I feel like somebody gave me a chance and everybody deserves a chance. So if I see anybody who's really like a hustler and trying to build something from scratch, I love to support them. It's something that gives me joy. That's so sweet. So why do you think it's so important for all these youngsters to follow a career that is purposeful and that it gives them a sense of drive and not just a 9-to-6 job that they just select to pay the bills? Wow, I was just discussing this in the morning. When you start doing a job, it becomes a comfort space after a point because आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं होती जॉब में, आपका वक्त ही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, राइट? और बिजनेस में बहुत स्ट्रेस होता है, 1000 चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अपने बॉस होते हैं. So there are both the things have their own sides to it, but some people love to work, but some also get trapped in it because the pay gets better every year and you are like कि चलो यहीं सही हैं, कहाँ से शुरू करें. So that is also one thing. It's a conversation one has.
Would you like to start a business of your own, if I may ask you? Eventually, I think so. Yeah. Would you enjoy the job? Would I enjoy the job? Am I Do I enjoying the job or whatever work you do? Yeah, so mainly wanted to ask, so when these youngsters now that they graduate and they apply for jobs, what's more important, them choosing something that they're passionate about or something that pays well? You know, if they're at the crossroad of picking between two. That's a very good question. I see it as if you get to be in a job right after college, because somewhere you should work to get some experience, it gets easier and you understand your calling, but not get trapped in it कि हाँ ठीक है सिर्फ salary ही अच्छी है और learning नहीं है, because that's when you need to snap back. But I agree, and you have to give it. In India, a lot of people run their own houses, so आपको वो इनकम चाहिए होती है, रेगुलर इनकम, जबकि खुद के बिजनेस में या सिर्फ ड्रीम्स फॉलो करने में वो रेगुलर इनकम फ्लो नहीं आता है. बिजनेस में आता है, बट इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क and a lot of stress. So if you truly feel like it, you can do it, then 100% go for it. But even just 1%, because especially when you're so young, you do something and you give it your all and वो work नहीं होता, and that also traumatizes young kids a lot. So I would say first work, identify what is working for you, and then go for the kill, which is with starting your business. That's a fair point. And now with the trend, right, like people saying get into business, become an entrepreneur, start something of your own, that's where the money is. I think a lot of youngsters are getting influenced in that route, but it's not as easy as you guys make it seem, right? Like start a business, lead a business. What all goes behind the scenes? Tell us. A lot of sleepless nights, crying, chatting with ChatGPT. It all comes with when you start your own business. होते हैं, बहुत रोना होता है. Has ChatGPT become your therapist? 100%, क्योंकि ChatGPT हमेशा अवेलेबल है ना, और वापस मुझे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा होता ChatGPT, राइट? और दोस्त एडवाइस भी देने लग जाते हैं जो कि तुम तो ये क्यों नहीं कर लेती. ChatGPT, yes, I agree with you. It validates me instantly. But speaking about, yes, you get a lot of freedom when you have your own business, and I think being your own Malik and Malikin is something else. It gives you wings, but also it gives you sleepless nights, and बहुत stress होता है यार कभी कभी. आप मैं यहाँ मुझे मोटिवेट करने के लिए बुलाया था, मैं शायद डीमोटिवेट कर रही हूँ. मेरे को देखो 9 साल हो गए अब बिजनेस करते हुए. रोज मुझे लगता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो बिजनेस शुरू किया. किसने मुझे कहा था बिजनेस शुरू करने के लिए? Right? You have your own Airbnb in Goa. So what made you, like take on so many projects? So I'm ADHD, और मैं 4 चीज़ों में अपनी अटेंशन डाल सकती हूँ बहुत easily. So what happens with me is कि I get joy out of doing 4 things at once and seeing instant results. It gives me, like, it's my high. And so मेरा जो गोल है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, देखो मैं रतन टाटा जितना बड़ा बनना चाहती हूँ. मेरा सपना वो है. और अगर आप उन्हें देखें, उनका ट्रेजेक्ट्री देखें, उन्होंने क्या काम किया अपने पूरे जीवन में, वो शुरू हुआ, मतलब आप उन्हें सड़क पे भी देख रहे हैं, टाटा के ट्रक चल रहे हैं, ज़बान में स्वाद में भी वही है, नमक, हम उनकी बिजली भी इस्तेमाल करते हैं. तो जब उन्होंने खुद को लिमिट नहीं किया, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, बस मुझे उतना ही बड़ा एम्पायर बनाना है. तो ये शुरुआत है कि हॉस्पिटैलिटी भी करनी है, बिजनेस भी, जो समझ आ रहा है, जो मैं बेच सकती हूँ, जो मैं समझा सकती हूँ, जिसकी फीलिंग मैं खुद से आप तक ला सकती हूँ, वो सब मैं करूँगी. अगर कल को मुझे पानी बनाना है और बेचना है, मैं शायद वो भी करूँगी. अब खरीदेंगे नहीं आप, वो आपकी चॉइस है. So what's next in line for you? Have you thought of something, a project that you want to get into after everything is stabilized? It's not very inspiring. I want to have my own reality show, because I have a prediction that bigger stars are going to come from reality. And how times are changing always. अब ये बेवकूफ़ एडवाइस भी हो, या बेवकूफ़ थिंकिंग भी हो सकती है, बट मुझे अभी रोज़ आप उठते हो ना, एक नया आइडिया आता है. अभी आई एम वर्किंग मोर ऑन IPs. आई वॉन्ट टू मेक सर्टन IPs, बिकॉज माई ब्रांड इज सच अ कॉन्टेंट फर्स्ट. आपने मेरा कॉन्टेंट पहले देखा है, फिर मेरा प्रोडक्ट देखा है. सो I am developing a few more IPs, and
let's see where it goes. I love that. I love the sound. What do you have a name? Keeping up with Parul Gulati. अभी के लिए तो एक इंस्टा पेज है which is very embarrassing. आप लोग ये नाम रखेंगे नहीं. It's called Bichitas. मैंने उसे परसों ही बनाया है. Bichitas. Like fajitas. No, like Bichitas. Like bitchy girls. Oh. So it's one IP I'm building. Because normally आप लड़कियों को देखते हो तो आपको ये लगता है कि लड़कियाँ तो bitchy होंगी, वो तो झगड़े ही करती होंगी. तो मैं कहा चलो वही दिखा देते हैं. So I'm doing that on Insta first. And if it becomes big, it'll be maybe on Netflix you'll watch. I don't think they'll name it Bichitas, but whatever. Speaking of bitchy girls, now the rise of women CEOs, it's huge in the last couple of years, pan-India. So why do you think that is? Why are so many more women looking to get into businesses now, starting something of their own and really leading and killing it in their fields? Oh my God. So it goes back at least 20, 30 years ago when men were like, हमारी तो unfair advantage है, हम men हैं. और लड़कियों को प्रूव करना था. और उन्होंने लास्ट 10 साल में प्रूव करके दिखा दिया. आपका नायका लास्ट 10 साल में आया है. आपकी सारी बड़ी ब्रांड्स, बायोकॉन is the one, I'm sorry if I'm saying it wrong, Miss Majumdar's, because she's one of the self-made billionaires. Then your Falguni Nair is one of the self-made billionaires. हमारे इंडिया में सिर्फ apparently 3-4 ही self-made billionaires हैं. और ये इसलिए आ रहा है कि उन्हें करना था प्रूफ. और कहीं मुझे लगता है लड़कों ने थोड़ी बैक सीट ले ली कि हम तो लड़के हैं, मुझे मारना मत लड़कों प्लीज़ यहाँ से निकलने के बाद. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. बीइंग अ गर्ल, you have more to prove. You have to hustle hard. You have to do 10 things. You have to run your house. You have to put on a suit and go give a talk like this and build the business and burn the midnight oil. You have to. And the thing happened कि अगर 100 लड़कियाँ सबकी 100 hustle कर रही थी, 90 succeed हो गई. और वो हमारे सामने proof है. And I was seeing the list. There are so many women speakers today. Yeah. So that speaks for itself. Yeah. So let's hear it for the awesome Malikins. आदमी लोग मुझे मारना मत यहाँ से निकलने के बाद please. I love men. I really love men. But just women are better. We don't advocate for feminism that's anti-men. Of course. Yes. I mean, they need to exist Yeah. together to be who they are. Synergize. How proud are you of all the things that you've achieved? If you had to say something to your younger self, you know, a 20-year-old Parul who was really struggling and, I don't know, like confused about life, what would you tell her? How would you assure her? Oh my God. I would tell the little Parul that you will achieve everything and more that you ever wanted. I remember when I was 23, तभी निशहर नया ही शुरू हुआ था. I was reading this book called Magic. उसके अंदर I don't know कितने लोगों ने पढ़ी है book Magic. Okay, किसी ने भी नहीं पढ़ी. बड़ी cool book है, वो पढ़ना. It just teaches you how to be grateful. तो उसके अंदर आपको वो कहते हैं fake check होता है which you write to the universe. मुझे निशहर से सिर्फ 10 लाख रुपए कमाने थे उस उम्र में. सो मैं उस पारुल को कहना चाहूँगी तुम 10 लाख नहीं, तुम 100 करोड़ कमाओगी और छोटा मत सोचो. So goosebumps moment, honestly, I'm getting goosebumps right now. I love that. So yeah, aim for the stars. इतना बड़ा मांगो यूनिवर्स से. I'm telling you, आपको उससे करीब तो मिल ही जाता है. So I know मैं शुरुआत में कह रही थी बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है मुश्किल. लेकिन अगर आप बिलीव करते हो और आप चाहते हो ना कि आप 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हो, वो होगा. क्योंकि आप बिलीव करते हो खुद में और बहुत मेहनत लगती है और हार्ट ब्रेक्स होते हैं. Yeah, it's not just the I don't chase, I attract and just sit there. मेहनत तो करना ही पड़ेगा. बहुत. Thank you. That was so inspiring. Last question is, now being an influencer in India, सब संभव है? How is it like? Sorry? Being an influencer in India, how is it? Is it सब संभव है? What is this on line? I have to. Yeah, like is everything good? Everything great being an influencer in India? Like what's it like? सब संभव है. अगर आप करते हैं तो सब संभव है. हम देखते हैं कि कितने क्रिएटर्स हैं जिनके खुद के अब विंग्स हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं. और
I mean, अभी हमारा बिल भी पास हुआ है, which is about creators, which is great. So, influencer होना and content creator होना is what you're asking, कि उनके लिए सब संभव है. हाँ, उनका वक्त है ये. And लोग, I think they look up to them more. They want to. They're more relatable, क्योंकि वो कुछ नहीं थी और वो कुछ बने हैं आपकी नज़रों के सामने, तो आप उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, आप सोचते हैं और चाह भी रखते हैं कि हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, और बन रहे हैं लोग. कितने लोगों के ड्रीम्स थे. I think Prajakta Kohli was one of the person, Bhuvan Bam. They started so early, and that time people were like YouTubers, and then they're like, we need these people to headline our shows and start brands or be the face of our brands, which is so killer. It is killer. Now let's move on to the hair transformations that you wanted to do. Oh yes, I was enjoying the talk with you, Simran. I'm sorry I was a little scattered here and there, but I'm having so much fun chatting with you. Thank you. Same here. So Yes. you want to select? Can I call you here? Shall we have her sit here? Oh yes, please. Do you want to sit here? What do you guys think? She's going What's to your name? bangs, Zia. extensions? Zia. Yeah, Zia. Zia, have you colored your hair ever? It looks like virgin hair, very pretty. Okay, if I was to add highlights to your hair, how would you like it? How would I like it? Like, do you want to answer? Okay, I'll just put highlights in your hair and then we'll show it to you. Do you have your phone? No, no. It's okay, I'll show you on my phone. So those of you who don't know what is niche hair, I make human hair extensions, and I make every girl's dream come true with hair, whether it's hair loss, whether it's color, or whether it's length, volume, because that's something, yeah, girls need to take care of, and hair means confidence to girls. So let's try if I can do that for you. Simran after this? It looks really nice. Very cute. Thank you so much. Thank you so much. It looks really nice. It's yours. Thank you. Very nice to meet you. Same here. And it looks so natural. I love it. Look at her. You've made her into a diva. Yeah. I love these scouting sessions. I was just trying to match the hair color. Oh, okay. What's your name? My name is Abhija. Abhija, hi. So I'm going to quickly do a bun hairstyle for her. Sorry, can I turn you, please? Yeah, I'm just going to turn you a little. You can give it a count. Anybody, any girl, guy, they want to count and see how quickly a hairstyle is possible with this. Does it feel like tele-shopping, guys? So ये है मेरा donut scrunchie. आप count कर सकते हैं 1 से 10 में और उनके बाल बन जाएंगे.
आप ही खरीद सकते हैं nishay.com पे. इस पे ऑफर सिर्फ 10 मिनट तक लागू है. आप कॉल करिए. Does she get to keep this? Of course. मैम आप देख नहीं सकती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मालकिन ने आपके बाल बनाए? बहुत अच्छा. Like I'm not someone who experiments with my hair a lot, so yeah, Okay. it's like something new for me. But guess what? Not only one, but you get 2 hairstyles. She's going to get you another look, which again you can't see, so sorry. very nice. But let your friends see it. Guys, why don't you? But इतना ठंडा रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको जोरदार तालियां बजाइए पहले, so that she knows that she is looking spectacular. Are you happy? Are you happy? झूठ मत बोलो. I'm very happy with it. I'm like. You're getting to keep this. Thank you so much. So, be I honest, love like, it actually. Yeah. lovely. Do we have somebody else as well who can get it done? Okay, we'll do it with Simran as well. Thank you, ma'am. Thank you very much. You also carried this with us. She's gonna test it on you as well, Simran, since you have, had such a detailed conversation about hair. Let's do What are we doing? Colored highlights. And when are you launching a range for men? We already have. Just men don't read and listen, no? Really? Maybe you have not done enough reels. Maybe reach out to a creator, pay them. Maybe. अरे यार उसके लिए मुझे गंजे क्रिएटर चाहिए. गंजे क्रिएटर कैमरा पे नहीं आते ब्रो. Okay, then I don't want that. Thank you very much. I'm out. I don't want to attract that. Okay, so we are adding a quick highlight in your hair. We have somebody who is proud of his crown. Lovely. Thanks for being such a sport, man. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. See? मांगना चाहिए पारुल, मांगना चाहिए, सब मिलता है. हमारे पास मॉडल इन्फ्लुएंसर रेडी था. Ask and you'll receive. We'll connect you with him after this segment. Now what we are doing with her is something that you can explain. I'm adding highlights for her as well, and she'll get to see it. Okay, we'll have to do it quickly because we also have graphologists also who will decode your handwriting. And Simran, if you can hold this for us, and the magic begins. Again, you can cheer her up, guys. Love that. Do you like it, Simran? It's cute. I love it. I feel like an actor. I love it. All of us are actors. We are all acting to be happy, right? Talk about yourself, bro. I'm very happy in life. Okay, well, that was a lovely session. Now we'll also have a graphologist. Please come on the stage and have that reading for Parul. And I'll leave it to you, Simran. Go ahead. And we meet again. Do you have a mic? Yeah. That's a mic, right? Parul, sorry. You excited? I'm a little sure. nervous. Really? If you're gonna say the truth. Okay, so lots of things, okay? This is one sample, even though 4 lines, but one thing I can say is the people surrounding you have a gala time. Like, she's a pamperer, spoiler for the people who are super close to her. And even though on the outside we see a very independent and ambitious woman, inside she has a world of her own. I think the hardest thing for you is to explain to people what is going on inside. And if there's something you would want to invent, is that somebody could peek into your ideas and just put it out there. Because during the day, I don't know, more than 1,000, 10,000, your ideas are also very eccentric, very wild. And I agree. Dude, but you're it's a mind reader with like handwriting. How's that possible? And you know, if you're with her, it's like you can meet 10 people during one day. Yeah, I'm psychotic, guys. Not that way, but super spontaneous, super spontaneous. Split personality. Structure is something that doesn't align with you much. It's like, let's be spontaneous. And if there is an investor on board, oh my God, the best person to invest in, because it's a factory of ideas. Right? And excellent when it comes to working in emergency situations. Oh, I'm firefighting all the time. All the time. My God. And that is something like, as a message, I would also say that she does look very cheerful, but super hard on herself.
And there you can take it easy, no? Yeah, I should. Yes. So rest we can take it off stage. That's so much. So cool. Thank you so much. Whoever Thank you. hired her deserves a raise here, okay? Whoever that person is, clap for yourself. Thank you. See, I said she's a people's person. Lovely. Thank you very much, ladies. But a huge, huge round of applause for Parul Gulati for that very incredible activity. I'm sure hair extensions is going to be a blessing for all the girls, isn't it? And for the boys as well. Yeah, but there's no energy in the crowd, guys. We're about to tee off a break. We need some energy. And just to check the energy momentum here, can we have cheer from the people on my left? That's better. People on my right. The right Guys, side you is have to do clearly it one. better. Come on, louder. Guys, let's do it better. 3, 2, 1. Now you have to beat them. 3, 2, 1. They clearly win. They clearly win. But Arun, I have a question to ask our youngsters, the Gen Z crowd here. How fashionable do you think your hosts are looking today? Lovely. 10 on 10. Thank you, guys. I bought them. Thank you. आप सबको Paytm किया जाएगा. Thank you very much. But you know, of course, fashion is very important and बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे thoughts हैं वो हम fashion के ज़रिए express करें, and that is why we're shifting our focus to the next session, which is the business of fashion. Absolutely, and this is going to happen with NDTV's Chaudhary of Fashion is what we've been told to call him. Our very own in-house talent, a loud cheer for Mayank Chaudhary. And if you see us here, it's all because of Mayank, the way we are looking. If you have any complaints, if I don't look my best, the fault is Mayank. So can we have Mayank on stage for the next session? And you'll also see the bias that he has because of the lovely jacket he's wearing himself and what grey color he's given to me. So Absolutely. Great style is there. So we give it up for Mayank, who introduces his guest. NDTV YUVA, how are we doing? I want you guys to cheer for me. Come on, I'm wearing a gold suit in 40 degrees. You've got to do better than that. One more time. How are we doing? Fantastic. Okay, show of hands. How many of you here are Gen Zs? Okay, good, fantastic. Of course, we've been called out to be very problematic, outspoken, and canceling people in a second kind of generation, and I love that. Okay, our next session, this one, is something that I'm sure all of you will love, will resonate with, and I'm sure you will enjoy. It's on fashion, darling. All right, big round of applause for my panelists. We've got Param Sahib here. Param, come on up. He's a fashion designer, Ankita Jain, and Mariam Khatri. All right, a big round of applause. Let me quickly introduce you. Guys, take a seat. Ankita Jain, I mean, I have not gone through Instagram without seeing a celeb, a star kid, influencer who's not wearing your clothes. And what sexy designs do you make? Thank you. As we all should, as all women should. Absolutely. We've got Mariam Khatri. Mariam has revolutionized craft and what Indian traditional crafts mean. I mean, just look at that. Mariam, could you break your outfit for me, please? So I'm wearing repurposed denim banana laps. This is all block printed with placement printing, and I love this outfit. I also feel like denim is going to make a statement this season. Fantastic. Denim never goes out of style. Param, you're bold, you're maximalist, you're colorful. Tell me about this fabulous jacket that you're wearing. And guys, we can sit down. Yes. Yeah. Today I feel like I'm a bit not that colorful, but more subtle, but still crazy. This is one of my DIY jackets that I made from all the swatches that I had made back in my NIF days. I was in the college, and all these were swatches done for my surface development class. And for 10 years I've had this, and when I started this DIY creator journey, I was like, okay, let's make this into a jacket. Fantastic. Of course, you know, my first question to all of you would be, you know,
Social media has literally become like a runway today. And everybody has a smartphone, everybody is like an Insta model and a designer. You pick up things, you thrift things, you put it together. I mean, don't even get me started on those get ready with me videos because I've seen hundreds of them. Starting from you, Ankita, how do you use the power of social media for branding yourself and putting your designs out there? So for me, social media is everything. I started the brand on Instagram, and over the last 3 years, I think Instagram has just blown up, especially like you said, like Gen Z, everyone wants to make get ready with me's. And I think for every girl, apart from the event and the occasion, the outfit is the most important thing, the look. And why not show it? Why not share it with the world? Find people that resonate with you and your style and have a great community around. But what do you think about your designs has resonated with the Gen Z crowd? What is it? What's that secret spice here? To be honest, I think it's got nothing to do with the product or the design. I think it's everything to do with the feeling of when you wear a certain something and you feel a certain way and how that boosts your confidence. That's the key for me, and it has worked. I love dressing girls and girls love wearing me. Fantastic. Okay, Mariam, over to you. I'm not shying to ask any difficult questions here. We'll straight go there. You know, you've been working with crafts, Indian textiles, and I have to say block printing specifically, which we all love. Recently, a lot of global brands have used Indian crafts in their product, have sort of hiked up the prices in unimaginable manner. What's your take on that? Do you think they're getting it wrong? What's going on here? I think you're getting to the Bandhani controversy, if I'm not wrong. So I think Indian crafts are so profound, and it's okay for these crafts to be borrowed. But I'm going to start this with one thing. So I've done my master's from University of the Arts, London. The first thing that we learned before we submitted our first assignment was actually Harvard referencing and, putting bibliographies out there. So basically before we handed in our assignment, the non-negotiable was to cite your sources. So I feel like it's so important to take Indian crafts and borrow it as much, but give them the due credit. In the description of the Ralph Lauren Ralph Lauren skirt, the description read Bandhani tie and dye technique traditional. Okay, they mentioned traditional. How old? Where from? Kutch, Gujarat, Rajasthan, nothing was mentioned. No tribute to the Indian artisan or the soul of India was mentioned. So I feel like it's okay to borrow, but there's a thin line between borrowing and actually citing your credit. So I fully stand by craft persons and artisans, but I feel like they should be given enough due and enough credit too. For example, Dior had done the show in India, but they had given so much credit to the Chanakya school. So I think why not? It was a love letter to Indian crafts, and that's how it should be. Fabulous. But there's also, it's not a one-way street because we produce these crafts. We've grown up with it. As you said, Bandhani, Rajasthan, Gujarat, and India is so rich in craft. Right from east to west, north to south, we have something to offer. But are we doing enough in protecting our artisans, in protecting the craft that we produce? What's your take on that? I mean, so, we are doing our best in terms of the GI tags. We are doing a lot in terms of protecting the craft. But I think at the end of the day, it's also about ethical practices from the industry itself. You can protect it to a certain extent, but these designers, the new designers who are coming into the industry should be, more aware of what they are doing, where is it coming from, seeing the whole cycle instead of just quoting something and putting it out there. Fantastic. Okay, Param. Now, of course, it's hard to miss you as a designer, your clothing, and people who are familiar with Param's work can spot you instantly. Why do you think identity is so important in the business of fashion? It's very important because, we associate brands with certain image. So creating that whole imagery is very important. So for me, creating an imagery of being synonymous to colors. Aap color socho and they should think of me. They should think of my brand. They should think of my work. So that imagery of wild connection was very important. And it's very important for brands to register. आप हर एक brand को एक associate करते हो कि ये इस particular craft के लिए जाना जाता है. तो आप कुछ भी देख लो तो immediately your thought goes like अरे ये तो
like a very basic example of, "Arey, ye to kafi sabyasachi hai," or whatever it is. So that imagery, that whole visual storytelling is very important. And to add to your previous question of craft thing, India se chori karna has been there since forever, of West, and selling India se chori karke hame wo bechna is very, very old. Ye Kolhapuris and all these bandhnis are very new. I want to give an example which nobody talked about at that point because social media was not that booming at that point. Right. Connaught Place mein ek store hua karta tha, People Tree. Yeah. So People Tree used to make all these tie-dye clothes and very like पॉप ग्राफिक्स, कॉइन वाले सिक्के के 10 पैसे के, तो वैसे वो लोग कपड़े बनाया करते थे एंड द डिज़ाइन टीम वाज सेलिंग इट एंड पीपल हैज़ बीन देयर सिंस लाइक फॉर एवर, लाइक एन एज ओल्ड, जैसे वेंगर्स है, लाइक खानदानी शॉप इन सीपी, वेरी नीश. I think Gucci a few years back copied the motive from that People Tree and it was on runway, सबने post किया, nobody could like understand, किसी को मालूम नहीं था until like Sonam wore it on a magazine cover one day on Vogue maybe. They caught it from there and People Tree sued Gucci and it was like an off-the-court settlement and People Tree got a huge compensation and they said कि हमें इतना compensation दे दिया गया है that we don't need to work anywhere in our life. They have shut down the store, they have closed the brand, they have made so much money out of that controversy. So I mean protecting, Get of into course. Controversy, guys. Yes, and That's protecting how, yeah. and as Indian brands and like, see, karigars would not know how to get into the legalities of all that. But if an Indian brand is using crafts, at least they can make sure that they will get the right justice out of it or the compensation out of it. At least we amongst ourselves as Indian brands who want to take this craft forward, we can ensure that this is all like protected and copyrighted. Fabulous. Okay. Ankita, as I said, social media, anything out there, we are flooded with ideas and content. I'm sure all of you here have some idea that you want to capitalize, you want to put it out there. How does one stay original, especially in a field like fashion, where copying can happen, when you can pick up a motif? How do you guys, as designers, stay original? Okay, so I have a lot of rip-offs of my brand at this point. I see it all over social media, lower price point, cheaper quality, similar silhouettes. And I think for me, like one very important thing which is a fundamental for me is that whatever I'm doing has to be very authentic to the kind of style that I see my client wearing. It's got nothing to do with me really. It's to do with the consumer, right? Like what mindset they are in and how they want to be dressed. And how can I accommodate that in my design language, stay authentic to who I am, make them feel good, and still not be one of many rip-offs, right? Fantastic. So for me, it's got a lot to do with that. I think one of my major USPs, of course, is my silhouette. So I work very closely with the female figure and how I can contour it in different ways, how a woman just can feel sexy about herself. So for me, like silhouette is a major distinction. Brilliant. Mariam, how do you stay original? I mean, obviously, I think she said it very beautifully, being authentic, but we do something really cool, which is basically doing an Instagram call out for all these models that we do. And these are real students, real people, and we literally photo shoot them, and they're a part of our brand. And that's how I think the Gen Z has been relating to us. And we get DMs every day. They say, how can we be a part of the brand? How can we be a part of the shoot? Because we are what you are. So is this like an open call? People can reach out to her and be part of her 100%. fabulous photo shoots. Param, how do we stay original in fashion? See, we're living in the age of social media, जहाँ पे everything is so transparent. आप सांस भी लेते हो तो it's seen on social media. Celebrities are living on social media. There's so much access to it. So nobody wants like a cooked up story. किसी को ऐसे कुछ ऐसे वो नहीं चाहिए, like they're giving you out of the world story. So the more basic we think, the more basic in terms of, let's say, brands building and in terms of creating brands or clothes or whatever, the more basic problems we sort out to, let's say, human, like Indian bodies. Indian female bodies are so unique. We don't set into any small, medium, large, XL or US or UK style. We have our own body types and we have our own measurements. Like an Indian medium is going to be separate from a universal medium. So अगर हम ये basic problems को ही tap करेंगे, like how Parul had like a niche hair for Indian female, like who have hair problems and all that. So if we just go as basic as solving these problems as brands,
That way we can stay as original as we can. Beautiful. That's a very good idea. Okay, I want to do some quick rapid fire questions now. How many of you have seen here the movie Devil Wears Prada? Oh my God, yes. Okay, we've got few. And I'm sure you guys are excited for the next one. It's not a promotion for them. But I'd like to ask, you know, all three of you are entrepreneurs, have started your brands, you work with big teams. What do your assistants think about you? Ankita. I mean, I think I have a great relationship with my team. Of course, we have back and forths, but it's a chilled out environment. We work as a community. It's really nice. Nothing like Miranda Priestley at all. Okay. Mariam? Again, yeah, it's not that formal. Everybody's dressed super casually. That's the first thing. But I think if I say, I think it needs more intention. They understand it, what they need to do. I don't have to say anything else. Perfect. Param, who do you think is the most stylish Yuva star right now? I feel Ananya Pandey is really like killing with the fashion game. Okay. Do we agree? Okay, we've got some claps. That's going to be my answer as well. Okay, Yeah. so I'll twist it a little. Who do you think is the most stylish leader or politician we have right now? I'm not answering that question. Okay, Kangna is quite stylish. Kangna is quite stylish. Sorry, Okay. Kangna's got great style. Yeah. Kangna has got great style. What else? Okay, interesting, fine. Okay, Kill, Marry, Kill. Kiss, Marry, Kill. A game that we all play. Fashion edition. Crocs, dad jeans, oversized hoodies. Who do you kill? Who do you marry? Who do you kiss? Kill Crocs, marry oversized hoodies, and kiss dad jeans. Okay, what about you, Mariam? I mean, kill the Crocs. Okay. They're super ugly, honestly. Super comfy, but ugly. Marry the hoodie. And then hook up with the dad jeans. Yeah. Param, are we killing the Crocs? Yeah, no, I can't kill Crocs. I work with them a lot, so obviously. I think I'll not kill anyone. Yeah? Dad jeans, I would do like a hookup. And hoodie, I would do like marry, because I can marry in a hoodie, like be very comfortable and wear Crocs. We'll have a fight over the hoodie because all three of us are. Spoken like a true politician. Okay, final question. One fashion trend you just want to get rid of? I think, as Mariam put it, cultural appropriation. I think taking away things from the East, putting it into the West, and not giving credit, it really needs to stop. It needs to stop at the bigger leagues, right? Like if the bigger brands do it, it's just a ripple effect. So I think that is one thing that really needs to be put to an end. All right. Well, thank you so much, all of you. Huge round of applause for Ankita Jain, Mariam Khatri, and Param Sahib. I would just like, I know there are a lot of aspiring fashion people here, be it designers, content creators, influencers, stylists. Quick suggestion, advice from all three of you for aspiring fashion people out there. Let's start with you. I think a key point for me, which I would like to give as advice, is that just keep not just working hard, but also like keep having a good network, start talking to people, stylists, photographers, models, have a good kind of community around, because creativity is not limited to who you are, but who you're surrounded with. So that's one thing that's always kept me going. Mariam, quick answer. I think starting something is easy, keeping at it is even harder. So don't just start up and keep at it. Being consistent. Be very consistent. I would say don't come to fashion just by looking at all the glam and the starry and the whole glamorous side of it. Know that that is just the surface of it. There is 10 feet deep what's inside it, and that's the real side of it. So if you're ready to take it all every day as it comes, just embrace it. Fantastic. Round of applause for Ankita Jain, Mariam Khatri, and Param Sahib. Thank you so much, guys. Thank you. And you've been a lovely audience. Cheers for you as well. Thank you. Starving. Go get your food. Well, he's done our job. He's done our job. Thank you very much, but man. Thank you, Thanks for Mike, making for our that. job easier. I must say, all of you ate
but we haven't eaten, so we must now head for lunch. But please be back on time as there are many more exciting sessions lined up. You will see a Bollywood actress as well, some Yes. athletes, so a lot of excitement. Absolutely, and you've been a phenomenal audience. Give a round of applause for yourselves, ladies and gentlemen, and come back after refueling yourself. Lots more lined Loving up. the SFXs. Thank you.
स्माइल से भी ओवर एक्टिंग करा है। खुल गया मतलब तन मन सब साफ हो गया। मैं फैन हूँ सर आपका।
छोड़ दी थी कि मैं
We've eaten, we are energized, so we'll resume NDTV YUVA 2026. But before that, give a huge round of applause for our lovely band as well. They've been keeping the energy high, and of course, give a huge round of applause for yourself as well, guys. I hope you all are recharged, refueled, and ready to dive into the second half of NDTV YUVA 2026. The energy is still high, palpable, because we've got an exciting lineup waiting for you. And for the next session, it is all about skills, degrees, employability. What should education deliver? And this panel is being done by my lovely colleague, Rahesha Sehgal. Over to you, Rahesha. Thanks, Arun. I know since the start, yeah, we can have that going on. Thanks. Since the start of NDTV YUVA 2026, we've had fashion stylists, we've had business entrepreneurs, young leaders. But this session perhaps talks about skill, employability, and career options. I would now take this moment to invite on stage our panelists. Let's have a round of applause for CA Arpit Kabra, Central Council member and Chairman of Career Counseling Committee and Campus Placement Directorate of ICAI. A round of applause for Mr. Kabra, please. We also have with us Anil Somani, co-founder and Executive Chairman, Postima Business School, and Dr. Raj Kumar Hota, Dean and Professor, SOA Dean, Tube University. Gentlemen, please have a seat. I don't know this. Sorry. All right, I know we've had interactive sessions before the lunch break, and I want all of you to also interact with us and with our esteemed panelists here today. I have a question to ask, and I want all of you to raise your hands. How many of you agree that the degree that you're pursuing right now will land you in your dream job or any kind of a job? Okay, we have very few hands. No more. And is there pressure from your house that you need to score well, or are your parents giving you free way to do what you like? Free way. So the youth is changing, but Mr. Kabra, I want to first start with you. The Indian education system is often criticized, saying that the kids, the Gen Z, the students are not well prepared to land any kind of a career or any practical functionality job. What perhaps are some failures that you see in education system today? Hello everyone, good afternoon, and thanks NDTV for having us here. I'm from the Institute of Chartered Accountants of India, and I firmly believe to the question that you asked that, are the Gen Zs or are the youngsters geared up to decide and understand what they want to do? I'm sure yes. They've got it sorted, they've got it clarified, and they're well informed because of a lot of solutions which is there available on their fingertips. To the question that you've asked on governance, I'm a chartered accountant, and governance comes naturally to me. And the education sector that you've talked about, if I were to answer this question, I would tell you 3 parameters, 3 Ps: power, performance, and people. All right. If you look at these 3, for any sector, I would say, this education sector, of course, it's a 140 crore population. Yes. It's a huge country. Education has always been one of those difficult aspects that we've not been able to maneuver yet. The reasons I believe is, you see at the central level, you see at the state level, you see at the rural level, you see at the local level, there are so many bodies. None of these bodies talk to each other. So Right. for example, these education institutes are there, state boards are there, NCRT, UGC, AICT, and so on and so forth. So organizations have been made, but somehow they don't synergize, they don't talk to each other, and perhaps there is a huge vacuum. That's Right. power, that's performance. People may, teachers, who want to really become a teacher today? We are staring, unfortunately, this country is blessed with the best asset that no one in the world has, that is a young population. But unfortunately, there is no one to train them. You must have seen those ads or memes on, when a judge is sitting, when a bureaucrat is sitting, when an engineer is sitting, when a doctor is sitting, and the last a teacher is sitting. Who's important amongst all of them? I mean, the first one have been created by a teacher. Right.
So the teacher is the most important. And actually the fact is, we are staring at a huge vacuum of qualified people to become teachers. And the reason is performance. There is no incentives for performance. Today, only the people, so, we say in chartered accountancy, there are two kind of things. One is किताब पढ़ के और दूसरा है पैर पढ़ के. Same way in the teachers, एक किताब पढ़ के आता है और एक पैर पढ़ के आता है. Right. Unfortunately, the incentives are for all those who are जो second category में है, first category में कोई नहीं है. And I believe, personally, if you were to ask me, just as judges in this country are given privileges, protection, incentives, I think teachers also should get that. They need this. Right, They Mr. are the ones, I'll just quickly wrap up. They are the ones who are actually shaping up the country, the youth and the power of this country. If they are not done, it's difficult. And the third one, last, is power. Most of the people who are getting education, they are powerless. The poor people or students, whatever is coming to them, they have to accept it. They can't raise a voice. There is no feedback mechanism. There is no mechanism wherein there will be action that will be taken. And so therefore governance is unfortunately very, very poor in this brilliant education sector of this great nation, India. But I think, everything is changing. Right. I hope even this will change. Right, absolutely. Can we have a round of applause for Mr. Kabra for sharing his thoughts with us? And I want to take a quick question from the audience, after which I'll go across to Mr. Anil Somani. Do you think that skills are more important than marks? Or do you think that marks will perhaps lead you to your dream job? People who agree with the first school of thought can raise your hands, that skills are more important than marks. All right, what about the second school of thought, which says that you need to score marks, get into a top B school, and then you land a dream job? Just one hand. Okay, so I think both the sides are equal. We'll take that question to Mr. Anil Somani. Parents these days are demanding marks, skills, and career assurance. It's perhaps a mix of too many factors. Your thoughts on it? So it's very difficult to give one straight answer to your question, because तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं. और पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कहते कुछ हैं और उनके अंदर कुछ और होता है. The fact is that when a kid is sent to a school, they definitely look for marks, marks and marks. The education system in India is actually outcome driven. So every parent is looking for outcomes, risk mitigation by the education. And if we divide the education career into school, undergraduate and postgraduate level, so then you'll find that at schools, marks become very, very important. When you are in undergraduate level, then your career, your employability becomes important. And when you are in postgraduate, and especially when I'm talking of B school, MBA careers, ROI, which is a good institute, which gives you a best placement, etc., these become more important than education or anything else. So going forward, at every level, the outcome, risk mitigation is different, and all three are equally important. Right, but one tip if you want to give to all the young students here, what would that be? What should they be looking at? So basically, let me share this, and I do a lot of career counseling, and there was a time when the career was chosen, the student would say, all right, जो मेरे father ने किया, जो मेरे घर में है, उन्होंने कहा हम वही करेंगे. But then today, the maxim is different. Please follow your passion, because that's very, very important. There are several avenues open for you. But then remember, always view how much room is there at the top. Everyone wants to be a film star, but you can't be, because there isn't enough room at the top. So you must view how much room is there at the top, and whatever career that you want to decide, whichever institution you want to go, must see that what your risk is minimized, your career options are assured. Right, absolute round of applause for him for giving us that a very inspirational statement. Like people say that if you follow your passion, you will end up being extremely successful. I want to come to you, Dr. Hota. Should higher education prioritize research excellence or job readiness, or both? See, first of all, having spent a significant number of years in academic and scientific research, I see education from two lenses.
Number one is knowledge. Number is test the real world values. And the real world value, it doesn't come subject-wise, but situation-wise. Now coming to your point, research, see, as discussed earlier, academics degree, okay, this is only helpful for getting in any company or for any student to get shortlisted. It is the skills that is more important. Okay. So unless you have got the required skills, it is very difficult to sustain, and also adaptability is the most important factor. Now, coming to research, see what research, I also did research in CSIR. Research actually that builds curiosity, research builds critical thinking, and research builds innovation. And these three are the skills actually industry needs. If you go for the traditional theoretical research, it lacks charm. But if it is industry link, if it is application driven, if it is innovation focused, then the employability comes. Dr. Lata, I also want to ask you that when I was in college, I was told that you should do lots of internships. I want to ask this to the youngsters here. Do you guys do internships? Are you guys in college? How many internships that do? So we have very few hands of students. Okay, we have a lot. So this just signifies that people are moving towards a lot of internships. Yes, during college. I also want to highlight one point. Now, upskilling is the need of the hour. Because I have seen the students since last 30 years. There was a time when the companies used to look at the communication skill and the aptitude part. Then comes the coding part. I'm telling about because a lot of engineering students must be there. Now there comes the coding part. Now the companies are looking at the out of the big which extra skills what you have. And that is the parameter for the selection. Because jobs are there, plenty jobs are there, but the student need to be skilled. Just getting into a university for the sake of getting a job will not help. The most important is that academic growth is there, should be there. At the same time, skill-based work should be there, and intellectual growth also should be there. That helps for any student to get a job. Right, let's also take some thoughts from Mr. Kabra on internships and how important it is for students to perhaps lead to some kind of career assurance. See, as a chartered accountant and from ICI, one thing that comes very, very easily to us is internship. The new education policy 2026, they've been talking about this, stressing on the importance of internships. Let me tell you, ICI from almost like the time it has incepted, from the time of its inception, has only focused on no world education, only internship. 3 years and now 2 years. And this is something that when you ask the question on skills versus degree, both are not negotiable. Okay. You need to have that degree and you need to have a skills also. And therefore, internships is absolutely mandatory. You need to actually go on the ground, understand, and then probably perform, and then you can, demonstrate that, yes, I know this. Theoretically, everyone is studying, everyone is reading the same stuff. Everywhere, there's the same syllabus. But what differentiates is an internship program. People may laugh at you as a cheap labor, bonded labor, this, that, whatnot, but understand, it's a part of your learning curve. It's never, you cannot compromise on that. And you cannot even buy that by whatever money that you get as a salary, because if you need to go from say a level X to X plus 5, you will need that experience. Right, a round of applause for Mr. Kabra for that thought. And I want to take one last question with the audience, and just raise your hands if you agree. Is education keeping pace with the real world? Is your education keeping pace with the real world, which will perhaps help you land your dream job? How many yes? None. How many no? So all hands are raised. That's exactly what we're trying to tell you in this session, that you perhaps need to be out of the box, if I may. I've been asked to wrap up this session, but I'm going to take quick one-word questions. I need one-word answers from all of you. Starting with you, Mr. Kabra. One skill every student should graduate with. One skill. One skill? Skill, yes. My God. You said one-word answer. How do I answer that? But your adaptability. You should be able to adapt to any situation, everything that comes in. And I think to all of them, I may offend them, but if their education is not keeping pace with the changes, I think they are on a wrong direction. It is changing, it is there, but I think they are not aware. Every organization, everyone, it's inbuilt. Every education pattern is inbuilt
to dynamically change, because without that, there's no survival, absolutely no survival. Right, Mr. Somani, degree or skills? So definitely. One word, no explanation. Degree or skills? No, he just said they are not exclusive. Huh? Both are both. So anyways, in today's world, skills are definitely more important. All right. My last question to you, Dr. Hota. Would you hire dropout with skills or a topper with no skills? Dropout with skills. A huge round of applause and thank you for being such an engaging audience. I now hand over the mic to my co-host, Arun. Yes, Arun, please come on the stage, and can we also please have a round of applause for our panelists being so engaging here with us. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Thank you. Thanks a lot. And now we move on to our next session, and that is going to be about stories. All of us love stories. We are in the age of social media, and what sells online is the story. If a brand has to sell themselves, if the brand has to have a good positioning, all they need is a good story. So in a world which is always connected, always scrolling, and rarely switched off, this conversation dives into what it really means to live, create, and stay relevant in digital age. For our next panel, please welcome Riya Chopra, writer and best-selling author of her debut book, Never Logged Out. Also welcome Ehsan Awazir. He's an actor, writer, and digital creator. And you've 100% seen him on Instagram in his conversation with NDTV's Vedika Sood. Can we have all of them on stage? Have a great session. Okay, the idea now is to defy gravity. You've had a hearty meal and your dessert has reached the sweet spot. So defy gravity, no slouching, sitting up and listening to us, because I promise you this is going to be a riveting session, because it talks about how we're cued in when it comes to content creation and being online, and how our phones to a certain extent also do rule our lives, if I'm not mistaken. So just introducing our guests today. You've already been introduced to Riya and to Ehsan Wazir, who are with us. Well, you know, when we talk about soft power, it doesn't announce itself. It works quietly, shaping how societies think, what they value, and how they see themselves. And at the heart of that influence are stories. Stories that travel faster than borders, perhaps outlast headlines, and often define a generation more than policy ever can. So Riya and Ehsan, my first question is, in this world of content creation, in this world of us holding our phones and watching content online, as we are even now, are we reading, Riya? We definitely are. I mean, how much? Statistics do show that over the last few years, young people are gravitating towards reading. I think specifically in the pandemic, when a lot of people were indoors and we were overdosed with the amount of time that we were spending online, doom scrolling had become a thing, people started gravitating back towards reading. And there's a certain timelessness and a certain concentration and mental activity that takes place when you're reading instead of scrolling. So there's definitely a cohort of young people, and a large cohort of young people that are. There are obviously so many ways our attention is being pulled apart right now and pulled to our screen, so you have to fight against it. But I think with effort and with a little bit of diligence, young people can find their way back to reading if they want to. I think that's the takeaway. Young people can find their way back to reading. How many of us read here on a regular basis? Let's be honest. And what are we reading also is going to be my question. What are you reading? Okay, she's talking about studying her case costs. Case laws, okay, all right. No, I'm talking about apart from academics, who are avid readers in this room right now? I think that's a worry in itself, isn't it, Riya, that we don't have regular readers anymore. Is it because, like you said, we're being pulled apart? Online has, you know, a stipulated time within which they give you what you want in terms of instant gratification. And then I'm going to come to you, Ehsan, because you're the man to talk to about this.
I think there are two things. Firstly, reading for leisure isn't really something that Indian education systems tend to encourage a lot. There is a push towards educational reading, which is books that are your course books. And outside of that, maybe you read a little bit of history, a lot of non-fiction, etc. But do we really encourage young people to seek out stories that are, say, fantasy, magic, entirely fiction, romance, the lighter things of life, but also slice of life in the sense of drama, mystery, stuff like that? I think there's a gap there. The second thing is, what kinds of books end up getting published? And that's a question that I try to talk about in my book, Never Logged Out, as well, where I say that young people do want to read narratives about themselves. They also want to see narratives about themselves. The problem is also that you don't have a lot of genuine young stories being depicted. You instead have more stereotypical narratives of young people, even in books, even in films. Look at all the depictions of influencer culture in Bollywood movies today. None of them is very realistic, right? It's a caricature of what it is. I think young people want sympathetic, understanding, empathetic portrayals of themselves, and be that in books or be that online, I think that would encourage them to immerse themselves in storytelling more. Now I'm going to bring in Essen, because you're on the other end of the spectrum. We have a writer here, and obviously we're going to talk about visibility and how important visibility is when it comes to your work and to publishing your work. But Essen, is there a moment in life where you can switch off? Because everyone's always on their phones. You have to create content for them. How difficult is it? And how much do you have to think about it in terms of producing that content at a very fast pace for an audience that consumes it even faster? Yeah, so I think there is a moment when you switch it off, and that moment is when you are in the moment of creating. Like with me, when I sit to write, when I think of something, when I think of contemplating a feeling to a very larger audience, what you call content, an art piece for me, I think that's when you switch off and really sit with your thoughts and understand what you actually want to put out. How will people relate to it? How is my generation going to look for themselves in that piece? So that's when you can switch off. Have you cracked that formula? You think you have? What is the formula? I think it's just being honest and being yourself. I think it's a very, मैं बहुत छोटी बात बोल दूँगा कि be yourself, but it takes a while to figure out who are you and who is your jungle and who are your people. They will relate to you, they'll find the mirror in you, and eventually you find your home. But you're talking about authenticity, right? Yeah. You're saying be honest. But do the people in this room or outside this room, do they want authenticity or simply want content that feels familiar? I think there exists the different levels. There is everyone out there. For example, I would like to answer the previous question of you about the reading. So the reading part of our generation, we might not be reading book as much, but there are so many platform pages. Like for instance, Ria, she gives a lot of content out. She asks people to read this, read that. So I think there is a very vast audience for that too. And ये भी है कि बहुत लोग time भी waste कर रहे हैं. You can't just put a black and white border on that. I just want to jump in and add to that. What Essen is saying is 100% true. I think instead of the medium of whether young people are consuming online or engaging offline or what they are doing, I think what they're engaging with becomes a lot more important, because he makes 3-minute long reels that are also vertical content that have so much thought, so much effort put into the writing and the storytelling. It's not the same as me watching the same minutes of, AI generated fruits are fighting, which is all that's coming over my feed these days. So I think what you engage with is what becomes important instead of the medium, which is also important, I think, but less so than the quality of the narrative. But I think the challenge also lies in being a writer. When you're writing purely for people to obviously pick up that book and read it and consume what you've written in it, Ria, you have another hurdle to cross then, which is visibility. Yeah. Isn't that a challenge? Being a writer, then going online to create content, to say, hey, this is my book, this is what I want to, send out this message through the book. So you have another hurdle to cross. It's not only about writing a book, it's also about making sure that there's visibility for your book today, which wasn't there perhaps 10 years back. 100%. I think there's a pressure on artists of all kinds to also now be marketers, salespersons, PR persons of their own work, because the understanding is that this is the only way to draw people towards your writing,
which is the audience and the readership that you can gather. I still feel that I am relatively lucky on that one because I am a digital native myself. So I at least know how to handle the social media side of things. I was doing a book tour earlier this year where I was at a lot of the bigger literature festivals across India. And I had a lot of older authors coming up to me and being like, "Acha, hum start kaise kare? Hamare publishers hame kehte hain reels banane ko." And there are now 40, 50-year-old authors who have to contend with that. Like, you have to meet your audience where you're at. And right now they're on their phones, right? So you have to meet them there. So I think it will take some effort for artists to also figure out how to navigate that space. I think there is still a way to write a very good book and not create content around it, and it will find its readers. I think the online space makes it easier for you to find your readers. You know, I think there's content creation, but there's something driving content as well, which is algorithms. Yeah. Have you cracked that code yet? Or is that something which is ever elusive? So there are some tips to it कि keep the hook this, keep the hook that, ये करो वो करो. There are some tips that you can see on the pages कि जो आपको एक manual पकड़ा सकते हैं. But I think it's always about what you put into it. What कि आपने जो emotion, जो feeling, जो आप बात कहना चाहते हो, was that important? Because I may attract a number of people, millions of people by using the algorithm, but if it was not good enough, they will never come back. They will never watch me again because That's a lot of pressure on you. I think internet is not a pressure, like for the visibility part also. Like I myself, I think would have never become a writer, would have sold any number of books if I was not on internet. मुझे लगता है internet more than pressure, it's an opportunity. I live in Mumbai now. I see a lot of actors complaining, oh, the movies are bad, nobody's casting us. I am saying internet is the place, make your own movie. Just do it. So, you can use it as a tool, but शुरू में उससे डर लगता है कि I'm afraid of what should I do, what should I not do. But when you jump and you know how to swim. You know, Gen Z has grown up on social media, unlike a lot of other people in this room. So I want to understand from you, when it comes to distractions, is Gen Z getting distracted easily? Is focusing a problem given that their go-to is social media? There is documented research that shows that attention spans of young people are shortening over time. I think the latest one says that it's at 3 seconds or something, which is also why you have this thing of put the hook of the reel between the first 3 seconds, वरना लोग scroll कर देंगे क्योंकि वो सिर्फ उतने time का ही देखते हैं. So I feel you really see that happen online, and that of course furthers the cycle, right? The shorter the hook, the shorter your attention span, it gets lower over time. So that is there. But young people are also people whose neuroplasticity is still active, which means that your neurons can rewire themselves if you immerse yourself back into longer attention-taking situations if you try to concentrate. So once again, I will say, like, it's possible that for a group of people, your attention spans are like fried, but there is always a way to come back and retrain yourself. It's not, I feel like we tend to pass these generational statements कि young लोगों का तो attention span खत्म ही हो गया. There is नहीं हुआ है. There's always a way back, and there are a large group of people जिनका नहीं ही हुआ है, who are resisting the impulses that the phones are pushing. It's important to have this conversation, but to also not ignore that larger group as well. You know, I started with a larger picture here because I wanted to come to the headline of this discussion, which I hopefully have led to, which is virality essence the new validation? For me personally, sometimes yes, but I'll tell you a little story. So I made a film 2 years back, 7 minutes film. Let's talk about attention span also. तो कुछ 7 मिनट की फिल्म मैंने YouTube पर डाली, and it was a German war film. I lost a lot of weight. And 2 दिन पहले I get this idea कि why should I not post this on Instagram? Because मुझे लगा कि this won't work on Instagram. But I'll tell you honestly, when I posted on Instagram, 7 minutes of video, I would have never thought in my life. It has been doing really well. And back then when I uploaded it on YouTube, not a lot of number of people have watched it, but now when Instagram pe I'm getting so much praise and they're validating it. So I think to a point I also can't draw the barrier ke views does not equal to good piece of content or vice versa. So does something have to perform well for you to think it's successful?
now at this age, I think it's been 7, 8 years. I just know sometimes why did something did not work, what was lacking in it, or was it the right time or wrong time. But now I just know it was good. It did not work. That does not mean I made something bad. Ria, are you insulated from that pressure as a writer? I know Essen writes as well, but we're talking to him more about the virality with the content creation online. But as a writer, do you feel insulated from that pressure? I try to be, but there is also that pressure to market your work, and I do create content once in a while around my writing. So for that to hit its numbers so that people come to my profile and learn about my book and are able to read that as well. So I see my social media as a pipeline. So pipeline में भी कुछ आना ही चाहिए ताकि something trickles out of the end. So for me, the numbers sometimes play, a role in the decisions that I make or just how validated I feel. I do think I know when I make something good, and then even if it does not perform well in terms of numbers, I feel like अपनी satisfaction हो जाती है कि हमें पता है. There are a lot of underrated books and underrated writers that I like who have like some 1,000 followers and no posts, and yet I like their work. So I know there are people like that who also exist. So I try to. People who are reticent when it comes to being 100%, online. 100%. So I try to detach but myself. But they lose out as well, Ria, don't they? I think there is, if you're not visible, then the amount of people who find your work are fewer, and you can ignore the fact that social media as a tool exists to make your work visible, but I feel like there's a balance you can strike in seeing it as just a pathway to get readers. All right, we've spoken about visibility, we've spoken about virality, we've spoken about validation. I want to understand from both of you, and Essen, you can start here. Have you ever held back a story wondering if it'll perform well? No, I have never. I think I have always. But is that a thought at the back of your mind that ये हो सकता है अगर मैं ये story डालूं online और नहीं चली तो मेरा अगला story चलेगा कि नहीं? I'll tell you just one small thing. Some things you do for your kitchen, some things you do for your art, and then I decide कि if I'm willing to post it and I know somehow कि शायद ये अच्छा काम ना करे, तो I'll make peace with it before posting it. कि I have made my peace. अगर if it doesn't work well, अगर 10 लोगों ने भी देखी, I will be okay with it. I will not beat myself up over it. And it's for me. It's because I come from a very small town. I started it all for myself. Now I have this clan. So at the end of the day, I just sometimes do things for myself, not for the views, not for the audience. What about you, Ria? I think for me, it's more of a question of medium. Do I want to say something online but I have to put it in like 90 seconds or 180 seconds and then just say it? Or do I save it for a longer form essay or a book in which I have this space and time to do justice to that story? So I think that is how I evaluate my decisions, not so much the views. When I have something to say, I want to say it. It is just the question of medium. So tell me this, are we losing the patience to sit with a complex story? Every movie, every content that we talk about does not have to be simple. It can be a bit complicated. Are we ready to give it that time, that bandwidth to absorb it? Or do we want to just see something that's fun and say, okay, I've had a tough day, I want to unwind. I don't want to get into something complicated when it comes to content. The hard work is the same or more perhaps. But are we ready as Gen Z, as a young audience, to absorb that, to insulate it? I think you just need to look at the performance of movies like Project Hail Mary in theatres that I hope people here have watched, or even the way how young people talk about, say, Christopher Nolan films, which are one of the most complex, very science-heavy things that you find, but they like them because you can see the effort that goes into telling a good story, and if it is a good story, you will want to immerse yourself in it. I think the onus also lies on the storytellers and the creators to make those good pieces of work that get people to their stories. Essence? Yeah, Gen Zs have become very selective. If you don't tell a good story, they won't listen to it. That's what happened. Because for a very long time, cinema was laying back. Now it has come back, so we are watching it. You know, stories may not always make headlines, but they shape the way we think, feel, connect. Some years back, someone told me, the remote control is in your hand. You have to select what you watch. So I think at the end of it, it lies with us. But this is very intense as well as a discussion, so I want to end this on a lighter note. We have a room full of very young people out here. My understanding of Gen Z lingo ends at 6-7, Riz and Sus. That's it. Now I'm going to hand it over to the two of you. I want maybe 5 words each. You reach out to them and I want to understand from them if they know what it means. So let's start with you, Essen.
Okay, I have this word. And can we have mics in the audience if we already have them there so that some of them can respond? Essen, go ahead. Finsta. How many of you know Finsta? Finsta. Oh, Arun. No, we aren't asking Arun. No in-house responses. Anyone here? Yeah, you can just yell it out. Yeah, just yell it out. We won't wait for a mic. Anybody? She answered. Who did? We have a Chitrangada. hand here. We should ask Chitrangada one as well. She's already covering her face there. It's fake Insta. Yeah, it's fake. Oh, she knows. She's saying it's fake Insta. Guys, Yeah. get with it. Wake up, audience. Come on. All right, Ria, you next. Okay, I'll go with like a gesture one. I love doing this. Do you guys know what? Clock it. Clock it. Yeah, I love clock it. All right, well done. Breadcrumbing. I think ये तो पता होगा यार. Please. Huh? Yeah, dropping subtle hints. Well done. Yeah. We're waking the audience up a bit with this. Come on. Okay, I like saying unk. Unk. Yeah, I used to think it was uncle. Yeah, both. Recently I learned it's Both uncle. means the same. Yeah, Uncle okay. is. I think uncle yeah. is also uncool only. So it's like, How sad is that? I say this word a lot. Mid. Mid. Yeah, mid. Average. Yes. Okay. Yes. These are easy. Some complicated ones. okay. Okay. I like let her cook. Let him cook. Yeah, make them talk. Yeah, let them I like cook. how the people out here who are not from Gen Z are really tuned in. They're really listening to They're this so that learning. they can go home and say, okay, these are the words I picked up today, the lingo, the parlance of Gen Yeah. Z. There's this word. Snatched. You're. Perfect. Yeah, it goes for the outfit. Okay, you look How snatched. does snatch mean perfect? It does. Please explain. It's a vibe. Like you have to be like. I like Everything is a vibe, guys. Yeah, But please another explain word for it. snatch Yeah, means vibe. perfect. Okay, the last one with you, Okay, Ria. aura farming. I think aura farming. We all know that. I've heard it too. All right. On that very, very positive note, we're going to end this session. Thank you so much, Ria and Essen. It's been a pleasure having you here. And I just hope at some point we balance reading with content creation, content visibility, and content consumption. Thank you so much, audience, and thank you for being with us here. Lovely. Thank you very much. Thanks, Vedika. Thank you. Now, our next session is about an actor's journey, an artist who's defined elegance and effortless screen magnetism. Absolutely, Arun. She is someone who's done it all in her own terms. From striking debut in Hazaro Khwaishein Aisi, we've given you that big hint, to her latest movie, Matrabhumi. She has honed her craft at each step. Please welcome with a round of applause Chitrangada Singh in our next session, Hazaro Khwaishein Aisi, in conversation with NDTV's Meenakshi Kandwal. Hi everyone. I have one for you. Who are the ones who are saying the Gen Z thing just before me? So there's another one, somebody asked me that you are coffee. Can anyone guess what that means? I almost thought they were talking about my skin color, but it's not. Sorry? Intoxicating, somebody said. So Chetna. That's the one, yeah. If you're very like intoxicating or something, it's called your coffee. So I said, why am I not vodka? No, but thank you so much. Sorry, I just took over. So I think mood is set, right? तो फिर थोड़ा तालियां बजाइए जरा, थोड़ा सा एनर्जी इन्फ्यूज करिए. तो चित्रांगदा, आज जब आप मेरे सामने यहाँ पर बैठी हैं, मेरे सामने इस वक्त हजारों ख्वाहिशें ऐसी की गीता भी मुझे दिखाई दे रही हैं, साहब बीवी गैंगस्टर की माधवी भी दिखाई दे रही हैं, इनकार की माया भी दिखाई दे रही हैं, और जिनके भीतर से ये सारे कैरेक्टर्स निकले वो चित्रांगदा मेरे सामने हैं, जिनका ग्रेस, इंटेंसिटी, गहराई के लिए हम आपको जानते हैं. और आज आपको पर्दे से अलग यहाँ रियल स्टेज पर लाइव देखना, आई एम श्योर
जितने हमारी ऑडियंस भी इस वक्त लाइव हमारे साथ बैठी है और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एनडीटीवी में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। एक्साइटेड हैं आप सारे लोग? तालियों के साथ मुझे बताइए कितने एक्साइटेड हैं। नाइस। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे दिल्ली से कितने सारे लोग हैं? रेज योर हैंड्स। क्वाइट अ क्राउड है। नोएडा से? मेरठ से? मेरठ उत्तर प्रदेश। आहा, इसीलिए सवाल पूछा गया था। ओके, लास्ट वन इन द रो ऑल्सो। और मुंबई से कितने लोग हैं? द वन इन द लास्ट रो। तो इन 3 शहरों के नाम मैंने क्यों लिए? क्योंकि दिल्ली जहां हम बैठे हैं, मेरठ जहां से चित्रांगदा ने अपनी जर्नी शुरू की लाइफ के अर्ली डेज, और वहां से दिल्ली में इरविन कॉलेज से पढ़ाई एंड देन मुंबई तक का सफ़र, और फिर वहाँ से इंटरनेशनल दुनिया तक की धमक। तो ये सब कुछ जब एक छोटे शहर से निकलकर आप बड़ी दुनिया में अपनी बड़ी जगह बनाते हैं, तो नाम बनता है चित्रांगदा सिंह का। चित्रांगदा, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करते हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरठ में वो जो एक प्यारी सी लड़की थी जो आंखों में बहुत सारे सपने लेकर सोफियाज में पढ़ने जाती थी, उस समय उसने सोचा था उसे एक्ट्रेस बनना है, या कुछ और था दिमाग में? बिल्कुल भी नहीं, और बहुत सारे सपने थे ही नहीं। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई लुक बैक कि मेरे से ज़्यादा अनएम्बिशियस शायद कोई लड़की होगी। मैंने सच में, आई एम टेलिंग यू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं दिल्ली कॉलेज करने भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन। मैं और मेरा एक बड़ा भाई है एंड ही इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड। तो होता है ना, एक आप और ज़्यादा सहम जाते हो, आप और भी ज़्यादा you know go into yourself. So I was somebody who would be like hiding अंदर, मम्मी बुलाएंगी कि आओ मिलो लोगों को, you know, like घर पे कोई आया types. So I was like that. So I had no idea कि मुझे लाइफ में क्या करना है, and मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ठीक है। If I'm sharing today, I think it is okay. Sometimes life has its own way of taking you somewhere. तो इतना जो आजकल प्रेशर होता है ना कि आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्या बनना है, इट्स ओके, इट विल कम टू यू, यू नो, मुझे ऐसा लगता है। सो मेरे कोई ऐसे कुछ आई वाज़न्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने यंग हमारे साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और घरों में जिस किसी को भी डांट पड़ी होगी कि तुम्हारा कोई एम्बिशन है या नहीं है, उनके लिए चित्रांगदा सिंह यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल की तरह है। और आज के हमारे शो में हमने एक टैगलाइन यूज़ की थी, सब संभव है। That I believe in. That I totally believe in. सच में, मतलब चाहे सपने थोड़े देर से आएँ या जल्दी आ जाएं, लेकिन सब कुछ संभव है, and there is a time for everything. So just the only thing that I believe in, honestly, is be ready. You know, that work on yourself. एक ये एक चीज़ थी जो my dad would also keep telling me, keep working. ऐसा नहीं है कि आपको सवेरे उठ के अगर आपको एक्सरसाइज करनी है या कोई स्पोर्ट खेलना है तो आप स्पोर्ट्समैन ही बनेंगे, बट यू जस्ट रेडी, यू जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एवरी डे। आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, टू कंटिन्यूसली बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ। 2005 में आपने डेब्यू किया और इंडस्ट्री में आते ही आपने तहलका मचा दिया। 2005 का वो वक्त ऐसा था, चित्रांगदा को पहली बार स्क्रीन पर जिसने देखा, उनके पास चित्रांगदा के लुक्स से लेकर, उनकी इंटेंसिटी से लेकर, उनकी आईज से लेकर, उनके डायलॉग डिलीवरी से लेकर हर बात पर कोई बात कहने के लिए थी। लेकिन मुझे ये पूछना है आपसे, आपके करियर चॉइसेस में फिल्म्स में एक पर्टिकुलर पैशन दिखता है, एक चॉइस दिखती है, एक सेलेक्टिव अप्रोच दिखती है, ये सोच कर किया, प्लान करके किया, या यू आर गोइंग विद द फ्लो? I think I was waiting for the BGM. I think कुछ half and half, you know. I think हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। जो पहली फिल्म थी उसको देख के आई थिंक काफ़ी लोगों को ऐसा लगा, डायरेक्टर्स को या मेकर्स को, कि इस तरह की जो एक इंटेंस ग्रे सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, गुड बैड एवरीथिंग इन हर, शी कैन डू दोज वेरी वेल। सो आई थिंक आई गॉट अप्रोच्ड ऑल्सो उस तरह की फिल्मों के लिए, एंड कहीं ना कहीं आई वॉज एन्जॉइंग दैट। मुझे बहुत पसंद आया कि एक लेयर है, एक परफॉर्मेंस करने के लिए, एक कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। सो मे बी समटाइम्स, यू नो, आप यू ऑल्सो डिस्कवर योर सेल्फ एज एन एक्टर धीरे धीरे हर रोल प्ले करके। लाइक जैसे आपने इनकार का बोला, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड इनकार विद अर्जुन एंड मी, एंड उसके अंदर लाइक
जब मैं वो उसको प्ले किया रोल को, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट so many women don't just want to be ambitious and strong, they always remain vulnerable and weak at the same time. And सबसे difficult life में मुझे लगता है कि I don't know how many women here will agree or not, लेकिन to balance that, क्योंकि we are instinctively vulnerable, you know, हम instinctively emotional beings हैं, but when you want to be out there in the world, तो वो जो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, सो आई रियली फाउंड आउट अ लॉट अबाउट माई सेल्फ आई थिंक थ्रू द फिल्म. और या पता नहीं, फिर देन दे ऑल्सो केम टू मी फॉर आइटम सॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई. करियर के ये सारी चॉइसेस अगर आज आप डेब्यू कर रही होती तो भी यही होते? You know, मुझे किसी ने कहा जब मैंने बोला कि अरे you know I got boxed into this role and I got boxed into this, but they said you know what, बहुत बार क्या होता है कि आप इतनी सारी कमर्शियल फिल्म्स करते हो and you wait for a role like हज़ारों की, तब मुझे चांस मिलेगा परफॉर्म करने के लिए and एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलेगा जो लोग अभी तक याद करते हैं, you know. तो when I look at it like that, I really feel that maybe I just got the best possible role in the first film. So I think yeah, I should be. अगले सवाल पर जाऊंगी, क्योंकि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की बातें हो गई और बावरा मन की बात ना हो. बावरा मन अभी भी सुनती हैं आप? थोड़ा सा म्यूजिक आ जाए तो मज़ा आ जाएगा. बावरा मन आपको मैं बताऊं कैसे हुआ. आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है. कितने लोगों ने सुना है? अभी नहीं सुना तो आज ही आपको सुनना पड़ेगा. हाँ, जाकर हमें लगा आई इंसिस्ट. सो बावरा अभी स्वानंद किरकिरे उसमें असिस्टेंट थे और वो ऐसे ही उन्होंने ये गाना ये लिखा था. तो वो जब हम शूट कर रहे थे एक सीन, वो ऐसे गा रहे थे उस गाने को. तो सुधीर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने वो सुना एंड उन्होंने कहा कि ये क्या है, यू नो व्हाट वाज दैट. एंड उन्होंने फिर से गा के सुनाया पूरा. वो क्लासिकल सिंगर भी हैं बट ही वाजंट अ प्रोफेशनल सिंगर एट दैट पॉइंट. फिर उन्होंने वो गाना गाया वो फिल्म के अंदर आया एंड आज तक लोग उसे याद रखते हैं. मतलब स्वानंद ने ऐसे ही मतलब चलते हुए गाना गाया था. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज ऑन सेट. और या मतलब इट इज़ टाइमलेस एंड आई थिंक अभी वो काफ़ी शोज़ कर रहे हैं जिसका मन है बावरा, जिसका नाम है बावरा मन, द नेम ऑफ द शो. सो इट्स बिकम व्हाट इट इज़. या बावरा मन देखने चला है एक सपना. आपने कहा आपने तो सपने नहीं देखे थे बचपन में, लेकिन इस गाने को जिसने सुना उनके पास बहुत सारे सपने, अपने सपनों को जीने की उम्मीद ज़रूर हमेशा रही है ना. इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा, थोड़ा सा बावरे मन की बात हो गई तो इश्क मोहब्बत की बात कर लें थोड़ी सी. कितने लोग चाहते हैं थोड़ी इश्क मोहब्बत की बातें हो? रेज योर हैंड. अरे यार, यंग क्राउड है बिल्कुल, इश्क मोहब्बत से इतना घबरा रहे हैं. अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सबकी चर्चाएं वही चलेंगी, है ना. सो आई स्टिल हैवंट क्रैक्ड द कोड. हाउ शुड आई आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी फ्रॉम यू टू आस्क दिस क्वेश्चन. जब मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ये बताया कि मैं चित्रांगदा सिंह का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, स्पेशली द मेल फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड रिलेटिव्स, 8 to 10 out of them. So all of them have a special feeling for you. Somebody said we love her. किसी ने कहा कि उनके चेहरे की इंटेंसिटी हम भूल नहीं सकते. कई किरदारों का नाम लिया. तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये मेल अटेंशन जो आपकी तरफ सिंस योर फर्स्ट रोल, जब भी आप पहली बार पर्दे पर आई तब से लेकर अब तक जिस तरह से आता है, आपको पहली बार कब रियलाइजेशन हुआ इस बात का, खुद को आईने में देखते हुए या गुजरते हुए, कि कुछ अलग है, कुछ अलग तरह से लोग देख रहे हैं या बात कर रहे हैं? I mean, honestly, school में when I was in school, I was in an all girls school and एक वो सेंट मेरीज होता है और एक सोफिया, you know, we had these two schools. So जब इंटर स्कूल हमारे कुछ इवेंट्स होते थे, so that's the time that I would be a little like okay. But मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि there is something very special about me. I was a very dusky girl even then. And ऐसा होता है ना, नॉर्थ इंडिया में the whole idea of beauty is very different. And उतने साल पहले तो इतनी awareness भी नहीं थी. तो मुझे ऐसा सच में कभी नहीं लगा. And even when I came to my college, Lady Irwin, वो खादी कुर्ता, jeans, it was very like, you know, dressed down because you have to bus around in Delhi. Like, you know, when you bus around in Delhi, how you have to dress up. So it was, I never thought. लेकिन जब मैंने modeling try करी and in the first, I think 1 or 2 weeks में I started to get photogenic face है, striking face है. And they specially said कि ये बड़ी intelligent लगती है, इसको चश्मा पहनाओ. So my first ad was IBM Oracle, I think, the company. And yeah, so they said we want an intelligent looking face. And I was like, I don't think I look intelligent.
But हाँ मतलब you know how you slowly start to realize what you have. So yeah, it took me a while to understand कि कुछ है. But thank your family, yeah. Friends also. I like all the support. Yes. So proposals कैसे आते थे? और अगर मैं ये पूछूं कि डेली बेसिस पे आते थे, वीकली आते थे, कैसे आते थे? You know, पता नहीं, I don't know, मुझे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत स्टैंड ऑफिश लगती हूँ, मुझे पता नहीं, but ऐसा मुझे कहते हैं कि like people don't like to approach you, so nobody's walked up to me and said any such thing, लेकिन हाँ, like इधर उधर से उस टाइम डेट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था? हाँ, ask you for a dance वाला बड़ा चलता था, because in the army we used to have this jam sessions बहुत होते थे हमारे, you know, dance, so there would be always like अच्छा this guy, like a lot of people would come and ask me for a dance, so I was like okay. How many people asked me? So yeah, it was like that. ऐसे कोई major proposal story तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मतलब हाँ constantly yes. That's nice. मुझे लगता है शुरुआती दिनों की जब बात हो रही थी तो उसमें कैसे मेरठ जैसे शहर से निकलकर दिल्ली, मुंबई और वहाँ पर अपनी एक ज़िंदगी बनाना, बियॉन्ड एक्टिंग अपना प्रोडक्शन हाउस होना, उस प्रोडक्शन हाउस में आपने सूरमा जैसी फिल्म प्रोड्यूस की और अभी आगे भी उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी आगे, लेकिन आपके बारे में जब मैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करी थी तो जो लेटेस्ट फिल्म अब आपकी आने वाली है मातृभूमि, उसकी बहुत चर्चा है और इसके लिए क्योंकि आप खुद आर्मी बैकग्राउंड से भी आती हैं, सलमान खान के साथ आप इस फिल्म में काम कर रही हैं और आपका अपना रोल बहुत सशक्त रोल है और एक ऐसा वक्त जब देश में नेशनलिज्म से लेकर प्राइड से लेकर अपनी जड़ों को वापस तलाशने और आर्मी को लेकर जब इतनी बात है, ऐसे वक्त में इस फिल्म का आना ये टाइमिंग को और इम्पोर्टेंट बना देता है. आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस पहले तो मैं जानना चाहूँगी इस फिल्म को लेकर क्या, और फिल्म आ कब रही है? Okay, how was my experience? पहली बात तो of course because आर्मी फिल्म है तो एक तरह का कनेक्ट हमेशा फील होता है क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो एक इंस्टेंट कनेक्शन है और ऐसा मुझे मेकर्स ने बताया बाद में कि वन ऑफ द रीजंस दैट हम आपको कास्ट करना चाहते थे फिल्म में इज़ बिकॉज एक वो जो आर्मी वाइफ, बिकॉज आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ you know Salman's his wife in the film, so there's like आप बिल्कुल fit बैठोगी उसके अंदर, so एक instant connection definitely होता है. एंड प्रॉब्लम थोड़ी ये थी कि जब मैं बैठी थी सेट पे मैं बोला ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं बोलते हैं, लाइक तुम चुप हो जाओ. आई एम लाइक बट यू हैव दैट ट्रेनिंग अदरवाइज फ्रॉम योर लाइक यू नो कि ये कैप कैसे पहनना है या फिर यू नो हाउ मेनी द पिप्स डू यू हैव, हाउ मेनी स्टार्स यू हैव, सो एक वो दिमाग में वो कीड़ा है एज अ आर्मी किड, यू नो दैट. बट ऑनेस्टली आई हैड अ ग्रेट टाइम. आई थिंक फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है. सलमान खान के साथ काम करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? सी बहुत लोग बात करते हैं सलमान के बारे में कि वो ऐसे हैं वैसे हैं. मुझे भी बहुत सारे टिप्स दिए गए थे जैसे कि मतलब यू नो दैट you have to be ready if he is not on time and things like that, and sometimes schedule बहुत stretch हो जाएगा शायद या ऐसा कुछ, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं बहुत प्रिपेयर्ड थी कि शायद लोग कहते हैं कि अनप्रोफेशनल हैं और ऐसी बहुत चीज़ें बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. वो इतने ज़्यादा अप्रोचेबल, इतने ईजी, इतने लाइक ही हैज़ दिस अमेजिंग क्वालिटी कि जिसको शायद सेट पे कोई नहीं पूछेगा लाइक वो लाइटमैन है या थर्ड ईडी या फोर्थ ईडी है, वो उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि हाउ इज़ ही बीइंग ट्रीटेड, उसको खाना मिला कि नहीं, अरे यार सबका ब्रेक नहीं हुआ है, आई थिंक रोलिंग ब्रेक है, सबको खाना चाहिए, लाइक थिंग्स लाइक दैट यू नो. और इतने सालों के बाद एंड बीइंग ऑन टॉप टू स्टिल हैव दैट कंसर्न, यू नो, मतलब इट्स अमेजिंग. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इम्यून हो जाए. आई मीन आई जस्ट वांट टू शेयर दिस कि एक मेरा सीन था क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि वो सेट पे नहीं आते हैं, मॉर्निंग में नहीं आते हैं. सो आई वाज शूटिंग अर्ली, मेरा कोई 10 बजे का कॉल टाइम था एंड मेरा ही सीन शूट हो रहा था उस दिन, एंड उनके सिर्फ वो थे मतलब यू नो ऑन द कॉल, बट ही वाज ऑन सेट. ही इज़ लाइक नहीं, मैं खुद आई विल बी देयर, आई वांट टू बी देयर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सीन फॉर हर, सो ही वाज देयर. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड Yeah, he's very caring for the आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात का जिक्र किया टाइमिंग्स को लेकर सेट्स पर, और इस वक्त एक आर्गुमेंट नहीं, डिबेट अगर मैं कहूँ वो चल रही है. जैसे दीपिका पादुकोण ने जब शिफ्ट टाइमिंग्स को लेकर कहा कि 8 आवर्स बिकॉज वो मदरहुड वाले फेज में कि घर को भी टाइम देना है या वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कह लें, तो ये 8 आवर्स को लेकर खासकर जो फील्ड ऐसा है जहाँ पर आर्ट, कल्चर, सिनेमा, जहाँ पर टाइमिंग्स आप बहुत ज़्यादा उस पर बांध नहीं सकते,
उसको इम्प्लीमेंट करना मौक़ों के लिहाज से, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी बटी हुई दिखाई देती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, व्हाई नॉट, स्पेशली इफ़ यू हैव फैमिली किड्स टू लुक आफ्टर. कुछ लोगों का ये कहना है कि आप उसको समय सीमा में नहीं बांध सकते. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? 8 आवर शिफ्ट और ये सब टाइमिंग्स पॉसिबल हैं बॉलीवुड में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन जैसे आपने कहा क्रिएटिव फील्ड है, अगर शॉट नहीं मिला, लाइट नहीं आई है, बारिश हो गई है, कुछ भी हो गया, यू नो, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द सेट, सम मैल फंक्शन विद द कैमरा, कुछ भी हो सकता है. तो वो बहुत बार यू नो दिस ऑल्सो अ बिजनेस एस्पेक्ट टू एवरीथिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज द प्रोड्यूसर इज ओके, उनका एक म्यूचुअल लेकिन एक्ट्रेसेस क्या आज इतनी एम्पावर्ड हैं इंडस्ट्री में कि वो इस रूल में ये कह सके कि ओके आई एम गोइंग टू कम फॉर 8 hours, otherwise I will not come? Deepika is Deepika. She is a superstar. Maybe she can, and why not? You know, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोड्यूसर कैन नॉट डू विदाउट एन एक्टर, तो फिर वो हर चीज़ एडजस्ट होती है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि and not just for women, I think even a male actor, it is very difficult अगर आप 8 hour, like you can't put a hard stop like that, you know. In fact मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइटमैन हैं, जो बाकी सब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है किसी तरह की regularization, because they are the first ones to come on set, yeah. They're the last ones to leave the set, you know. So उनके तो बहुत ही ज़्यादा long hours होते हैं. So in fact actors should probably come together and ask for better timings for them, मुझे ऐसा लगता है honestly, because there is no structure in place for the art department, light department, इन सब के लिए. अभी हमने रिसेंट देखा धुरंधर 1 देन धुरंधर 2, और जिस तरह के कामयाबी के रिकॉर्ड्स इन दोनों फिल्मों में सेट किए, ब्लॉकबस्टर हिट एक तरफ, लेकिन देश के भीतर उसको लेकर जितनी डिस्कशंस और जिस तरह से रिएक्शन, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ इट. आप जब फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से इन सब चर्चाओं को देखते हैं और सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के भीतर ऐसा क्या था जिसने पूरे देश को इस पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया? See, I think that it is one of the best films that have been made in India in a very, very long time. वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये मुद्दा उठाया इसलिए इतनी ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, या डिस्कशंस हो रहे हैं, वो इसलिए भी बिकॉज द वे द स्टोरी इज़ टोल्ड, चाहे वो फिल्म मेकिंग में आप उसकी कॉस्ट्यूम्स हैं, आर्ट है, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, एवरी सिंगल डिटेल, वो इतना ज़्यादा दे ऑलमोस्ट इम्पेरेटिव टू वॉच दैट फिल्म, नॉट जस्ट फॉर द स्टोरी बट बिकॉज ऑफ द फिल्म मेकिंग, द एक्सपीरियंस इतना. एंड आई एम सो हैप्पी कि इस तरह के कुछ काम हुआ है कि एवरीबडी इन द इंडस्ट्री now has to work much harder. You know, story telling पे बात हो रही है, writing पे बात हो रही है, screen play पे बात हो रही है, art direction पे बात हो रही है. So now you can't just do PR and get away with things, you know. It is really made it so evident कि film making, pure film making क्या होती है. इस फिल्म ने जिस तरह से सोसाइटी को सिनेमा, कहानी और उसके रिएक्शंस के साथ जोड़ा, वो मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड रहा है कई मामलों में. वो टाइमलाइन एक तरह से वो जो चल रही है, जो इतनी ज़्यादा मतलब फॉर एवरीबडी टू सी, यू नो, एंड एवरीबडी नोज द टाइमलाइन, वो कहीं ना कहीं मेक्स द स्टोरी वेरी क्रेडिबल एंड मोर बिलीवेबल. सो एक रियलिज्म आ जाती है उस कहानी को लेके. लेकिन उसके बियॉन्ड जो फिल्म मेकिंग है, आई थिंक विच पीपल प्रॉब्ली मे नॉट थिंक ऑफ एज मच, वो कहीं ना आई थिंक होता है ना सबकॉन्शियसली यू डोंट रियलाइज कि what is actually affecting you is the filmmaking. So me as a film person, I think it's the best thing that's happened to Indian cinema. एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी इस बात पर, ये फिल्मों से थोड़ा अलग, क्योंकि पार्लियामेंट पे अभी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल के संशोधन के लिए 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था. 2023 में पहले ही बिल पास हो चुका है, अब उसमें अमेंडमेंट्स को लेकर. लेकिन बड़ी चर्चा चली हुई है इस बात को लेकर कि जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो बहुत से ज़्यादा महिलाएँ पॉलिटिक्स में आएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और ये एक अलग तरह से वुमेन एम्पावरमेंट होगा. क्या कल को फ्यूचर में हम कभी चित्रांगदा सिंह को पार्लियामेंट की तरफ जाते हुए, लोकसभा की तरफ जाते हुए या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते हुए देख सकते हैं? आई मीन इट्स मे बी टू अर्ली टू आस्क यू दैट, बट स्टिल हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? और स्पेशली जब कि आरक्षण अब महिलाओं के लिए हो गया तो नहीं, वो बहुत अच्छा है. आई थिंक वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ वुमेन. वो आई थिंक आई मीन द गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, दैट्स फैंटास्टिक. लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 33% मिल जाएगा तो उसके बाद हमें चाहिए ना हमारी बहुत सारी महिलाएं जो स्कूल में आके और एम्पावरमेंट लेकर आए. ओके, आई डोंट नो, क्या पता हम चित्रांगदा सिंह को कभी पार्लियामेंट में बोलते हुए सुने. वेल लाइक आप सब कुछ संभव है, आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले. अरे वाह, क्या बात है. हो सकता है.
चलिए, आपकी पूरी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही चित्रांगदा, और जिस बात के साथ आपने खत्म किया कि सब संभव है, आई एम श्योर आज इसी मैसेज को लेकर जो यंग ऑडियंस भी हमारे साथ है वो ज़रूर जाएगी. बट थैंक यू सो मच आज यहाँ हमारे बीच आने के लिए और अपनी इतनी स्पेशल जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Chitrangada Singh and NDTV's Meenakshi for that very candid conversation where she opened up about her childhood to politics to even movies. Well, moving on to our next session now, Arun. Yes, we celebrate a story that truly defines the spirit of our sessions, Beyond Limits Hitting the Bull's Eye. A story that proves that limitations are not in the body, they're only in the mind. Absolutely. From challenges to championships, from doubt to determination, she has turned every obstacle into an opportunity. Her journey is not just about aiming at a target, but it is about aiming higher than the circumstances. Please put your hands together and welcome India's inspiring para-archer Payal Nag in conversation with NDTV's Preeti Dhaya. We'd also like to invite on stage Kuldeep Kumar Vedwan, Payal Nag's coach. Give it up! Give it up for Payal Nag, ladies and gentlemen. Thank you so much, Arun and Rahesha. And just to give a bit of a background, you know, when we talk about stories, so some stories inspire you, some stories redefine what you believe is possible. ये सिर्फ इंस्पायर करने की बात नहीं है, ये आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को बदलने की बात है. क्या संभव है और क्या संभव नहीं है. So here we are welcoming a young woman who has done exactly that. आप अपनी जो सोचने की हद है उससे भी आगे बढ़ जाइए, बिकॉज उन्होंने वो कर दिखाया है जिसके बारे में शायद सोचना भी मुमकिन नहीं है हम जैसों के लिए, हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए. सो आई टेल यू अ स्टोरी बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग विद पायल. At just about 5 years old, Payal Nag faced a life-altering tragedy that led to the loss of all 4 of her limbs. For many, that might have marked the end of their dreams. For Payal, it actually became the beginning point of a remarkable journey. With extraordinary resilience, relentless practice, and an unbreakable spirit, she stepped onto the archery range, not just to participate, but to compete with the very best in the world. And at just 18 years of age, she rose to become a world para gold medalist and etched her name in history as the world's first quadruple amputee archer. World's first and only quadruple amputee archer is sitting in front of you. I think we deserve a bigger round of applause. Get me the loudest. There you go. There you go. Thank you so much. पायल और उनके साथ कुलदीप जी हैं, कुलदीप वेदवान, जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना और आज हम सबके सामने इस चैंपियन को लाकर खड़ा किया है. पायल से बात करना चाहूँगी. पायल, जब मैं ये सब बोल रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. आई एम श्योर इस ऑडियंस में बहुत सारे जो यंग हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन सब के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे. और मैं बाहर पायल से बात कर रही थी, तो हमारा कोई सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होने वाला है ना पायल? पायल, सबसे पहले हमें अपनी कहानी बताइए. मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोगों के अंदर इतना भी मतलब आत्मविश्वास बहुत लोगों में होता है, इतना विश्वास नहीं होता कि अब हम यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे. आपने हर उस सीमा को पीछे छोड़ दिया है. कहाँ से शुरुआत हुई पायल? आपके लिए आपकी कहानी का जो शुरुआत का पॉइंट है वो कौन सा है? नमस्ते, मैं हूँ पायल नाग, उड़ीसा की रहने वाली हूँ, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट की, और छोटा सा गांव है मेरा जमुना बहाल. मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी मेरे. मैं जब छोटी थी 7th ईयर की, तो मम्मी पापा मेरे मजदूर थे. मम्मी पापा मिस्त्री काम करते हैं और मम्मा हाउसवाइफ है. तो एक दिन मैं जब छोटी थी तो मैं ठीक थी, मेरे पैर हाथ सब ठीक थे. तो मैं घर पे पढ़ाई करती थी, मम्मी पापा बाहर काम करते थे रायपुर में. तो
स्कूल का जब छुट्टी हुआ तो मैं मम्मी पापा जब आए थे काम करके, तो मम्मी पापा को मैं बोली कि मैं भी जाऊंगी, मैं घूम के आऊँगी करके। तो जब मैं गई रायपुर तो मैं 2-3 दिन घूमी और पापा नीचे काम कर रहे थे 4 मंजिल के ऊपर। पापा काम मतलब कि 4 मंजिल के ऊपर मैं खेल रही थी और पापा नीचे काम कर रहे थे। तो फिर मैं भाई के साथ ऊपर खेल रही थी और जब वो 4 मंजिल के ऊपर लाइट वाला जो करंट का तार होता है वो गया था सामने से। फिर भाई के साथ कपड़े के साथ खेल रही थी और भाई ने कपड़े को तार में फेंक दिया। भाई भी छोटा था, उसको नहीं पता था। तो फिर मुझे बोला कि कपड़ा निकाल के दो दीदी करके। तो मुझे भी नहीं पता था कि इसको छूने से करंट लगेगा करके, मैं तब छोटी थी। तो वहाँ एक लोहे का रॉड था, तो मैंने लोहे के रॉड से कपड़ा को निकाला तो मुझे करंट लगा। फिर मेरे बॉडी के जो खून थे वो सारे चूस लिए थे करंट के वजह से। फिर मैं इतनी गर्म हो गई थी तो पानी में गिर गई। फिर पानी के करंट से ना भाई जब मुझे बचाने के लिए जा रहा था तो पानी के करंट से भाई को भी बाहर फेंक दिया। फिर मैं बहुत गर्म थी, मुझे कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था। फिर एक कपड़े में लिपट के हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते करके। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो फिर मेरा वहाँ इलाज हुआ। फिर जब 4 हाथ पैर ठीक थे, फिर इन्फेक्शन हो गए थे पैर और हाथ में। तो डॉक्टर ने बोले कि अब हाथ पैर काटने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएंगे करके। फिर हाथ पैर को काटना पड़ा। फिर मेरे पैर के चमड़ी लेके हाथ में चिपकाना पड़ा, हाथ में लगाना पड़ा, बहुत जगह में लगाना पड़ा। फिर मेरे धीरे धीरे इलाज करवाए। मैं तो छोटी घर से हूँ तो मेरे मम्मी पापा अपने ज़मीन उमीन सब कुछ बेच के मुझे मेरे इलाज करवाए। फिर एक दिन ऐसा आया, मम्मी पापा को मतलब कि रिलेटिव मिलने आए थे, मेरे से मिलने आए थे। तो उन्होंने बोले कि अब तो बच्ची का 4 हाथ पैर नहीं है, इसको मार दे करके, जहर दे के मार दे करके मम्मी पापा को सब बोलते थे। फिर मम्मी ने उनको जवाब दिए कि मैं क्यों मारूं अपनी बच्ची को जो बोल पा रही है, इतना मतलब कि इतना बोल पा रही है। आप लोगों से मैं कुछ हेल्प नहीं मांग रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को भीख मांग के भले ठीक कर लूँगी और मुझे आपका ये सलाह नहीं चाहिए। मेरी बच्ची को मैं ठीक करवाऊंगी जैसे करके भी, और आप मुझे ये सब मत बोलो करके। और मम्मी पापा जब मैं बेड में लेटी थी तो मम्मी पापा छुप छुप के रोते थे। मैं वो दिन भी देखी मम्मी पापा जब छुप छुप के रोते थे। फिर जब मैं ठीक हुई तो मेरे गांव आई उड़ीसा, तो वहाँ भी बहुत लोग बहुत कुछ नेगेटिव बोले थे। तो सारी बातों को मम्मा ने इग्नोर किए। फिर मैं स्कूल गई, मम्मा ने एक दिन स्कूल छोड़ने गए मुझे। तो मैं बोली मम्मा को, मम्मा मैं कैसे लिखूं करके। तो मम्मा ने बोले लिख नहीं सकती है तो क्या हुआ, पढ़ तो सकती है करके। तो फिर ऐसे 2-3 दिन स्कूल गई। फिर मम्मा मुझे बोर लगने लगा था कि मैं कुछ तो कर नहीं पा रही हूँ, स्कूल क्यों रोज रोज आ रही हूँ करके। तो मम्मा को मैं बोली मम्मा मैं और नहीं पढ़ूँगी, बस बहुत हो गया ऐसे करके बोली। तो मम्मा बोले कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तू कदम उठा, तेरे हर एक कदम पे मैं हूँ, ऐसे बोले मम्मा ने। तो फिर एक दिन मुँह से पेन पकड़ा दिया मुझे, मुँह से पेन पकड़ा दिया, मुँह से अब लिखना करके। तो मैंने मुँह से लिखना स्टार्ट किया। फिर ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया मैंने। फिर 2-3 कॉम्पिटिशन में गई, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। फिर वहाँ मैं 1st, 2nd, 3rd हुई। फिर एक दिन ऐसा आया, मम्मी पापा सब बाहर गए थे, किसी के शादी में गए थे। फिर हमारे जो जिला प्रशासन है उन्होंने आके मुझे एक अनाथ आश्रम लेके गए। वो लोग चाहते थे कि पायल अच्छे से पढ़ाई कर पाए। आप लोग तो जानते हो, मैं तो बोल भी चुकी हूँ कि मैं छोटी सी घर से हूँ करके। तो उन्होंने सोचे कि जो जिला पढ़ के गए अनाथ आश्रम में, ये उड़ीसा में ही था जी, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ लेके गए मुझे। तो वहाँ मुझे सारे सुविधा दिए, वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मोटिवेट किए वहाँ के स्टाफ। और एक दिन कंपटीशन एक आया, सुरभि कंपटीशन बोल के। तो मैं उतना अच्छे से ड्राइंग भी नहीं कर पाती थी। तो वहाँ के एक मैम थे, प्राची मैम, तो उन्होंने मुझे गाइड किए, बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाना सिखाए और मुझे वही कंपटीशन में भेजे। फिर पहले ब्लॉक लेवल आता है, ब्लॉक में मैं फर्स्ट हुई, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हुई। उस टाइम भी मेरे ना बहुत मतलब कि मुँह से पकड़ती थी पेंसिल, वो रंग पकड़ती थी तो बहुत ज़्यादा टूट जाते, तो मैं बहुत रोती थी कि अब मेरे से नहीं होगा करके। तो फिर मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी मैंने, फिर मैं ड्राइंग स्टार्ट की। फिर उसी कंपटीशन में गई, फिर स्टेट लेवल तक गई। स्टेट में बहुत कुछ मिस्टेक की थी तो हार गई थी, फिर भी मैं अपना हिम्मत नहीं हारी। कंपटीशन हार गई थी, हिम्मत नहीं हारी थी। फिर मैंने ऐसे ही अपना ड्राइंग कंटिन्यू
किया, फिर एक मैम की ड्राइंग बनाई थी उनका फेस देख देख के, तो वही ड्राइंग ट्विटर में किसी ने पोस्ट किए थे, तो ट्विटर में छोड़े थे, तो वही ड्राइंग मेरे जो गुरुजी हैं कुलदीप सर ने देखे, तो उसी ट्विटर के माध्यम से मुझे देखे थे सर। और वो जो आश्रम में थी मैं, वहाँ सर ने कॉल किए वहाँ, और वहाँ सेक्रेटरी मैम से बात की है, और सेक्रेटरी मैम बोलते हैं कि मैं पायल को ऐसे तो बात नहीं करा सकती हूँ, आप कलेक्टर सर से बात कीजिए करके। फिर सर ने उन्होंने कि सर से बात की है, फिर कलेक्टर सर से बात की है कि हम पायल को आर्चरी करवाएंगे, हम लेके जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी करके। तो सर ने बात की, फिर हमारे जो जिला कलेक्टर सर हैं उन्होंने बोले ठीक है ले जाओ पायल को, वो अच्छा करेगी, ऐसे ऐसे करके बोले थे, मैं सारा सुविधा कर दूँगा, आप लेके जाओ करके। जब मैं फर्स्ट टाइम श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी आई सर के पास, तो मैं सबको देख के चौक हो गई थी, मतलब कि सब एबल वाले भी थे, पैरा वाले भी थे, शीतल दीदी थे, राकेश भैया थे, तो शीतल दीदी के 2 पैर थे, तो पैर से धनुष चलाते थे, आप लोग तो देख सकते हो मेरे कुछ भी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, तो मैं सोची कि मैं कैसे चलाऊं करके। चलो पायल एक काम करते हैं, यहाँ पे इन लोगों को गैस करने देते हैं कि आपने क्या किया, ठीक है, इस कहानी को, क्योंकि देखो कहाँ से शुरू हुई है कहानी, अभी तक हमें आपने रुला दिया है, हमें आपने हंसा दिया है, और हमें आपने बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी कर दिया है। अब वो पायल जो है वो सर की एकेडमी में पहुँच गई हैं, वहाँ से आगे का सफ़र जो होता है, उससे पहले मैं एक बार कुलदीप जी से पूछना चाहूँगी। कुलदीप जी, पायल ने बोला कि आपने उनकी ट्विटर पे एक पेंटिंग देखी, और उस पेंटिंग को देख के ऐसा क्या लगा आपको कि ये बच्चा आपकी एकेडमी में आके आर्चरी कर सकता है? और आपने भी देखा होगा कि क्वाड्रुपल एम्प्यूटी है, आर्चरी में किस तरह का इक्विपमेंट काम आएगा, किस तरह से आप ट्रेन करेंगे, वो विश्वास क्या था पायल में? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पायल को मैंने पहली बार देखा तो मेरे अंदर पायल को देखते ही एक आइडिया ने जन्म लिया। आइडिया। अच्छा। आई एम नॉट इंजीनियर, मैं 10वीं पास करके इंडियन आर्मी में 16 साल का चला गया था, और इंडियन आर्मी में 12 साल जॉब किया, और 12 साल के बाद फिर रिजाइन कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ड्रीम। माई ड्रीम वॉज ओलंपिक मेडल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चला गया था, मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ। मैंने जब पायल को देखा तो एक आइडिया ने जन्म लिया कि कैसे इस बच्ची को तीरंदाजी कराना है जिसको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और मैंने खोजा कि ट्वीट किसने किया है, उनसे बातचीत किया, और पता लगा कि एक बच्ची पायल नाग उड़ीसा के बलांगीर में है, और एक अनाथ आश्रम में है, और दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और पायल ने पूरा बताया कि वो आ गई हमारे पास, और आने के बाद जब वो ट्रेनिंग करने लगी तो 15 दिन बीत चुके थे। पायल बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में बखूबी अपनी ट्रेनिंग करने लगी, सिर्फ ग्राउंड आना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, क्योंकि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तो हमने पहले उसके कोर पे काम किया, कोर को स्ट्रोंग किया। और एक दिन पायल आई, दोनों आंखों में उसके पानी था, मैं नहीं जानता कि उस दिन उसको ऐसा क्या फील हुआ। वहाँ पे इसने शीतल को देखा। शीतल आई थिंक सब लोग जानते हैं, आज आर्मलेस जो वर्ल्ड की पहली एक ऐसी लड़की है, शीतल देवी, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, अर्जुन अवार्डी है, पैरालंपिक मेडलिस्ट है, वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो शीतल देवी को देख करके, राकेश को देख करके, राकेश ऑल्सो अर्जुन अवार्डी एंड पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, एंड ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो वहां पे इसने एबल बॉडी के बच्चे, हमारे जैसे बच्चे, बिल्कुल जो बिल्कुल सही है, ऐसे बच्चे भी, क्योंकि हमारे पास में 80% एबल बॉडी बच्चे हैं और 20% मेरे पास में पैरा के बच्चे हैं। एंड वन मोर न्यू चैप्टर, I am only coach in India who started blind archery in 2018. And मेरा एक स्टूडेंट है पवन शर्मा, आज वो भारत का पहला ब्लाइंड आर्चर है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है। तो जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए और इतने बड़े टीवी चैनल के माध्यम से, पूरे देश में ये एनडीटीवी के माध्यम से मैं न्यूज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ब्लाइंड बच्चे भी तीरंदाजी कर सकते हैं। तो कुलदीप जी, पायल की जो कहानी है, जो वहाँ पर अब रुक गई थी,
जब आपकी अकेडमी में वो पहुंची। और हमने बात कर लिया शीतल देवी की भी, आपके पास बहुत सारे ऐसे हाई अचीविंग एथलीट्स हैं जो कि पैरा ओलंपिक्स तक के मेडल ला चुके हैं। तो यहाँ पर आप शीतल दीदी के साथ ट्रेन कर रहे थे, अब आप उनको भी हरा के आ गए हो, ठीक है, वो कहानी आगे बढ़ गई है। ये अपनी मेहनत का नतीजा है कि इस तरीके से पायल ने उस लेवल को अचीव किया है अपनी हर लिमिटेशन के बावजूद कि अब वो जो उनकी आइडियल थी उनको भी हरा के आगे निकल रही हैं। पायल, मुझे बस ये बताइए कि आपकी शीतल के साथ क्या बातचीत होती है और अब आप क्या दोनों मिलके एलए की तैयारी कर रहे हैं? एलए ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में सर लेके जाएंगे, किस तरह से तैयारी चल रही है? शीतल दीदी को तो मैं दीदी ही बोलती हूँ, मुझे छोटी बहन की तरह मानते हैं, हमारे ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं जब इंटरनेशनल गई थी तो उन्होंने, जब उनके साथ ही फाइनल था मेरा, तो उन्होंने बोले अच्छा करना करके, मैंने भी बोला अच्छा करना करके, तो हम दोनों अच्छा ही किए और दोनों ही इंडिया को मेडल दिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और इंडिया के लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओलंपिक्स में इतने पदक नहीं आते जितने पैरालंपिक्स में आ रहे हैं। कुलदीप जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से आप टैलेंट को पहचानते हैं, आज जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये युवा मंच है एनडीटीवी का, उनके सबके पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा कि कोई भी लिमिटेशन हो, नहीं रुकना है और कैसे आगे बढ़ते रहना, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जब पायल कर सकती है, शीतल कर सकती है, राकेश कर सकता है, और भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, जब ऐसे बच्चे कर सकते हैं और वो भी इतना डिफ़िकल्ट, धनुष को उठाना, 5 किलो का धनुष होता है, 5 kg का, उसको पैर से उठाना, और वो भी पूरा पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग एंड एक कस्टमाइज्ड डिवाइस, जो डिवाइस मैंने खुद ही बनाया है। मैंने बोला था ना कि आई एम नॉट इंजीनियर, उसका एक मीनिंग था कहने का यहाँ, उसका ये मीनिंग था कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, 2 ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे ऐसे बच्चे जिनको पैर नहीं है वो धनुष को उठा सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिनको दोनों हाथ नहीं है वो धनुष को खींच करके और बिल्कुल सटीक निशाना लगा करके ओलंपिक एंड पैरालंपिक में मेडल जीत सकते हैं। तो मेरा पेरेंट्स को और मेरे पूरे भारत को एक मैसेज है कि जिंदगी में ना कभी हार नहीं मानना, और अपने बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कभी कमतर महसूस नहीं कराना, कभी भी कोई भी आपदा हो, बिल्कुल उसमें भी अवसर ढूंढा जा सकता है। पायल, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, देश के युवा को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, मुझे ही खुद देख लो, 4 हाथ पैर नहीं है फिर भी कर सकते हो, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी ज़रूर कर सकते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए और हिम्मत ना हारिए। और पायल की तरफ से ऐलान क्या रहेगा एलए 2028 के लिए? तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो फिलहाल एशियन गेम की तैयारी चल रही है, और एशियन गेम में भी मैं इंडिया को ज़रूर गोल्ड मेडल दिलाऊंगी, और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल दिलाऊंगी अपने इंडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया पायल, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। एंड जो आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं भी उन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के तो नौका पार नहीं होती, कोशिश आपको करनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, हम सब की दुआएं हैं, पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है, हम सब आपसे बहुत प्रेरित है, और ऐसे ही लगन के साथ आप मेहनत करते रहिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कैन वी रैप दिस अप विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? थैंक यू। Thank you, ladies and gentlemen. Please take your seats. Well, Arun, so far we've had world champion athletes, we've had young fashion stylists, business leaders, but right now, amongst us seated is a man who has dedicated his life to the noble cause of infusing quality into education. And Arun, it really reminds us of all our professors and teachers, isn't it? Yes, but this man amongst us
today has truly revolutionized education for students with personalized education. Please welcome with a round of applause Nitin Vijay, who's fondly known as NV Sir, in conversation with NDTV's very own Munish Devgan. नाम है नितिन विजय, लेकिन बच्चों के लिए प्यारे एनवी सर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ही उनका पैशन है। उनकी ज़िंदगी है। एनवी सर कोटा फैक्ट्री के असली जीतू भैया हैं। ऐसा बड़ा भाई जो पढ़ाई के इतर भी उनकी फ़िक्र करता है, उनका ख्याल रखता है, उनके फ्यूचर की परवाह करता है। एनवी सर की क्लास में मज़ेदार अंदाज में पढ़ाई भी होती है और ज़िंदगी के सबक भी सीखने को मिलते हैं। तभी तो इनके वीडियोस के नीचे आपको एक कमेंट ज़रूर मिलेगा, सर हूँ तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, लेकिन पूरा वीडियो आपका देख लिया। सच पूछिए तो एनवी सर ने कोटा के कोचिंग सीन की हवा ही बदल दी है। पढ़ते समय सबसे अहम हो जाता है, इसलिए हम घड़ी के कांटों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं एनवी सर के साथ ये खास बातचीत। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा के इस मंच में आपका स्वागत है, क्योंकि पूरे देश में लाखों युवा आपको फॉलो करते हैं। तो आपने कब ये तय कर लिया था आईआईटी निकालने के बाद कि बॉस टीचिंग ही करनी है? फर्स्ट ईयर के बाद ही तय कर लिया था, क्योंकि हमें माताजी बचपन से कहानी सुनाती थी। मुझे नहीं पता था इस मंच पे वापस बतानी पड़ेगी, पर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि गांव में पानी नहीं निकल रहा था तो एक ही जगह गड्ढा खोदा जाए तो पानी निकल आता है। कहानी हम सब ने सुनी है। अलग अलग जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा। तो माताजी मेरे को कम से कम 200 बार ये कहानी सुना चुकी थी। आईआईटी में गया तब भी उन्होंने ये कहानी दोबारा सुनाई मुझे, ये कहानी याद है तेरे को? मैंने बोला यार अब तो मैं आईआईटी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पर याद रखना कि फर्स्ट ईयर में तय कर लेना क्या बनना है। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को लगा या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ, क्योंकि फिजिक्स से प्रेम था, और लगा कि टीचर भी बन सकता हूँ क्योंकि जो कोटा में टीचर्स उनसे फैसिनेटेड था। पर लगा एस्ट्रोनॉट शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल स्थिति ऐसी ना हो कि बाहर जाके कर पाएँ। तो मैं सोचा टीचिंग ट्राई करते हैं। जब गया तो बच्चों को इतना प्रेम मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक था। फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई स्टार्टेड टीचिंग। आप मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी बहुत इजीली समझा देते हैं। तो देश में ऐसे तमाम लाखों टीचर्स हैं फिजिक्स के और सब्जेक्ट्स के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि बोरिंग तरीके से पढ़ाना बंद कर दीजिए? मैं शायद दूसरों पे कमेंट करना तो गलत होगा, बट हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कभी कभी हम अध्यापक ये सोचते हैं कि फैसिनेटिंग वर्ड यूज़ करने से, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ानी है, आप बोलो पैराडाइम शिफ्ट है, क्वांटम इंटेंगलमेंट है, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। पर अगर ऐसे शब्द जो वो जानता है, उसकी शब्दावली के जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखिए और शब्दों की स्पीड पे ध्यान रखिए। और अगर आप टीचर हैं तो आपको नॉलेज डिलीवर करने से प्रेम होना चाहिए। बच्चों से प्रेम करेंगे, उनकी शब्दावली को समझेंगे, उनकी मनस्थिति को समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अध्यापक जो क्लास में जा रहा है वो बुरा पढ़ाना चाहता है, पर वो स्टार बन के बाहर निकलेगा अगर इन बातों का वो ध्यान रख लेगा। मैं सौभाग्यशाली था कि ये स्वीट स्पॉट कि जो जीवन में बनना चाहता था वो मैं बन पाया, क्योंकि शायद 100 में से 95 लोगों को हो सकता है काम मिलता हो, बट मैं उनमें से हूँ जिन 100 में से 5 होते हैं जिन्हें वो मिल जाता है। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने बोला कि मैं जर्नलिज्म में आ पाया, उसके पहले शायद मैं इतना अच्छा करिकुलम में नहीं कर रहा था, पर आपने मेरे को बताया कि जैसे आप जर्नलिज्म में आपने स्वीट स्पॉट को हिट करा, आप फर्स्ट आने लगे, सेकंड आने लगे, तो शायद हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ पाए। टीचर्स को भी वही बोलना चाहता हूँ और बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ। यानी आप अपने पैशन को प्रोफेशन अगर बना लें, सर कह रहे हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे साथ कई बच्चे भी हैं जो आपको लगातार सुन रहे हैं। अच्छा, कोटा का मतलब कहा जाता है एक ऐसी प्रेशर कुकर वाली जगह, तो कई बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि बॉस यहीं ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आगे बहुत लंबी ज़िंदगी अभी बाकी है, और कैसे आप उनको समझाते हैं? फिर कोटा में जो भी बच्चे आते हैं उनको पहली बात हम ये बोलना चाहते हैं कि कोटा में वो बच्चे आए जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। अगर वो फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, यूपीएससी में जाना चाहता है, मत आइए। दैट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। और क्या वो जगह, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अभी देखिए आप पायल और अपन शीतल जी की बात कर रहे थे, व्हाट अ एग्जाम्पल। मेरे खुद के गूज़बम्स खड़े हो रहे थे, अभी तक भी खड़े हैं जब उनको देखते हैं कि पैरा ओलंपिक्स में ऐसा कुछ कर सकते हैं मेरे पहले जो स्पीकर थे। तो मैं कहता हूँ अगर आपका कुछ और पैशन है तो वो करिए, बट अगर आपका साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपका सपना है तो कोटा बहुत बेहतर जगह है, क्योंकि मैं वहाँ से विद्यार्थी रहा हूँ। अब कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे प्रेशर कुकर है या सफल होने के लिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। 1.5 लाख के आसपास बच्चे कोटा में आते हैं। 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको वो कॉलेज मिल पाता होगा जो ड्रीम देखते हैं। बट मैं आपको एक बात वादे से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से वहाँ पर पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी है,
कि उस 1.5 लाख में से 1,40,000 से ज़्यादा बच्चे जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि कारण वो सिलेक्शन नहीं है, कारण वो प्रक्रिया है जो 10 से 12 घंटे बच्चे को मेहनती बनाता है। तो प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि शायद हम ये मान लेते हैं कि अगर हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो हम जीवन में असफल हो जाएंगे। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, किसी गोल के लिए जाते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि वो गोल टारगेट नहीं है। उस गोल के लिए जो मेहनत करी जा रही है, जो संघर्ष करा जा रहा है, वो असली सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा और आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। आप ऑनलाइन शिक्षा के काफ़ी मतलब इतने पक्ष में नहीं हैं। आपको लगता है कि जो ऑफलाइन है उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बच्चों से, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन के पक्षधर नहीं हूँ। ऑनलाइन जैसे मान लीजिए आपको और हमें कोई कोर्स करना है, 2 घंटे रोज पढ़ने की हमको आवश्यकता है, आज AI के कोर्सेज आ रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन करना चाहिए। बट जिस बच्चे को 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, उसके लिए ऑनलाइन का मोड थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन के ऐसे बैचेज हैं जिनमें एक बैच में 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे हैं, तो असली क्लास का मतलब होता है कि बच्चा पार्टिसिपेंट हो, ऑडियंस नहीं। जब 20,000 बच्चा है, आज जो हमें सुन रहे हैं वो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ क्लास। और हम स्पीकर्स हैं, हम एजुकेटर्स नहीं हैं। तो जब क्लास की संख्या 20,000 25,000 चली जाती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑडियंस बन जाते हैं, वो पार्टिसिपेंट नहीं रहते। और जो पढ़ाने वाले हैं वो एजुकेटर नहीं रहते, वो स्पीकर बन जाते हैं। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे टीनेजर हैं उनको टनल फोकस लाने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। क्लासरूम उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पर ऑनलाइन में भी अगर आप बात करें, मान लीजिए आप बच्चों को ऐसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब लोग आ पाएँ जरूरी नहीं है, जिसमें बच्चे को वीडियो चालू रखना जरूरी हो, उससे आप बात कर पाएँ, उसके नोट्स चेक कर पाएँ, उसे टोक पाएँ। ऑनलाइन का एक फायदा मैं आपको बताता भी हूँ। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं जिनमें हर जगह बच्चे का वीडियो दिखाई देता है। तो क्लास में तो हम सिर्फ बच्चे से रिलेट कर पाते हैं, ऐसी क्लासेस में हम घर वालों से भी रिलेट कर पाते हैं। पीछे से मम्मी आ जाती है, कभी पानी दे रही हैं, तो मतलब हम घर वालों से भी रिलेट कर पा रहे हैं। फायदा है, बट हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं उसका पक्षधर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टीचर्स तो ऑनलाइन के चलते कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं। हाँ, मतलब आप बोल सकते हैं इस बात को, पर हमें समझना पड़ेगा कि स्पीकर कौन है, एजुकेटर कौन है, कौन हमें नॉलेज डिलीवरी कर रहा है। बट अपन ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन ने शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया नहीं है, उसे अफोर्डेबल नहीं बनाया है। इस बात से कोई भी नदारद नहीं हो सकता। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, एनवी सर को एक सॉफ्ट हार्टेड टीचर माना जाता है, जो बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो जो गरीब बच्चे आपके पास आते होंगे कि हमें भी IIT निकालना है, आप क्या क्या करते हैं उनके लिए? बहुत कुछ है। हम करीब, आप ये मान के चलिए, हमारे कोटा के आसपास करीब 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा में हैं, और हम एक सोसाइटी के नाम पे उनको सभी लोगों को फ्री में पढ़ाया करते हैं। जिसको तकलीफ होती है वो हमारे पास आता है तो मुझे सुनते हैं। लॉटरी प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम बच्चे के लिए कर रहे होते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो अगर शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है तो वो इससे नदारद रह जाए। हम इसका भरसक प्रयास करते हैं। 100% सफल होते हो हमेशा, ये तो शायद जरूरी नहीं, पर प्रयास पूरा रहता है। अब तक आपने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, कोई ऐसा अतरंगी सवाल जो आपको याद रह गया हो किसी बच्चे का? बहुत पूछते हैं सर। अभी मैं आपको अतरंगी सवाल एक बताता हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ पे बैठी हुई है। हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है, तो वहाँ पे मैं उस विचारधारा को बताना चाहता हूँ कि बच्चे की विचारधारा कहाँ से आती है। तो मैं रेजिडेंशियल कैंपस से गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे गया, 5-6 महीने की पहले की बात होगी। तो मैं गया तो वहाँ पे एक लड़की मिली, तो बहुत खुश हुई देख के, और एनवी सर और स्वाति मैम भी साथ में थी। तो उन्होंने मेरी वाइफ से सवाल पूछा कि आप अपनी सासू माँ के साथ रहती हैं? तो लड़की ने बोला हाँ, मतलब मेरी वाइफ ने बोला हाँ। आपकी और सासू माँ की लड़ाई नहीं होती? और अगर लड़ाई होती तो एनवी सर किसका साथ देते हैं? तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे सवाल कई बार आते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं। तो लगता भी है कि कई बार वैसे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि शायद विचारधारा को एक्सपोजर ही नहीं मिला है। बच्चे शायद वहीं तक सोच पा रहे हैं। उनके मन में डाल दिया गया है कि किसी भी बहू का और सास का रिलेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। वो तो छोटी बच्ची है, पर उसके ये विचार जो उसके मन में आए, उसको शायद ऐसा वो बहुत अचंभित थी इस बात को सोचकर कि किसी सास में और किसी बहू में कैसे बन सकती है, उनका रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है। सास बहू मतलब लड़ना कंपलसरी है। तो मेरे हिसाब से उस मानसिकता को और उस मनस्थिति को बदलने की भी अपने को आवश्यकता है, और ये काम सबसे बेहतर अगर कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है वो शिक्षा है। एक प्रश्न आपने मेरे से बोला कि कई बार लोग बोलते हैं आपसे इतने लोग प्रेम करते हैं, मेरी बात बनावटी लग सकती है। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि नेशनली मुझे लोग देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैं शिक्षक बना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे मंच पे आके खड़े होंगे। रिसेंटली मुझे कपिल शर्मा शो में मैं होके आया, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया। मैं कहता हूं हमने कभी सोचा नहीं था जो सम्मान आज की तारीख में हमें मिल रहा है, जिस चीज ने हमें सब कुछ दिया हो, उसके लिए हम बच्चों से और शिक्षा से प्रेम क्यों ना करें। बल्कि मुझे लगता है जो मुझे इस जीवन में मिला है, इसका ऋण उतारने के लिए मुझे अगले 100 जन्म तक शिक्षक बन के रहना पड़ेगा। ये सच है, एंड आई रियली मीन इट। क्योंकि किसी सेलिब्रिटी को, किसी एक्टर को इतना सम्मान मिले, ये तो हमारे लिए शायद एक्सेप्टेंस थी, बट शिक्षकों को इतना सम्मान मिलना, इतना प्रेम मिलना,
ये हम जब बने थे तब हमने सोचा भी नहीं था। तो मैं नतमस्तक होकर जितने भी लोग प्रेम करते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा के लिए समर्पित रहूँगा, बच्चों से प्रेम करता रहूँगा। इस जीवन में जो भी शिक्षा के लिए इनोवेशन कर पाऊँगा वो ज़रूर करूँगा। मैंने देखा आप थोड़े भावुक भी हुए ये कहते हुए, लेकिन हर प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई ऐसा भी दौर रहा होगा, लेकिन आज के दौर में क्या एनवी सर अकेले बैठते हैं और सोचते हैं कि वो मुश्किल थी राहें आज आसान ये सफ़र लगता है, ये कौन सी दुआओं का असर लगता है? बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि मैं कोई सी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। फादर नॉर्मल जॉब में थे, तो हमने कभी देखा भी नहीं था ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो शुरुआती दौर में जब आईआईटी की जर्नी होती है, इंडिविजुअल टीचर होते हो, तो आप इंडिविजुअल फाइटर होते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होने लगती है तो आपको पता नहीं होता क्या करना होता है। 2018 तक मुझे पता भी नहीं था बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है। तो इस वजह से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आई, क्योंकि आपने पूछा तो मैं उसको संभालने की बहुत मुश्किल था। बट आपने बोला दुआएं किसकी हैं, दुआएं सबसे पहले, फिर ये बात बनावटी लग सकती है, बट अगर मैं बच्चों को भी बोलता हूँ और इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, आप आईएएस बन जाएं, फर्स्ट रैंक ले आए, सेलिब्रिटी बन जाएं, फुटबॉलर बन जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, एजुकेटर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू नहीं है तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये बात थोड़ी सी इमोशनल लग सकती है और उस वजह से मैं कह भी नहीं रहा हूँ। आपने देखा कि तो मैं अमूमन ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ, बट ये सच है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की दुआएं हैं, फादर मदर साथ में हैं, मैं उनके साथ रह पाता हूँ, वाइफ साथ में है, परिवार साथ में, और बच्चों का इतना प्रेम है, बच्चों की दुआएं इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी हार पाऊंगा। जी, आपने कहा आप कभी हार नहीं पाएंगे। आपको एक बार 684 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ, वो तो आपने मना कर दिया, लेकिन चूंकि बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं, कभी कहा जाए बॉस शिक्षा मंत्री बन जाइए, इतनी अच्छी, इतना आपके अंदर ज्ञान है, क्यों ना आगे बढ़कर कभी ऐसा ऑफर हो तो कैसे आप मना कर पाएंगे? 684 करोड़ वाली पे बात कर लेता हूँ। शिक्षा मंत्री वाली बात तो मैंने अभी तक कभी सोची नहीं, बट हाँ कभी सेंट्रल एडवाइजरी में शिक्षा को कैसे स्वरूप देना चाहिए, मैं नहीं मानता कि मेरे को उसमें बहुत ज्ञान है, बट क्योंकि मैंने इतने साल उसमें काम करा है, तो अगर उस एडवाइजरी में कहीं मुझे कोई पद ऐसा मिलता है कि मैं एजुकेशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि आई डिवोटेड 20 years ऑन टू इट, हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन, तो मैं अपना इनपुट देना जरूर चाहूँगा। रही बात 684 करोड़ रुपए की बात, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने मुझे दिया था, उससे पहले भी मैं कंपनीज के नाम अगर आप बोलें तो मैं ले सकता हूँ। बाइजू का नाम अपन सबने सुना है, तो कोरोना के दौरान बाइजू ने हमें एज ए कंटेंट पार्टनर लिया। दे पम्प्ड मनी इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑन द डाइल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट एज ए कंटेंट पार्टनर उनका पूरा कंटेंट हम डिलीवर करते थे। उसकी वजह से कंपनी बहुत ग्रो करी, नो डाउट उसे वो पूरा नहीं कर पाए, बट कंपनी बहुत ग्रो करी। उसके बाद एक ऑफर आया 684 करोड़ का, जो अनअकैडमी ने हमें दिया था। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इस काबिल उन्होंने हमको समझा। नहीं लिया क्योंकि आइडियोलॉजिकल मिसमैचेस थे। मैं उस समय बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता था कि what is the most difficult task in our sector is to scale experience। आप अगर एक्सपीरियंस को स्केल नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ फैक्ट्री कि आज ये फैक्ट्री लगा दी, अच्छा पैसा आ गया है तो दूसरी फैक्ट्री भी मशीनरी फ्रांस से इंपोर्ट करके आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरेक्शन कराना है ह्यूमंस के साथ, और उतनी ही सद्भावना के साथ, उतनी ही प्रेम के साथ। तो दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज द फिलॉसफी विच यू टू डिलीवर। वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो उनकी फिलॉसफी उस समय थी बहुत फास्ट स्केल करने की, और मेरी उस समय फिलॉसफी थी कि यार मैं अभी बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि नॉर्मल बच्चे की प्रोग्रेस के लिए कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन ला सकें। उस समय वो आइडियोलॉजिकल मिसमैच था। आज की तारीख में आपको कह सकता हूँ कि बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे ला चुके हैं जिसकी वजह से मोशन में बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज सिलेक्शन बढ़ जाता है। आइडियोलॉजिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हमें कॉम्पिटिटर्स को भी लोग बाग देखते हैं, तो हमारी सेक्टर में भी कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो रैंक फिलॉसफी पर डिलीवर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन पे डिलीवर होते हैं, हम वो हैं जो वैल्यू फॉर मनी एंड क्वांटिटेटिव सिलेक्शंस पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर जो जिसके लिए काम कर रहा है उसे करता रहना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी हैं, स्कूल कहते हैं स्कूल ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, आफ्टर स्कूल में ही कुछ कोचिंग का इंतज़ाम हो? सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुद्दा उठाया और आप ही ने आंसर दे दिया। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ शिक्षण संस्थान जो हम स्पेशली हम कोचिंग सेक्टर से आते हैं, हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरह लिया जाता है। हम 18% GST भरते हैं। पहली बात, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की तरह। कोचिंग संस्थानों को कॉम्पिटिटर मान लिया गया है स्कूल का। अगर कोई सी स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हो, या जैसे अभी अपने पायल और शीतल की बात कर रही थी, अगर ये बहुत आर्चरी में बहुत स्ट्रांग है तो इनको एक स्पेशल कोच की जरूरत है, एक स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर स्कूल में कोई बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल या स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, तो क्या उसे अधिकार नहीं है स्पेशल ट्यूटर्स का?
हमारा काम वो स्पेशलाइजेशन है। फेलियर ऑफ स्कूल एजुकेशन, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोचिंग संस्थानों का बढ़ना इज नॉट अ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम या स्कूल। ये क्योंकि विचारधारा आ गई है, इस वजह से हमें कल्प्रिट की तरह देखा जाता है। तो जो आपने समाधान दिया, मैं उसका 100% पक्षधर हूं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ जो चाहते हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सीए की करना चाहता हूं, मैं आईटी करना चाहता हूं, मैं नीट की करना चाहता हूं, और जो उसके लिए डिवोट होकर काम करना चाहते हैं, क्यों ना उन बच्चों को 3 घंटे स्कूल में ही अलाउ करा जाए और हमारे जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को उन 3 घंटे के लिए डिलीवर करने के लिए अलाउ करा जाए, जो अभी हमारे करंट स्ट्रक्चर सिस्टम में नहीं है। इससे एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, बच्चे पे जो एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम का बर्डन आ रहा है, जो उस पर हल्का सा स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो घटेगा। मतलब इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन विच गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड। लोग जाते हैं कोटा आईआईटी क्लियर करने के लिए, आपने तो होश ही संभाला कोटा में जी। तो आपकी आईआईटी जर्नी कैसी रही? मैंने सुना आप कहते थे कि आपके पिता ने टीवी पर ताला लगा दिया था और आपको पिता विलन की तरह लगते थे। तो आज क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? आप कहते हैं कि बॉस मोबाइल 2 साल मत देखो, आगे ज़िंदगी में मौज करोगे। तो मैं दोनों बातों के उत्तर देता हूँ। ये सच है जो आपने बोला कि जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था 2 साल तक हमारे पिताजी ने टीवी बंद कर दी थी। तो पता नहीं वो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, तो सही बताऊँ तो मुझे लगता था ये हिटलर जैसे हैं। बट मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि अगले 100 जन्मों तक मुझे यही पिताजी चाहिए जिनकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मम्मी पापा डांट सकते हैं, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, वो डांट सकते हैं। अच्छा, पिताजी माताजी का धर्म भी होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को टोकना आवश्यक है, नहीं तो उनका पिता माता धर्म पूरा नहीं होता है। ये आवश्यक है, बच्चों को भी समझना जरूरी है। बट बच्चों को एक बात समझना जरूरी है कि उनके जीवन में उनसे भी बेहतर अगर कोई उनके लिए सोचता है तो माता पिता हैं। डांट लें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सुन लीजिए। मेरी बात आपको 5-10 साल बाद समझ में आएंगी जब आपके खुद के भी बच्चे होंगे। उनसे बेहतर आपको कोई जान नहीं सकता और उनसे बेहतर आपका कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, युवा का मंच है, आजकल देश के ज़्यादातर युवा जो है रील पर फील करते रहते हैं सारा दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि बच्चों से मोबाइल हटा लेना चाहिए। उन बच्चों से हटा लेना चाहिए जो एडिक्टिव हो गए हैं। मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है। हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारा जीवन बदल सकता है और हमारा जीवन खराब भी कर सकता है। निर्णय आपका है कि आप उससे अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों को पहले यह सिखाया जाए, 15 साल के ऊपर 14 साल के ऊपर के बच्चों को जिनको मोबाइल देते हैं आजकल, उनको यह सिखाएं कि मोबाइल का सदुपयोग कैसे करा जाता है, मोबाइल को यूज कैसे करा जाता है, उससे क्या सीखा जा सकता है। अगर फिर बच्चा उसको सीख लेता है तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई टूल हो नहीं सकता। बट अगर कभी आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूं बच्चों के लिए नहीं, अगर हमें भी लगता है कि हम एडिक्टिव हो गए तो मैं थोड़े दिन के लिए उससे अलग हट जाना चाहिए। तो मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है। जैसे टेक्नोलॉजी भी वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप कैसे उपयोग करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या बेसिक डिफरेंस मानते हैं आप? टॉपर में टॉप 10 टॉप 100 जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, शायद मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे बट मैं मानता हूं कि उनमें से काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा गॉड गिफ्टेड होते हैं, एक ही बार में सब कुछ याद हो जाना। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे 50 रैंक पे आ रहे हैं, 500 पे आ रहे हैं, 1000 पे आ रहे हैं, वो लायक नहीं है। बल्कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लाई हो वो ही उस बैच का सबसे ज़्यादा सफल आदमी रहा हो। हमारे टाइम पे जो 10th में सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा वही सबसे ज़्यादा सफल रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो इसको समझें। हाँ, जो टॉपर्स आते हैं उनके 2 ट्रेड मैंने अमूमन देखे हैं कि उनका IQ थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड हो सकता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में। और दूसरा अपन बोल सकते हैं कई बच्चों ने उनमें अर्ली स्टार्ट चालू कर दी होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो बहुत कॉन्शियस होते हैं वो काफ़ी जल्दी उनको थोड़ा चालू कराते हैं तो उन्हें थोड़ी एज मिलती है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम जैसे कोचिंग संस्थान हैं, हमारे यहाँ भी टॉपर्स आते हैं, टॉप 10 100 को हम ज़्यादा दिखाते हैं, हालांकि हम तो नीचे वालों को भी बहुत सारा दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से उन टॉप 50 टॉप 10 में हमारा 20% रोल होता है, पर जो इसके बाद बच्चे हजारों की संख्या में सेलेक्ट होते हैं उनमें हमारा रोल 80% होता है। क्रेडिट कभी कभी हम उनका भी लेते हैं ऊपर वालों का, बट सच है कि उनका उसमें रोल ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ रैपिड फायर हो जाए। जी सर। एनवी सर को एनवी सर बनाने में सबसे बड़ा रोल किनका है? उनके पढ़ाने के यूनिक तरीके का, बच्चों का, माता पिता का, या आपकी लाइफ पार्टनर जो सामने बैठी उनका? मेरे हिसाब से सबका ही है सर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। लाइफ पार्टनर तो साहब नहीं बैठी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मेरा एक दोस्त की तरह बहुत साथ दिया है। माताजी पिताजी का तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब बोल ही नहीं सकते। कभी भी आप डल हो जाओ तो माताजी आपको संभाल लेंगी, पिताजी आपको संभाल लेंगे। बल्कि इन तीनों ने शायद मुझे संभाल रखा है। तीनों मतलब माताजी, पिताजी और वाइफ ने। मैंने आज तक घर का कोई काम नहीं करा है, अपनी वाइफ के लिए कभी कोई साड़ी नहीं लाया हूँ, बच्चों के लिए कोई काम नहीं करा है। ये सिर्फ मुझे फ्री रखते हैं कि तुम शिक्षा के लिए समर्पित हो, रहो। बाकी सारी बैकएंड की हेडेक
हम ले लेंगे। और ये सच है, इसलिए नहीं कि मंच से कोई मॉडेस्ट होने के लिए मैं बात कह रहा हूँ, ये सच है। मुझे मेरे घर का कुछ नहीं पता है, न ये लोग रिलेशनशिप में क्या करना है, परिवार में और क्या करना है, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इन्होंने बोल रखा है तुम एजुकेशन को समर्पित हो, तुम वो करो, तुम्हारी सारी बैकएंड की तकलीफें हमारी। ऐसा परिवार, ऐसा साथी आपको मिल जाए, तभी आपको समर्पित होकर इतने प्रेम करने वाले बच्चे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एनवी सर बन पाए। आपको क्या लगता है जो कोचिंग माफिया है वो वाकई है रियल में? कोचिंग माफिया शायद बहुत गलत शब्द है, क्योंकि मैं उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हजारों बच्चों को उनको जिंदगी दे रहे हैं। नहीं, मैं इसके लिए उत्तर देना चाहूँगा, सर आप जर्नलिज्म से आते हैं, आपके सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने शायद इस प्रोफेशन को दागदार करा होगा। इसकी वजह से सारे जर्नलिस्ट या सारे चैनल्स खराब हो गए, ये सच नहीं है। मैं कोचिंग के लिए भी यही बोलना चाहता हूँ, कुछ अप्रिय घटनाएं या कुछ ऐसी बातें जो कोचिंग संस्थानों को नहीं करनी चाहिए जी, वो उन्होंने करी, उस वजह से शायद ये नाम कहीं कहीं लिया गया। बट सबको एक ही तराजू में तोला जाए, ये सही नहीं है। आगे कुछ आपका प्लान हो देश के लिए, कुछ और शिक्षा में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं? मैं शिक्षा में बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा शिक्षा के देखने को प्रारूप को बदलना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है शिक्षा को एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में सर अब नॉलेज वर्कर्स की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। नॉलेज वर्कर्स जो हम बिल्ड कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उसकी आवश्यकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम हो रही है। आज की तारीख में वो आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको देने लगता है। आप देखोगे तो आज से 25 साल पहले समस्या ये थी कि कोई आंसर बताने वाला नहीं था। नाउ आंसर बताने वाले की समस्या नहीं है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलोगे, वो आपके साइकोलॉजिकल आंसर, सब्जेक्टिव आंसर, सब आंसर आपको दे देगा। तो फिर एजुकेशन में क्या चाहिए? आंसर देने वाला तो हमें मिल गया टेक्नोलॉजी। सही सवाल पूछने वाला बनना असली शिक्षा का महत्व है। क्या बच्चा सही सवाल पूछ पाता है? इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि शिक्षा असलियत में सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, मैं कई बार रिपीट करता हूं, वापस रिपीट करता हूं, असली शिक्षा का महत्व है सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। लर्न हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कैसे सोचा जाए, कैसे सही सवाल पूछा जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बना जाए, कैसे क्रिटिकल थिंकर बना जाए, आई थिंक ये एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करने की बहुत आवश्यकता है। आप हजारों बच्चों का स्ट्रेस दूर करते हैं, खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं आप? मेरी इसकी थोड़ी सी अलग टाइप की, क्योंकि इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग तरीके से इसको सोचता हूँ। मुझे लगता है हमें स्ट्रेस आता कब है कि हम एक गोल सेट करते हैं। गोल हमारा सेट होता है ऑब्सेशन से, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत आता है तो मैं इसकी इंजीनियरिंग तरह का ही मेरा आंसर है इसका, कि हम जब भी गोल सेट करते हैं तो वो गोल डिफाइन होता है कि जैसे मान लो शिक्षा है तो ऑब्सेशन से आता है, जुनून जिसे हम बोलते हैं कि नहीं यार जुनून है, मुझे शिक्षा में कुछ करना है। जब ये जुनून से हम गोल सेट कर लेते हैं तो हम एफर्ट लगाते हैं जम के, और जब हम एफर्ट लगाते हैं जम के और बीच बीच में से एनालाइज करते रहते हैं कि गोल कितनी दूर है, गोल कितनी दूर है। अब जब एनालाइज करते हैं तो कई बार गोल दिखता ही नहीं कि यार ये अचीव हो पाएगा, या हमें लगता है कि ये गोल अभी दूर है या थोड़ा धुंधला नजर आता है, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इससे ही हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। मैं बच्चों को बोलता हूं कि गोल को तय कर लिया उसके बाद रोज मत देखो इसको। मैं कोटा से दिल्ली आया गाड़ी से, 6-7 घंटे की जर्नी है, माइलस्टोन छोटे 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 पार करते जाइए, आगे चल जाएंगे। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं अगर इस स्ट्रेस को कम करना है, और खुद भी मैं यही करता हूं, तो एक बार गोल सेट कर लिया उसके बाद रोज गोल के बारे में नहीं सोचता हूं। रोज ये सोचता हूं कि कल से बेहतर करा कि नहीं करा। अगर कल से बेहतर नहीं करा तो एनालाइज करिए और इंप्रूव करिए, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होती जाएगी, आप इसे एंजॉय करते जाएंगे और साथ ही साथ आप गोल पे कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप देश के नामी टीचर हैं, अगर टीचर ना होते तो क्या होते? सोचना बहुत मुश्किल है, बट हाँ शायद मैं फिजिक्स की किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा होता। लाखों बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, एनवी सर का रोल मॉडल कौन है? सही शब्दों में बोलें तो फिर थोड़ी सी भावनात्मक बात लगेगी, बट माताजी पिताजी ही मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे पिताजी में आज भी दो उनकी खूबियाँ बताता हूँ जिसको मैं अडॉप्ट करने की बात समझता हूँ। कि मेरी माताजी की खूबी ये है कि वो किसी भी परिवेश का व्यक्ति हो, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। वो कभी जज ही नहीं करती, ना जज करना चाहती हैं कि वो व्यक्ति किस स्ट्रक्चर से आता है। इसकी वजह से एक फायदा होता है, उनका व्यवहार हर व्यक्ति के प्रति सेम है। मेरे पिताजी की जो क्वालिटी जो मैं खुद में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, कैसी भी तकलीफ आ जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती
कि क्या लेके आए थे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से खड़े होना जानते हैं। मैं कुछ हद तक उस पर आ पाया हूँ, पूरा तो नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि दोनों वैचारिक बौद्धिक संपदा से दोनों चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी विरासत में मिली है, पर इसे प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं अपने रोल मॉडल उन दोनों को ही मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एनडीटीवी युवा के मंच पर आए और हज़ारों लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं एनवी सर। इस इम्तिहान को भी इन्होंने पास कर लिया है और आगे मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षा में ये अभी और क्रांति लाने वाले हैं, ये क्रांति ज़रूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। A huge round of applause for NV sir. I'm sure if I had a teacher like him, I would have passed my maths exam. But I've been asked to build this. We have a star amongst here with us. I will not reveal who she is. I would now like to call on stage my co-host Arun Singh for the next session. Thank you, Rahesha. Although कुछ reveal होने के लिए बचा है नहीं, आप सबकी आंखें कहाँ हैं हमें मालूम है. But now we move on to the next session. But before that, I want a huge round of applause from each one of you. You've been a great audience. Now, from wrestling akhadas in Dangal to quietly stirring emotions in Photograph and bringing satire alive in Cuttle, she's built a filmography that refuses to be boxed in. An actor who chooses nuance over noise, she's constantly reinventing what it means to be a leading woman today. Whether it's stepping into hosting, experimenting with unconventional roles like her upcoming negative turn in Sundar Poonam, or building a brand that goes beyond the screen, she's clearly playing the long game. And just when you think you figured her out, she surprises you again, be sharing screen space with Diljit Dosanjh, exploring layered stories like Mrs., or even introducing people to the calm ritual of matcha. Give it up for Sanya Malhotra. Lovely, louder, hello. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Please have a seat. और इससे पहले मार्केटिंग में कोई कमी ना रह जाए, और क्या, There we have the logo right in the ऐसा middle. कैसे, पूरा डब्बा लेकर आई हूँ मैं मुंबई से. बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एनडीटीवी के इस मंच पर. थैंक यू. और इससे पहले हम कॉन्वर्सेशन शुरू करें, आपके इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हो रहे हैं, दशक. जी. Thank you. 2016 दंगल और आज 2026. Yes, in December I'll be completing 10 years in Bollywood. वो वाली सान्या और इस वाली सान्या में क्या फर्क है, क्या बदला है? A lot has changed. A lot. I don't know, I'm just much more sure about myself, my craft, confident, and cuter. A lot more gold as well. Oh, हाँ. दिल्ली आई हूँ यार. Now also, you know, if we see your choices, of course, जैसे मैंने अपने intro link में भी सारी films का नाम लिया, वो सारी choices काफी rare हैं, right? जैसे कुछ साल पहले हम मेल एक्टर्स में आयुष्मान खुराना के लिए बोलते थे कि वो जो पिक करते हैं, that is offbeat, it's different, it's not Bollywood per se. Right. Is that also somewhere a conscious choice that you are making, that मेरे को plain Jane करना ही नहीं है, मेरे को classic करना नहीं है, मेरे को कुछ rare करना, or is it just that only अलग exceptional scripts are coming to you? It's a mix of both. Okay. As an actor, I don't want to be, I don't know, I don't want to restrict myself or be in a box and be comfortable with doing things that I have already done. Something that excites me is experimenting with my roles, with my scripts. Hence, I have done films like Mrs., Patakha, Paglet, Dangal, and also because my first film, I think my debut was with Dangal, जिसमें बाल काट दिए, wrestling सीखी. So, क्योंकि debut ऐसा था, तो मुझे लगता है कि it could also be a conditioning for me as an actor कि experiment करते रहो. तो वो है. And of course, I'm very, very blessed. I get really good scripts that I can not say no to. But do you now feel torn between, you know, audience's expectation and what you want to do?
Because अब expectations बहुत ज़्यादा होगी कि जो सान्या मल्होत्रा touch करेंगी, it will be something unique. Now, do you carry that pressure now? No, there's no pressure as such. Not at all. I know that I'm not perfect. और कभी कभार हो सकता है कि मैं कुछ करूँ जो ना अच्छा लगे, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? Will it stop me from experimenting or taking risk? No, not at all. I am not afraid of failure. I'm not afraid of, I don't know, just... Not trying something new. Yeah, not trying something new. And of course, we've loved the look of Sundar Poonam, जो आपका वो look जो आप बिल्कुल lens में देती हैं, it's deadly. And I'm sure it is going to be much more layered than what we see. What all can you share about the project? I can only say right now I'm still filming for the film, and I think 10% ही हुआ है shoot, and this is a character that, you know, I usually gravitate towards characters that I naturally like, but she is someone that I like. I don't know if I can say I like her, but I don't know, she's layered. It's a type of character that I have never played ever, and I wanted to challenge myself. क्योंकि एक कुछ जो आप characters करते हो as an actor, you have to empathize with them, but it is tough to empathize with this character, I would say. That's it. Okay, I'm sure it's deadly. Yeah. Okay. हम बहुत ज़्यादा तो अभी of course इनसे नहीं सवाल कर सकते उस project के बारे में. But now let's also talk about your journey, since we're celebrating 10 years of Sanya Malhotra also. Now, you know, पूरी जर्नी में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स आए होंगे, बहुत सारे ऐसे फिगर्स आए होंगे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली इन द फिल्म इंडस्ट्री. वन पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया आपने किसी एक्शन से और उनकी टीचिंग आपके साथ रह गई, एंड इट इज़ हियर टिल नाउ एज वेल. आई मीन यू वर्क विद आमिर खान, शाहरुख खान, सो यू नो एनी वन पर्सन who's taught you something that stayed with you? I did a film called Photograph with Nawazuddin Siddiqui, and उस फिल्म में मेरे साथ गीतांजलि कुलकर्णी थी, who played my house help in the film. I have learned a very important thing about acting from her, which is backstory. The first day of our readings together, because she was playing my house help, she got a sari to wear, bangles, payal, a playlist कि मैं as my character मैं क्या गाने सुनती होंगी, and she didn't even sit up, she was sitting down, she had like everything planned about her character, which kind of moved me, क्योंकि मैं सिर्फ दंगल से, क्योंकि दंगल में ना wrestling helped us a lot to get into the character, that physicality and dialect वो सब हमारा naturally हो रहा था. But in this one, because it was so emotionally heavy, this film, when I saw her, I was like, I need to do this too. And till date, I do it for all my characters. वो क्या गाना सुनते होंगे, वो क्या मतलब also scent is something really important to me. So all my characters have a different scent. So and there are times when I put a perfume and I feel like, say Meenakshi from Meenakshi Sundareshwar. अरे ये तो मीनू का perfume है, वैसा मतलब it takes me back. Even songs, the kind of music I listen to, it changes. I write like my characters. For Paglet, I used to write poems, and I can't write anything. To be honest, my writing is, I don't think so it's comprehensible. It's comprehensible to me, पर कोई और पढ़ेगा तो बोलेगा कि ये क्या है? But as my character, if I used to write as Sandhya, it used to make sense. So I do that till date. So thanks to Gitanjali that I got inspired by her. Of course. And that shows, right? That comes through. Screen पर दिख जाता है. How many of you are from Delhi? Most of you. दिल्ली दी कुड़ी साढ़े नाल है. जब आप दिल्ली वापस आती हैं, सबसे पहली चीज़ क्या करती हैं? और एक चीज़ जो आज भी आपको दिल्ली से जुड़े हुए है. घर, नानी, मेरा घर in Gurgaon. I'm really looking forward to go home tonight. Love that you say Gurgaon and not Gurugram. Yeah, Gurugram. Will I get... No, it's fine. Am I in trouble? People who have like their emotional connection, they would always say Gurgaon and not Gurgaon. मैं पड़पड़गंज से हूँ ना, मैं अभी तक निकली नहीं हूँ. मैं 12 साल पहले छोड़ के गई थी, पर मैं 12 साल पुरानी दिल्ली में रह गई हूँ, ऐसा लगता है मुझे. Yeah. So what's the first thing that you do when you enter Delhi? खाना. Of course. And where do you go? राजमा चावल. Had to be. घर के राजमा चावल. इतने easily impress हो गए यार तुम लोग. खाना बोलते ही सब excited हो गए. That's Delhi for you. Yeah.
फूड यार, राजमा चावल नहीं मिलते वहाँ अच्छे. पर अब मैं I have moved my parents from Gurugram to Mumbai. So I do get like good rajma chawal in Mumbai as well. But यहाँ के खाने की बात कुछ और है यार. राम लड्डू नहीं मिलते यहाँ. और मैं वहाँ कहीं राम लड्डू बोलूँ तो उनको समझ नहीं आता राम लड्डू क्या होता है. मूली नहीं, मूली जैसा मूली टेस्ट ही नहीं है. And chaat also, yeah. Yeah, Nobody chaat does also. chaat like Delhi. Chaat too, I agree. Or North. Now, you know, you also have stepped into entrepreneurship with Bree Matcha. ये of course कभी भी कोई सेलिब्रिटी अपना ब्रांड लेकर आता है तो एक ये बात जरूर जहन में आती है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट उनकी होती होगी. So I want to ask it straight up. How much were you involved right from the word go, and how much participation do you have today as well? 3 साल पहले I used to be a huge coffee drinker. फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि कॉफ़ी से तो बड़ी घबराहट हो रही है यार. बीपीआई हो रहा है. बीपीआई हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना. आई रियली लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उठे हैं, बैठे आराम से, स्लो मॉर्निंग, crushing the beans and all of that. And when I started feeling jittery after having coffee, I was like, गए मेरे तो सपने गए. मेरा तो मैं मॉर्निंग का क्या करूँ, गर्म पानी पीऊँ. And then a friend told me, why don't you switch to matcha? 3 साल पहले matcha, mind you, was not matcha what it is right now. It was nothing, like people didn't know about it. I started drinking matcha and I was like, wow, this feels so good. I did my research and I started converting all my friends, family members into matcha drinkers. और मैं कोई बाहर जाता था या मैं खुद travel करती थी तो I used to get good quality matcha for myself. 2 years back, I was like, this whole process is too much. It's tedious. Why don't I start my own brand? I told my manager, Jinal, I want to start my own matcha business. And this girl was like, what is that? Nobody knew when I told the team that, listen, I'm telling you, matcha is going to be huge. And when it comes to Indian markets, blah, 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 I'm giving them a speech about matcha, that matcha has amino acid like L-theanine. That's the reason you don't feel jittery. It has caffeine and similar amount of caffeine than coffee, but it also has an amino acid called L-theanine, which relaxes you, which gives you a very focused energy flow. आप में से कितने लोग पहली बार माचा के बारे में सुन या समझ रहे हैं? अगर सिर्फ 2 ही, बाकी सबको थोड़ी माचा देर के में बारे में ट्राई कराते हैं आपको, थोड़ी देर में ट्राई कराते हैं. Favorite people ever, favorite audience. So I was telling them this, and then they said, we have never tried matcha. And then of course I made them matcha, and their first reaction was, जो होता है usually लोगों का, but then they all switched to matcha, all of them, and I'm not even kidding. Swear to God, they all switched. They drink matcha every day and more than me. So 2 साल पहले ये हुआ. We got Asenza on board. They're my partners in Bree Matcha. We get our matcha from Kagoshima in Japan. We have ceremonial blend, we have everyday blend, we have a signature blend. We also have flavored matchas. We have strawberry matcha. If you never tried matcha, you can get the strawberry matcha or the lemongrass matcha if you want to take like chote steps towards matcha. Those are really good. And we are also launching new flavors very soon. Lovely. So आपने काफी अच्छी introduction दे दी है. Now can you also take us through the process of making matcha? Do you want me to hold mic for you? I'll hold it. No, let me hold it for you. Okay guys, what we are going to learn now is how to make matcha. So this is our matcha ceremonial kit that we sell on our website. It's also available on Amazon. Let me show you. We have our ceremonial matcha in this. We have a bamboo. Do you want to put it here? Yes. Why struggle? We have a bamboo whisk. We also have. देख रहे हो कितने तरह के यंत्र निकल रहे हैं एक माचा बनाने के लिए. चाहिए होते हैं यार बर्तन. और कहलाने के लिए माचा गर्ली. Easy way भी है, which I've got other stuff also to show you guys. You should make it in this because it's a process and kind of a mindful activity. पर अगर आपको ये लंबा process नहीं करना, there are छोटे ways also जिसमें मैं आपको सिखा सकती हूँ माचा बनाना. Okay, what's the first step? You can use the table as well if you want. मुझे ये सब खोलना पड़ेगा, तो आप मुझे 2 मिनट दें, मुझे बैठ के बनाना पड़ेगा ये. Oh, I thought we were ready, but that's absolutely fine. Do you want to do this? We can skip it as well. Why? Oh, you want to do it, of course. Why not? Of course you want to do it.
Meanwhile, let me also tell you that we were discussing Dangal, we were discussing, your brush with wrestling. There are world-level wrestlers amongst us as well, so give it up for them as well. Shujit ji, if you're here, I can't see you, Shujit ji. Hi. You can, guys, give it up for this gentleman here, world-level wrestler. He's the world #1, of course, sir. We'll of course hear from you as well in a short while. So, दंगल में बढ़िया लगी थी आपको, सान्या जी? कितने नंबर देंगे आप 10 में से इनकी रेसलिंग को? 10? Of course. कृपा शंकर सर ने हमें सिखाया था, जानते हो आप उनको? आपके भी कान टूटे हुए हैं। हाँ। अरे नहीं, दे हैव कॉलीफ्लावर ईयर्स, सच में कान टूट जाते हैं। आप कान दिखाओ ना सबको लग रहा है मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। या because of the constant contact, yeah, it's a thing. It's actually a sign. कोई अच्छा रेसलर उसकी निशानी है ये कान टूटे होते हैं। तो कृपा शंकर सर ने हमें सिखाया था। तालियां हमारे रेसलर्स के लिए and of course उन एक्टर्स के लिए जो उनकी कहानी पर्दे पर लाते हैं। But you also think that, Sanya, while you are doing this, I'll keep asking you a question as well. अब आप कितना कुछ कर रही हैं, आप डांस भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। You think अब हवा जो है वो बदल रही है? इंटरव्यू के साथ साथ मैं माचा भी बना रही हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत होगी आज। Multi talented. But you think हवा बदल रही है? You think now nobody has to have like just one role, they can do multiple things? Yes, I think क्योंकि हाँ मतलब क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सबको मल्टीपल थिंग्स करने की ज़रूरत है, पर अगर आपको मल्टीपल शौक है तो व्हाई नॉट? इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू हैव द मीन्स, देन व्हाई रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ? राइट। ओके, नाउ व्हाट प्रोसेस आर वी ऑन, व्हाट स्टेप आर वी ऑन? तो हम अभी माचा को सीव कर रहे हैं। ओके, is there a way we can project this footage on this screen? That will be great, so the audience can also see what we are doing and what we are up to, only if we can. वैसे मैंने तुम्हारी रील में देखा था कि तुम्हें माचा बिल्कुल पसंद नहीं है। Sorry? तुमने कोई रील बनाई थी ना अबाउट माचा? हाँ, मैंने एक बार ट्राई की थी। एक बार ट्राई और आखिरी बार ही ट्राई की थी। बट आज देखते हैं कि सान्या के हाथों की माचा जो है वो कैसी बनती है, माचा मचाएगी या नहीं। या मचाई यार, इधर ना स्वीटनर नहीं है, तुम्हारे लिए मुझे स्वीटनर की जरूरत पड़ेगी, वरना तुम कभी नहीं कोई बात नहीं, हम मीठी मीठी बातों से काम चला लेंगे। वो स्वीटनर का काम कर लेगा। बातों का तो ये माहिर है, as we all know. Okay, so आपने क्या किया अभी? You've just put like 1 spoon of this matcha. Yes, actually 2 to 3 grams of matcha I have in this bowl. I'm doing this for the very first time on stage. Somebody making matcha. Yes. That to a Bollywood actress making matcha for us. I mean, I love matcha यार, मैं अभी रूम में पी कर आई हूँ और आज मैंने बनाई अपने लिए coconut water matcha. And this is such a perfect weather for matcha. कितनी गर्मी है बाहर। मैं आप सबको, अगर मेरे पास और समय होता तो मैं अपनी फेवरेट रेसिपी सारी बना के आप सबको पिलाती, बट अच्छा, ये हम क्या नहीं है? कर सकते। Are we going to stir? This is a bamboo whisk. Okay, we're going to whisk with this. Yes, I'm going to pour some hot water in it. देखो दोस्तों, मैं बहुत क्लमजी हूँ और मैंने पानी नहीं गिराया, तो मैं क्लमजी नहीं हूँ। तालियां, पानी ना गिराने के लिए तालियां गाइस। थैंक्स। So या श्रीकांत, मेरा वो हाँ इलेक्ट्रिक विस्क भी दे दो, थैंक यू। हाँ, थोड़ी टाइम की कमी है, अगर इलेक्ट्रिक विस्क मिल जाएगा तो दैट विल बी नाइस। या तो अभी हम इसको ऑफ कोर्स कोल्ड भी बना सकते हैं, बट आप गरम वाला बना रही हैं इसको। मैं गरम आपको इसलिए करना पड़ता है दैट बिकॉज यू नीड टू ब्रू दिस माचा। ओ अच्छा, ओ जस्ट लाइक कॉफी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो विस्क इट इन कोल्ड मिल्क। In there are some recipes where people use cold milk, but I prefer whisking it in hot water. So what I'll do is I'll also make some of you taste this, and especially those who have never tried matcha. Sir, can I have you, Sujit ji, please stage पर आ सकते हैं मेरे लिए, please, please, जोरदार तालियां इनके लिए। क्लमजी कोई और है, सान्या आप नहीं। ये मेरा नया नवेला, नए नवेले विस्क को जो इन्होंने गिरा दिया है, बहुत बहुत माफी। ओके नाउ आप बताइए, आपने सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां। कैन आई ऑल्सो गेट हनी?
मैं नहीं जाने वाली यार, मुझे तो किसी चीज की Can we get some honey as well? अभी तक हमने सिर्फ सुना ही था हीरोइंस डिमांडिंग होती हैं, हमने देख भी लिया है. ड्रामे नहीं खत्म हो रहे यहाँ पे. Guys, can we get honey? Sir, have you had matcha before? इससे पहले आपने matcha पिया है? सुना है बस. सुना है ना? तो आप अभी जो सान्या बनाएंगी वो matcha ट्राई करने के लिए रेडी है. मैं भी एक सिप लूंगा, आप भी. रेसलर्स को आप ऐसे कॉफी वॉफी तो नहीं पीते होंगे ना? नहीं कॉफी पीते हैं. कॉफी पीते हो ना? एनर्जी के लिए. अगर आपको उसको स्विच करके अगर आप माचा पियोगे तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि माचा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं, और आपको मजाक नहीं है, ये हंसे जा रहे हैं. ब्रांड है मेरा. बोलना पड़ता है. एंड आई एक्चुअली लव माचा यार. तो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आपको कॉफ़ी एनर्जी तो दे देती है पर उसमें अमीनो एसिड्स नहीं है, तो आपको मैं ट्राई ज़रूर कराऊंगी. So we got honey as well. हर हर महादेव अच्छी लगे. अब आई थिंक बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है. अब इट हैज़ टू बी रियली वेरी गुड सना, नो प्रेशर. ऐसा तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे पर, ठीक है? ओके ठीक है, आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने. I don't take any pressure. सो आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने फीडबैक के साथ. बिल्कुल. नहीं, आधा ही दिया यार, पूरा भी नहीं दिया. लेकिन इतना बढ़िया ब्रांड उन्होंने बनाया, वो क्या हनी हमें थोड़ी ना चखाएंगी. नहीं, आपको लग रहा है ये टेंशन में आ सकती है. एग्जैक्टली. भरोसा है माचा पे. मैं बोल रहा था सर, अपनी ब्री माचा पे आप ऑनेस्ट रहिएगा. हमारी तो मेहमान है, हमें भी ऑनेस्ट रहना है, बट आप ऑनेस्ट रहिएगा. मेरी पीठ दिख रही है. लेट मी कम हियर. ओके, व्हाट बातें करते रहो ना तुम, इधर उधर की बातें करो. इधर उधर की बातें वगैरह. बट टेल मी व्हाट ऑल हैव यू पुट. सो अभी आपने वो जो ब्रू किया था, वो जो आपने विस्क किया था. मैं आइस डाल रही हूँ इन आमंड मिल्क. ओके, आमंड मिल्क. ठीक है. एंड व्हाटएवर यू विस्क्ड हियर in hot water goes in. Just letting you know in case you place an order after this from Brie Matcha and then decide to make it. मुझे लगता है कि कुछ समर ड्रिंक पीनी है तो स्ट्रॉबेरी माचा जरूर ट्राई करना from Brie Matcha. It's our best selling matcha. Also, our everyday matcha and our ceremonial blend is really good. Okay. And I can vouch for it क्योंकि मैं ये रोज पीती हूँ. ठीक है. This is the final step, right? This is the final step और माचा बनके रेडी हो गई है. ये जोरदार तालियां. Can we just divide this into two? अच्छा, we have a straw. Lovely. तुम्हें भी पीना है? हाँ, मैं सोच रहा था मैं भी ट्राई कर लेता हूँ. ठीक है. हाँ. रुको मिक्स करने. Sorry. I'll mix it for you. Mix it for me? So that you don't have to take any extra effort. Sir, are we ready? रुक जाओ, पहले मैं ट्राई करूँ. काफी कॉन्फिडेंस. हाँ, थोड़ा मीठा कम है, बट पी के देखो. Honest. 8 out of 10. 8 out of 10. सबसे पहले बताइए, इतनी बढ़िया रेटिंग, क्या सबसे अच्छा लगा इसमें? टेस्ट तो थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक है. अगर हेल्दी है तो 10 out of 10. हाँ, हेल्दी तो है. हेल्दी तो पक्का है. मुझे लगता है कॉफी स्विच कर लो और माचा पी लो. ग्रीन टी है ना, ये ग्रीन टी है. और 2 नंबर क्यों काटे आपने? माचा इज पाउडर्ड ग्रीन टी. सॉरी, 2 नंबर क्यों काटे सर? फर्स्ट टाइम था, थोड़ा अजीब लगा. तो आपने उनके नंबर काट दिए. देखो दोस्तों, फर्स्ट टाइम माचा पीकर यही रिएक्शन होता है. फिर जो सब अपने लगे रहते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया है. नो हाउ पीपल आर. और तुम? मैं अब पीने वाला हूँ. आई एम रेडी गाइस. Thank you sir, thank you very much. Please give it up for him for being such a sport. Thank you very much sir. बहुत शुक्रिया. And of course we'll see him on the stage in a short while from now. कैसे? छोड़ो, हम खड़े होकर इंटरव्यू कर लेंगे. Wait. Can somebody please clear this while we do this tasting session here? Okay, so I've had matcha before, just once, Sanya, as I said. But of course वो मेरा पहला और आखिरी बार था. और इस बार हमारे जो मेहमान आए हैं उन्होंने बना के दिया था. I'm sure ये अच्छी ही होगी. सर ने 8 नंबर दे दिए हैं because energy. Yes. Now we are ready. सर वो चलाओ ना, दुक. रियलिटी शो वाली फील आनी चाहिए थी. It's great. It's absolutely lovely. Sorry. बहुत कमाल किया. जोरदार तालियां सान्या मल्होत्रा के लिए, ब्री माचा के लिए. थैंक यू सर. सर ये रखवा दीजिएगा.
आज कुछ तो टूटेगा, I think, by the end of it. यार, ऐसे मनुष्य वाली बातें मत कर। Talking of manhusiyat, let's talk about what Gen Zs are a lot more interested in. We are doing red flag versus green flag. You know, there are a lot of people who are interested in love and... Wow, I didn't expect that. A lot of people are absolutely interested in... दिल्ली वालों खाना love. I'm telling you some situations. I'm telling you some situations. You tell me, is that a red flag or green flag for Sanya Malhotra? Oh my God, I hate it already. Checking your partner's phone just to be sure. Green flag, red flag. Red flag. Red flag. Trust नहीं है तो they're not your partners. What wants to split the bill? Your partner wants to split the bill. हाँ कर लो कोई बात नहीं. Green flag. मतलब फर्क क्या पड़ रहा है? क्या है? Green flag. Green flag. Now if he says that let's split the bill. हाँ Okay. पर एक लिमिट होती है उसकी. यार मेरे एक सेकंड मेरे बाल खराब हो गए क्या? Discusses his relationship problems with his friends. Guys, उनका है. पहले उनका जवाब ले लेते हैं फिर आपका. तो वो अपने दोस्तों से बात ना करे. नहीं, पर अगर वो जाकर वो कह रहा है कि यार उसने आज मेरे साथ ये कर दिया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, like that. But then they come back and you're able to solve that issue together. Oh wow. Then it's okay. I like that. You should like you can get other people's perspective. अब relationship में ठीक है भाई. रिलेशनशिप में थोड़ी ना आइसोलेट कर लेगी हम और हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं हमारे बीच. कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई, बता दिया दोस्तों को. And then he says you're not like other girls. Red flag. A big red sari. What do you mean by I'm not like other girls? Yeah. Get out. बाहर निकल. Doesn't check in with you after you've said you're okay thrice. But of course, you were going to tell the fourth time what was not okay. To be honest, I consider myself to be a really good communicator. Mm-hmm. So I don't wait for them to ask me 5, 4, 6, 7, 8 times. Mhm. If I'm okay, I'll tell them I'm not okay, I need time. Or I'm not okay. देख ये मेरी problems है. Yeah, I don't expect my partner to read my mind. Because of course, mind reader तो कोई नहीं है. किसी को पता नहीं चलता, सब अपनी लाइफ में बिजी है, सबकी लाइफ में खुद के बारे में सोचने को बहुत कुछ है. Right. This is the end of this segment, but I have एक इससे मिलता जुलता question कि you are an actress, of course you do much more than that as well. You're an entrepreneur as well, you're a dancer as well. One profession you would not date. Not at all. And be careful while you reply. One profession, हाँ? Lawyer. तुम लोग लॉ पढ़ रहे हो क्या? बस. लग ही रहा है. नहीं, but उनका जवाब जान लेते हैं. And why I said it's important because you know usually this question is asked from a lot of. मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. क्यों बोलूँ मैं ये सब? क्या पता वही मेरे पत्ते आके लग जाए. क्योंकि वही मैं बोलने वाला था. Because ये बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, जितने भी एक्ट्रेसेस के ये इंटरव्यू देखे उनको वही That's what I was gonna say. Please watch out for your answer because जो हीरोइन अपने इंटरव्यू में बोलती है मुझे ये प्रोफेशन नहीं So I चाहिए. would like to skip this question. Okay. Never say never. Never say never. Lovely. Now we come back to your profession, Sanya. You know, we loved your dance video with Diljit Dosanjh. She absolutely nailed it, right? Thank you. And of course, that led to such a big trend on Instagram. What was your experience with Diljit? Of course, it's a very plain Jane question, obvious question. Sorry for that. But I really want to know what happened when both of you collaborated. What was the energy and synergy like? So before we did that music video, I did an ad with him. And he entered and told me, आपने ना मेरे गाने पे एक डांस रील करी थी और वो गाना हिट हो गया. Wow. Now in my mind I was like, गाना हिट हो गया तो सर आप म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ? सिर्फ रील ही क्यों? But that of course I didn't tell him that. I said thank you so much sir, thank you. And फिर हमने ऐड करी, हम घर चले गए and after a few weeks I got this opportunity. He said I have a song and if I would like to do the music video with him. This was perfect because I absolutely love his music and I love dancing to it. क्योंकि मैं कोई भी नया गाना आता है दिलजीत जी का तो मैं उस पर रील बनाती हूँ और डाल देती हूँ. Never अब कभी सोचा नहीं कि वो
that would open up an opportunity to do a music video with him, which was, we shot that music video in one day. The choreography is by Yash, amazing. I danced on heels for the first time ever, and I absolutely loved it. Maze aa gaye. Lovely. And since you're talking about dancing, you know what's coming next, right? Kya? Can we get the music, guys? Can you teach us like one move, Sanya? Nahi naachungi. Guys, you have to say it together. Dance, 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 dance. Okay. सब मुझे कॉन्क्लेव बुला, अच्छा ये क्यों हम दिलजीत वाला गाना क्यों नहीं चला और राइट्स नहीं है हमारे पास. We had this rights for this one. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है. तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां है किस दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कड जानी है. एने भी नखरे तू करना सोनी है, एने भी नखरे तू करना सोनी है, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं. आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चलनी है, मोरनी बनके, मोरनी बनके. आज फिर किथे चलनी है, मोरनी बनके, मोरनी बनके. संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे. थैंक यू. वाओ. आप सर, आप बहुत प्राउड फील नहीं करती अपने आप पे? मतलब आप सब कुछ कर लेती हैं यार. नहीं सब तो नहीं कर सकती, बट yeah, maybe. Let me ask one genre that you've not touched and you really want to do it. I mean, आपकी I'm already filmography. doing that. Huh? Thriller. Thriller you had not touched, and this is something that we'll see very soon. Yes. हा लवली. बट अब एक बार ऑफ कोर्स इससे पहले हम जब जर्नी की बात कर रहे थे, आपने जब 2016 में स्टार्ट किया और आज बहुत सारी चीजें जो है वो बदल चुकी हैं. But what was that one moment which really defined the career, or let's say added the curve, where you felt okay, hawa badlegi, like things will change? Any one moment where you experienced that? Okay, Before Dangal? no, through the journey. You saw something, some development in your career, in profession, and you saw that, you said, okay, sure, things will change, hawa badlegi. Things would change in my career. Yeah, in profession, in my this profession. industry. मिसेस के बाद Yeah. 9 साल लग गए. पर मिसेस के बाद ऐसा लगा कि yeah, now I think, I don't know, it gave me a lot of confidence. कितनों ने मिसेस देखी है? Wow. और ऊंचा हाथ अगर बहुत पसंद की है. Wow. Give it up for Mrs. as well, and thanks for portraying that character, Sanya. Thank you. Did that, as a woman, did that kind of give you a reality check, because it's a reality of a lot of people? Did that hit you, or did that give you a sad and bitter feeling that, oh, this is the reality of so many women? I do feel it moves me whenever I meet a woman and she tells me that this is my story, I have been through it, or I'm going through it. I don't want anyone to relate to that part of Richa's life. But it really makes me happy, because as an audience, when I see a character on screen that I can relate to, that resonates, it just makes you feel seen and important, right? And Richa was, it was such a character. Like, women saw themselves in her and related a lot with her journey. I hope it has inspired a lot of women. Right. My last question, and before that, you can also prepare your question. We'll take just one audience question. Man, my question would be, what would you tell 2016 wali Sanya, if you have to give a message from 2026 to that 2016 wali Sanya Malhotra? Yesterday, I thought about this, and I thought I would not tell her anything. I'm so proud of my 2016 self. I'm so proud of my past self. I have no advice for her. कोई बात नहीं, तू कर ले गलतियाँ, तुझे जो करनी है, जो गलतियाँ करी तूने आज तू सीखी है, and you have come a really long way, और उन्हीं गलतियों से सीख कर आयो. So if I give her an advice and I'll tell her, skip this, don't do that, I don't know, I might be snatching an opportunity from her to learn something new.
So I have no advice for my 2016 self. Okay, we'll take that as a message. I'm sorry I committed for an audience question, but I'm told we are absolutely out of time. We've run out of our time. So sadly, we'll have to end this session here, but it was so enlightening, so Thank you. energetic. I'm quite sad. I don't want to go. But I have Same. We can't let you go. Before she goes, okay, can we quickly take that one question, please? Very quickly. Not more than 30 seconds, ladies. Okay, I think you've got an opportunity in some other session. Can I give it to her, please? Can the mic reach? आप खड़े होके बोल दीजिए. Okay, mic पहुंच गया आपके पास. All right. Hi, first of all, good evening. Hi, good evening. Hi. So basically, I'm a literature student and I know how emotions play such an important role in storytelling, narration. So I just want to ask you this quick question. What is the impact of emotionally packed scenes while you're shooting them? Is it like something cathartic, or is it something that you've turned indifferent to over the years because, obviously you're in this profession, so it does happen a lot of times? No, I'm quite empathetic. I have no boundaries. And yesterday I realized that I have no boundaries at all. Because this character that I'm playing now in Sundar Poonam, I thought that I will switch off when I'm off set and I'm not in front of the camera. And it is a really emotionally heavy character. Like, I have to think like someone that I'm not. As I said, like, I can't empathize with her because she doesn't empathize with anyone. So I didn't realize that it was, of course, when you're constantly thinking like a character, it does play with your psyche. So it's very difficult for me to be indifferent or not get characters back home, or sometimes because you're inducing those emotions, so of course your brain doesn't know the reality. So आप जो feed कर रहे हो, that becomes your reality. So, yeah. All right, ma'am. Thank you. And lastly, you also striding into anchoring now. Yes. मतलब अब आप anchors की भी नौकरी खाएंगी. Guys, yes, I am a quiz master on this Jio Hotstar show called HP Smart Champs. I did a quiz show for kids. Exciting. Which was so exciting. बड़ा मजा आया. And I tell you, fun fact, guys, I'm a master manifestor. A week before that show came into my life, I was thinking, yeah, Born Vita quiz contest देख के कितना मजा आता था. कहाँ गए वो दिन? And cut to, I got that opportunity, and I latched onto it. I was like, I have to do this. Lovely. We'll watch that. We'll watch Sundar Poonam. We'll also buy Brie Matcha. जरूर. We'll love everything that you do, Sanya. बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और इसी के साथ ही we've come to the end of this conversation. Give it up for Sanya Malhotra. Thank you. Thank you very much. Thank you. Huge round of applause for the very radiant, incredibly talented Sanya Malhotra. Can we show some enthusiasm? She was so kind enough to even bake that matcha, which my co-host even tried. A huge round of applause. All right, ladies and gentlemen, I would try to give out this dialogue, and I hope I go correct. Go ahead. Okay. कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है. Do you girls agree? कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है. He does it better. Joining us are now two powerhouse athletes who have not just represented India but dominated the Asian stage. Absolutely. Please welcome with a round of applause Priya Gangas, gold medalist, Asian Boxing Championship. Round of applause, please. Arundhati Chaudhary, gold medalist, Asian Boxing Championship, in conversation with the NDTV's Preeti Daya. Please have your seats. Thank you very much. Thank you so much once again. रहेशा ने बोला कि म्हारी छोरी के छोरा से कम है. भाई म्हारी छोरी छोरा से बहुत आगे जा चुकी हैं. अब लिए छोरों को इंस्पायर करती हैं. एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ. एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 20 बॉक्सर्स का कंटिंजेंट गया था. 16 मेडल आए इंडिया के. 16 medals. Okay? We got 16 medals, out of which
5 were gold medals and 4 were won by girls, and 2 of the gold medalists are sitting in front of you. Can we see your medals? Beautiful. There you go. तो हमारी छोरी तो छोरा से बहुत आगे निकल चुकी हैं. एंड प्रिया, घांगस, अरुंधति, आप दोनों का बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को गोल्ड मेडल जीतने के लिए. और बारी बारी करके पहले अरुंधति आप बताइए, बॉक्सिंग फिजिकल स्पोर्ट है या मेंटल स्पोर्ट है? If I say both physical and mental, because स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतनी इंजरीज होती है एंड एट द लास्ट यू हैव टू यूज़ योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द एशियन चैम्पियनशिप, आई वॉज ऑल्सो इंजर्ड, but I tried to be mentally strong and the result is here only. Wow. Mental strength बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. In a combat sport, it's extremely important that you stay tough here. And what keeps you tough? क्योंकि प्रिया तो मेरी कंट्री कज़न भी है, हम दोनों हरियाणा से आते हैं. प्रिया कभी माचा ट्राई करी है या दूध दही का खाना ही है अपना हरियाणा? दूध दही का खाना ही है मैम. तो ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है प्रिया, ये बताइए हमें. हरियाणा में तो मैम जन्म से ही दूध दही खाना है और इसी से चलता आ रहा है. बहुत हरियाणा के बच्चों में एक अलग ही पावर आती है शुरू से ही. मतलब वो बहुत ही टफ, उनका माइंडसेट भी बहुत और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो अरुंधति, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या लाइफ भी बॉक्सिंग जैसी है? आर देयर एनी पैरेलल्स दैट वी कैन ड्रॉ विद लाइफ एंड बॉक्सिंग? व्हाट विल दैट बी? Yes, we can say that because in boxing also sometimes we have to use our brain at the high level कि अभी punch आ रहा है and I have to defend and I have to attack. And same situations in the life, इतना हाईली स्पीड से प्रॉब्लम्स आती है और ऑन द स्पॉट हमें आंसर लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है. तो यस, आई कैन से थोड़ा थोड़ा बॉक्सिंग इज एडेड इन द लाइफ. तो लाइफ में ऐसा कोई बॉक्सिंग वाला मोमेंट आया जब आपको पंच करना पड़ा अबव योर वेट एंड यू हैड टू गेट आउट ऑफ अ टफ सिचुएशन? दैट्स वेयर योर एथलीट माइंडसेट किक्ड इन दैट नो, आई कैन डू दिस. Yes, that incident helped me to come in the boxing because my father hardly wants me to be cross the IIT as I'm from Kota. But जब स्कूल में मैंने एक लड़के को अच्छे से मारा तो he decided कि okay now तो she will go in the boxing. अच्छा, क्यों मारा वो भी कहानी बता दो. Because वो मुझे वाटर बॉटल नहीं फिल करने दे रहा था and जिनका टीचर का पीरियड था and she was very strict and I don't want to be myself कि उनसे जाके थप्पड़ खाना या कुछ. अपने आप को डिफेंड करने के लिए. Okay, so that is where you got identified कि भाई इसमें एक कैलिबर है, ये किसी से पंगे नहीं लेगी, लेकिन जब आएगा समय तो फिर पंच अच्छा लगा देगी. Yes, my father told me कि okay, if you don't want to do IIT, then I'll tell you the profession boxing. और boxing में you will beat and you will not get the punishment, you will get the achievements. And he told me that you should join the boxing, and because of him, I joined the boxing. Well, big round of applause for the father who identified that in his daughter we are going to get a gold medalist in the Asian Championships. प्रिया, आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? कब आपको लगा कि मुझे बॉक्सर बनना है, या किसने आइडेंटिफाई किया कि आप में वो बॉक्सिंग वाला कैलिबर है? मुझे शुरू से ही गेम्स बहुत पसंद थे. हरियाणा में होता है कि गेम्स में बच्चे सबसे आगे ज़्यादा जाते हैं, तो मुझे भी शुरू से ऐसे ही था कि अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आना है. तो बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें अपन खुद का मेंटली और फिजिकली वर्क करते हैं. तो मैंने ऐसे ही सोचा कि बॉक्सिंग में हम मेंटली और फिजिकली वर्क करेंगे, अपने खुद का जुनून यूज़ होगा इसमें. तो मैंने सोचा कि एक इंडिविजुअल गेम है और इसमें अपनी खुद की आन बान और शान बनेगी, तो इसलिए मैंने बॉक्सिंग को चूज़ किया. और आपके घर में और भी हैं जो आपसे पहले बॉक्सिंग करते हैं? मेरा बड़ा भाई है वो भी बॉक्सिंग करता है, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. स्पारिंग प्रैक्टिस आपने भाई के साथ की? हाँ जी बिल्कुल. जब कोविड चल रहा था तो हम दोनों बहन भाई घर पर प्रैक्टिस करते थे. अच्छा, तो ये बहन भाई जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ बाकी घर वालों में खौफ है कि भाई ये दोनों बहन भाई तो बस अब टूट पड़ेंगे हम सब पे. अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी ऐसे देखा आपको, यार इनसे दूर होके चलो? नहीं वैसे तो नहीं, पर हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी उस समय. मुक्के किसको ज़्यादा पड़े हैं? उस टाइम तो वो बड़ा हो गया था तो उसी ने ज़्यादा मारे थे, उसमें पावर ज़्यादा थी मैम. Okay, तो प्रिया आप भिवानी से आती है ना? By the way, to tell the audience, Bhiwani is considered to be the boxing factory of India. This is where we generate the maximum number of boxers in our country, and Priya is representing that district only. तो भिवानी में जब ये सब हो रहा है आसपास, इतने सारे वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स निकल रहे हैं, कोई एक शख्स ऐसा जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? विजेंदर का कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है? बिल्कुल. जब 2008 में विजेंदर का ओलंपिक में मेडल आया था तो उस समय बहुत इंस्पायर हुई थी मैं कि इनका मेडल आया तो हम भी अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ किए. 2008 में? हाँ जी बिल्कुल. छोटी उम्र थी आपकी उस टाइम पे?
7-8 साल के कुछ। ओ वाह, 7-8 साल की उम्र में आपने विजेंद्र की फाइट देखी? हाँ, फाइट नहीं, बस सुना था मैम, उस समय हाँ। इतना वो कुछ नहीं था। ओके, तो वो आपको इंस्पायर करके इस मंच जी तक मैम, लेके आए। बिल्कुल। चलिए, सो अब यू नो प्रिया, आई वांट टू नो अबाउट दैट मोमेंट। हम सब ये टीवी पे देखते हैं और आप सबके साथ हम लोग वो मोमेंट जीते हैं जब नेशनल फ्लैग ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है, आप लोग सब पोडियम पे होते हो। इतनी खुशी उस पल के बारे में सोचकर भी महसूस होती है। एज एन एथलीट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग व्हेन यू हियर योर नेशनल एंथम एंड यू आर वेयरिंग दैट गोल्ड मेडल, सबसे ऊपर पोडियम पे खड़े होके? जस्ट एक्सप्लेन टू अस व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड। Possible to say that? Arundhati? Yeah. Actually, I'm doing boxing from last 9 years, and my only dream is to, whenever I go to international podium, I want to see my flag should be on the first. And yes, many times I got the chance that my flag is on the first number. And that time when flag goes up, and I was just remembering whatever I struggled for that, whatever sacrifices, each and everything. And I feel very proud ki yes, my father take very right decision, and I'm here and flag is on the first number. And even I'll share this, that I'm from Indian Army also. Wow. So this is double pride for me. Wow. I mean, a big round of applause for that. प्रिया, अगर आपसे मैं पूछूं, जब वो लम्हा आया कि भाई आप पोडियम पे खड़ी हैं, आप गोल्ड मेडल रिसीव कर रही है, पहला ख्याल क्या आया था दिमाग में? किसी को कॉल करना था, किसी के साथ अपनी खुशी शेयर करनी थी, या व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब कंफर्म हो गया कि आपका गोल्ड मेडल है? सबसे फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा यही था कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेरी माँ बाप की याद आई थी वहाँ पर पोडियम पर चढ़ते ही कि आज उनके साथ की वजह से आज मैंने ये सब कुछ हासिल किया है। और सेल्फी ली थी? हाँ जी मैम, सेल्फी भी ली थी। वो मेडल बाइट करते हुए सेल्फी है, वो वाली ली थी? यस मैम। आप लेते हो सेल्फी अरुंधति? Yes, और सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं हमारे बॉक्सर्स? में ये जानना चाहती हूँ अरुंधति, इफ यू कैन टेल अस। मैं मतलब करने की कोशिश करती हूँ, बट फ्रॉम लाइक फेडरेशन और फ्रॉम माय स्पॉन्सर कंपनीज आ जाता है कि योर टारगेट इज ओलंपिक, नॉट सोशल मीडिया, सो बी अवे फ्रॉम दैट। वो वार्निंग आती रहती है। प्रिया, आपको अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना? यस मैम, मुझे रील देखना बहुत पसंद है। आई थिंक इस जनरेशन का फेवरेट टाइम पास है रील स्क्रॉल करते रहना। यस मैम, बिल्कुल। पर मैं इसको सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन नहीं मानती, बिल्कुल भी। क्या नहीं मानते? डिस्ट्रैक्शन नहीं है? नहीं, अच्छा। बिल्कुल भी। कई ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया चलाने से डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ। लेकिन मैं अपनी फाइट से पहले मैं कुछ नहीं सोचती, मैं रील देखती रहती हूँ अपने आराम से। तो ये क्या एक माइंड नंबिंग टेक्निक है कि ये फालतू की रील स्क्रॉल करते रहो, दिमाग में कुछ और डर वर नहीं आएगा, ऐसा भी है? बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। ऐसे अगर हम कुछ आराम से बैठेंगे तो हमें फाइट की याद आएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अपने रील देखो, जो कुछ होएगा देखी जाएगी आगे। ये भी अच्छा एटीट्यूड है। सो अरुंधति, अगर हम फाइट की तैयारी की बात करें, आपको पता है आपके सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स आने वाले हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर्स होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है आपकी फ़ाइट से पहले। तो वो दबाव होता है, और किस तरह से आप उस दबाव को हैंडल करते हो, या क्या मेंटल प्रिपरेशन होती है एक बॉक्सर की? एक्चुअली ओपोनेंट्स तो काफ़ी टफ आते हैं। इवन सीनियर लेवल में कुछ ऐसे ओपोनेंट्स होते हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और लाइक मैं अपना माइंड ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि आई हैव ऑल्सो 9 मिनट्स एंड सामने वाले के पास भी 9 मिनट्स। तो भी लास्ट टाइम इतना हार्डवर्क किया, आई हैव टू शो इट हियर, बिकॉज आई जस्ट बिलीव इन द वर्क, नॉट इन द रिजल्ट कि अभी रिजल्ट क्या आने वाला है। मुझे ये रहता है मैंने जितना सीखा, आई हैव टू गिव माई ऑल हियर, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द रिंग कि यार खास थोड़ा और मार लेती तो आज जीत जाती। आई जस्ट वांट टू पुट माई 100 ऑन द रिंग। अच्छा, और सबसे खराब चोट क्या लगी है आज तक किसी बॉक्सिंग बाउट में? चोट का तो मैं पूरा भंडार हूँ, आई डोंट वांट टू शेयर। फिर बिकॉज विदाउट बॉक्सिंग ही मेरे को ब्लड क्लॉट हुआ सिर में, 2 टाइम ब्लड क्लॉटिंग है। I have surgery of my wrist, even both knees are ACL 2nd grade, 7 years तक stress fracture ankle में। तो And you are only 23? Yes. तो you can ask me कि यहाँ पर इंजरी है क्या, तो I will say yes है मुझे। मतलब कोई भी बॉडी पार्ट हो, अगर पूछा जाएगा पॉइंट करके कि इंजरी है क्या, आपको पता है कि है। तो प्रिया, आपके लिए जो ये प्रिपरेशन की हम बात कर रहे थे कि भाई सामने वाला ओपोनेंट बड़ा तगड़ा होने वाला है, और आप लोग बहुत छोटी उम्र से ये सब प्रैक्टिस करते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जोनल लेवल हो गया, फिर स्टेट, नेशनल, और फिर आप एशियन चैंपियनशिप्स तक पहुँचे हो। तो कैसे तैयारी होती है मेंटली? आपने बोला कि मैं तो दिमाग को नम कर लेती हूँ, रील स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन क्या ओपोनेंट का कभी कोई वीडियो वगैरह देखते हो देखने के लिए कि कैसे वो खेलेंगे? हाँ जी मैम, ओपोनेंट का वीडियोस हमारे कोचेस भी दिखाते हैं फाइट से पहले दिन, वो भी हमें स्ट्रेटजी बनाते हैं।
बनवाते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है। मतलब कोचेज हमें बताते हैं कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, तो हमें हमारे माइंड में बस एक ही चीज़ रहती है कि हमें अपना बेस्ट देना है। कोचेज ने जो ट्रेनिंग करवाई है उसके ऊपर हमें अपना बेस्ट देना है और हम बेस्ट ही दिया अभी, इसलिए देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। और कौन सी बेस्टेस्ट चोट लगी है आपको? मेरे मैम रिस्ट इंजरी थी मैम पिछले साल। इंजरी। हाँ जी मैम। तो रिस्ट इंजरी कैसे होती है बॉक्सर को? अपनी टेक्निक खराब होने की वजह से या फिर पंच गलत लैंड कर जाए, कैसे होती है? हाँ जी मैम, पंच गलत लैंड कर जाए तो भी हो जाती है और कई बार मुट्ठी अगर खुली रह जाती है पंच मारते वक्त तो भी हो जाती है। इम्पैक्ट से होती है? हाँ जी मैम। और आपने सबसे खराब इंजरी किसी को क्या दी है आपने सामने वाले को? नहीं मैम, ऐसी तो कोई नहीं थी मैम। किसी की आंख वगैरह काली नहीं हुई आपकी वजह से? नहीं मैम। नहीं। और आपने कभी रियल लाइफ में अपनी बॉक्सिंग को यूज़ किया है? नो मैम, अभी नौबत नहीं आई है। तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद से अरुंधति आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको देखा जा रहा था एज एन अपकमिंग बॉक्सर, क्या लोगों का नज़रिया बदला है? क्या अब आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं? किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है? यस, एक्चुअली जैसे कोटा राजस्थान है, राजस्थान में तो स्पोर्ट्स छोड़ो, बॉक्सिंग तो मैं नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि अभी मेरे बाद मुश्किल ही कोई लड़कियाँ निकलने लगी है। बट द हार्ड थिंग वाज कि मेरी फैमिली में भी मैं अकेली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो अकेले स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है? फॉरगेट अबाउट बॉक्सिंग। सब डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये सभी है। तो बट मैं हैप्पी इस चीज़ से हूँ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली में जितने भी वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू कि बहुत अर्ली एज में शादी हो जाता है, बट अभी जब मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है तो उसके बाद काफ़ी हमारी फैमिली में चेंजेस है। इवन नॉट आई कैन से फैमिली, मेरे पूरे स्टेट में आई कैन से, क्योंकि अभी कहीं के पेरेंट्स मेरे फादर को कॉल करते हैं, दे वांट टू बी कि हेलो मिस्टर सुरेश चौधरी, माय बेटी वांट्स टू बी लाइक अरुंधति, सो प्लीज़ गिव अस गाइडेंस। आई थिंक दैट रियली डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अपलॉज फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमारी जो लड़कियां हैं ना वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रास्ते खोल रही हैं और यही एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है। गोल्ड मेडल रखे रह जाते हैं, सिल्वर मेडल रखे रह जाते हैं, लेकिन जो आप छोड़ के जा रहे हो एज एन एग्जाम्पल वो हमेशा यादगार बना रहता है। प्रिया, आपसे अब जो एक्सपेक्टेशंस है, आप सिर्फ 20 साल के हो और इंडिया में भी बहुत कॉम्पिटिशन है वुमेन बॉक्सिंग में, आपने देखा है। आपके लिए इंडिया में सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है? कोई है ऐसे दिमाग में कोई, या फिर कोई आइडल आपका जिन्हें आप एक बार compete करना चाहें? हाँ जी मैम, बिल्कुल। परवीन हुड्डा है, वो एक ओलंपियन प्लेयर हैं और वो एशियन गेम्स में उनका ब्रॉन्ज मेडल है, तो मैंने उनको हरा कर एशियन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन लिया था आपकी असेसमेंट। तो ऑलरेडी ये तो हो ही चुका है। जी मैम। कमेंडेबल। और लोगों का रिएक्शन कैसा है आपकी जीत के बाद? क्या सबको लग रहा था कि यार ये तो लड़की अच्छा करेगी, तो आप अच्छा कर रहे हो, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर लोग एक्साइटेड है? अब कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं, एशियन गेम्स आएंगे, LA में ओलंपिक्स होंगे 2028 में, किस तरह का फीडबैक है? हाँ जी मैम, मुझे अच्छा लगा कि कोचेज ने मुझे यंग बॉक्सर के रूप में भेजा और मुझे बस उसको प्रूव करने की जरूरत थी और वो मैंने करके दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से यंग बॉक्सर काफ़ी जागरूक होंगे और अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बनाएंगे। राइट। सो चलिए अब मैं आप दोनों से थोड़े से क्वेश्चंस पूछती हूँ। आप उसे मतलब जस्ट नॉकआउट माइंडसेट जो है हमारे चैंपियंस का वो मुझे पता करना है। तो अरुंधति आपसे शुरू करती हूँ। प्री मैच रिचुअल क्या होता है आपका? मैच से पहले क्या करते हो? ठीक पहले फर्स्ट तो अपने पेरेंट्स से बात करना है, बिकॉज मुझे लगता है मेरे फादर से ज़्यादा कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता है, एंड सम इमोशनल स्टोरी अबाउट माई मदर ऑल्सो, तो मैं उन दोनों से बात करना अपना मेन समझती हूँ। एंड लिटिल बिट प्रेयर ऑफ बजरंगबली, बिकॉज शक्ति तो वही देने वाले हैं एट द लास्ट। और वो बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले कुछ रिचुअल है? नथिंग मोर, जस्ट आई स्टेप्ड इनटू द रिंग एंड जय बजरंगबली की एंड आई स्टार्ट। ग्रेट। एंड व्हाट इज योर लकी चार्म? माई लकी चार्म, whenever I think कि अभी थोड़ा फाइट मैं लॉस कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू से कि नहीं, जय बजरंगबली के आगे चल, गोल्ड लेकर जाना है। आई यूज टू से लाइक दिस। ओके। एंड कोई पंप अप सॉन्ग ऐसा जो आप अपने साथ रखते हैं, हमेशा प्ले करते हैं बिफोर यू एंटर अ फाइट? एक्चुअली मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ, बिकॉज वो मुझे स्ट्रेस दे देता है। बॉलीवुड? यस, बॉलीवुड, पंजाबी, एनी कोई एक गाना गा दो। लाइक दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फिर भी कुछ लाइनें किसी आपके फेवरेट सॉन्ग की जो आप हमें बताना चाहो। कौन सा सॉन्ग सुनते हो आप ऑन द लूप? आई कैन से आई यूज टू लिसन द ढांडा न्यूली वाला सॉन्ग, इज द पंजाब हरियाणवी सिंगर। अच्छा। सो यस, एंड एज आई एम अ जाट, आई डोंट वांट टू बी से एनीवन एल्स फ्रॉम माई सेल्फ। आई जस्ट फील अ लिटिल बिट प्राउड ऑन द जाट, सो आई यूज टू लिसन द जाट सॉन्ग्स एंड दैट गिव मी द लिटिल मोर पंप। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो मैं प्रिया से भी पूछती हूँ। प्रिया, आपका प्री मैच रिचुअल क्या है? क्या करते हो ठीक मैच से पहले? मैम, मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सॉन्ग से, तो मैं जैसे जाने से पहले भी गाने सुनती हूँ,
वहाँ पहुँच जाती हूँ तो भी गाने ही सुनती रहती हूँ। कौन सा गाना है? अब आजकल तो बोल रहे हैं कि भाई हरियाणवी रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, मन साम साम रखे झांझरा के She जोड़े। used to listen the Baron song every time. Baron song. And that is not like of कि आप डांस कर सकोगे. That is love song. Something. तो वो बैरन वाला ज्यादा अच्छा है या बैडी बैरन अच्छा है? What is प्रिया गांगस? बैडी? नो मैम, बट सेम डांडा नोनी वाला बेस्ट सॉन्ग, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनके सॉन्ग से, बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आग लगा दो चट दे रिंग में। अरे वाह, अरे वाह। और आपका लकी चार्म क्या है? गॉड को ही मानते हैं मैम। कोई एक पर्टिकुलर कोई भगवान को आप मानते हैं या हाँ जी, कोई खाटू चीज अपने श्याम साथ को। रखते हो कुछ? हाँ जी, खाटू श्याम जी को मानते हैं। चलिए चलिए, मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं अब 2 वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर्स के साथ बैठी हूँ, एशियन में अपना गोल्ड जीत के आई है, तो मुझे कुछ बॉक्सिंग सीखनी है आप दोनों से, ठीक है? तो बॉक्सिंग ग्लव्स हमारे साथ अरेंज किए गए हैं और स्पारिंग पार्टनर मेरी कौन बनेंगी? आई थिंक अरुंधति ने मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी, तो मैं ग्लव्स पहनूंगी और आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा पंचेस सिखाइएगा। फेस कवर करना है, सबसे पहले फेस कवर करना है। If you will not cover your नहीं, आप में कॉन्फिडेंस है तो रहने दो मेरे को। आप मेरे कॉर्नर में आ जाओ मुझे बचाने के लिए। left, straight. 2, 1, 2. Hook. Okay. Okay. चलो, let's do this fast one. Uppercut, huh? Thank you. Perfect. बहुत ज़बरदस्त बॉक्सिंग एक्शन है, मुझे ऑलरेडी कंधों में फील हो रहा है, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी मुझे घर जाके। प्रिया, आपने कभी करी है ऐसे स्पारिंग प्रैक्टिस किसी के साथ जो मतलब मजाक में आपके साथ सीख रहा हो और आपने फिर उसको दे दिया हो, कुछ है ऐसे? हाँ जी मैम, बिल्कुल ट्रेनिंग टाइम पे हो जाता है ऐसे, कई बार मजाक में चलता है। तब तो आपने किसी ना किसी की आँख काली करी होगी। नहीं, आँख तो काली नहीं, पर ऐसे चक्कर वगैरह तो आ गया था। चक्कर वगैरह आना बाय द वे बहुत नॉर्मल मान रही है। चलिए, तो अपनी दोनों चैंपियन बॉक्सर से अब मैं पूछना चाहूँगी फाइनली कि आगे की तैयारी कैसी है? अरुंधति, अब बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में जब आप गोल्ड ले आते हैं तो फिर हम सब की तो उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आगे आपका किस इवेंट पे अब ध्यान रहेगा और कैसी तैयारी चल रही है? अभी मेन टारगेट तो कॉमनवेल्थ गेम्स है। एज जो भी एथलीट है उनका ड्रीम तो ओलंपिक्स गोल्ड ही रहता है, बट वो तो रूफ है, उस तक जाने के लिए वी हैव टू क्लाइम द स्टेयर्स। और अभी स्टेयर्स पहला तो कॉमनवेल्थ गेम्स है, आफ्टर दैट एशियन गेम्स, एंड दोनों का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा चल रहा है हम लोगों का, तो होप वी विल डू वेरी बेस्ट। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। अरुंधति, प्रिया, आपके लिए क्या है नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट और तैयारी के बारे में बताइए। नेक्स्ट टारगेट मैम यही कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स हैं, उसके लिए मैं और हार्ड वर्क करूँगी ताकि मैं अपने देश को मेडल जिता सकूँ। और मैं एक युवा बॉक्सर हूँ, आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं देश के लिए मेडल दिलाऊंगी, तो सभी को याद रहेगा कि एक युवा बॉक्सर थी जो इंडिया में वो देश के लिए मेडल लेके आई थी। वाओ, वेरी नाइस, गिव इट अप फॉर आवर युवा बॉक्सर्स, अरुंधति चौधरी, प्रिया गांगस। व्हाट अ फैबुलस सेशन, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम सब की तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले आपके चैंपियनशिप्स के लिए। थैंक यू सो मच। अपना मेडल एक बार दोबारा दिखा दीजिए सबको, एंड कैन वी प्लीज हैव अ बिग चेयर फॉर आवर बॉक्सर्स।
Thank you. We've had the boxing champions, and now we have the champion wrestler taking the same spirit forward. Now, from Akhada to the world stage, our next guest has defined what it means to be the best, because he is unbeatable at what he does. Please welcome, with a round of applause, world champion UWW men's freestyle 65 kg, Sujit Kalkal. Please, Ayya. सुजीत, थैंक यू अरुण। तो अभी अभी आपने देखी मुक्कों की ताकत, अब बारी है दाव पेच की ताकत की। मैं बस बीच में पानी पीने गई थी क्योंकि बैक टू बैक इतना ज़्यादा कॉम्बैट एक्शन हो जाता है। तो हरियाणा के छोरे जो हैं वो मिट्टी से उठते हैं और दुनिया को पटखनी दे देते हैं। भारत में जब भी कुश्ती की बात होती है, अखाड़े की मिट्टी, सुबह की धुंध, धप की आवाज़ हम सबको याद आती है। और हरियाणा वो सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट की ऐसा लगता है कि फैक्ट्री लगी हुई है। आज हमारे साथ एक ऐसा ही नाम है जो उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। प्लीज वेलकम वर्ल्ड नंबर 1 इन 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट सुजीत कलकल। Boys and girls, ladies and gentlemen, it's the world number 1 sitting in front of you. रोज रोज ये प्रिविलेज मिलता नहीं है और भारत को भी ये प्रिविलेज हर साल नहीं मिलता है। काफ़ी लंबे गैप के बाद सुजीत, इस वेट कैटेगरी में हमारा एक रेसलर जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी। और मुझे ये बताइए कि अब वर्ल्ड नंबर 1 होने की फीलिंग कैसी होती है? मैं कभी नहीं बनी, मुझे पता नहीं है। ये देखो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो मेरी वजह से हो चाहे कोई भी हो, हमारा देश का झंडा ऊपर रहना चाहिए, बस ओवरऑल बात ये है। तो बहुत खुशी की बात है देशवासियों के लिए भी और मेरे लिए भी। बिल्कुल, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश से इस वेट कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन एज एन एथलीट, एज अ रेसलर, आपके लिए क्या ये प्रेशर की बात है कि अब आप इस वेट कैटेगरी में नंबर 1 है, लोग बेहतर तैयारी करके आएंगे आपके सामने, वो प्रेशर आता है? नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो हर चीज़ में, चाहे कंपटीशन हो या कोई भी, जैसे वर्ल्ड नंबर 1 है तो भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है, पर जो उस चीज़ को मैनेज करेगा, जो उसको मतलब एक सही डायरेक्शन देगा, वही चैंपियन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस साल के बारे में बताइए, 4 महीने लगभग खत्म हो गए हैं, एक भी हार मिली है कहीं पे भी? नहीं, अभी टच वुड एवरीवन, नॉट अ सिंगल डिफीट इन दिस ईयर। ग्रेट। तो ये जो मोमेंटम मेंटेन करना होता है कि भाई अब मैं ना, ऐसे बोलते हैं कि गाड़ी निकल चुकी है, अब ये किसी स्टेशन पे रुकेगी नहीं, सीधा ओलंपिक गोल्ड के लिए रुकेगी। कोशिश कर रहे हैं जी, बाकी भगवान की दया है जी। बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि रेसलिंग में हमें गोल्ड मेडल मिले, और ये बहुत समय भी लग गया है। कभी इसके बारे में सोचा है कि इतने ज़बरदस्त पहलवान है हमारे देश में, इतने अच्छे कुश्ती अखाड़े हैं और हम एक के बाद एक मेडल निकाल रहे हैं ओलंपिक्स में, लेकिन गोल्ड नहीं आ पाया है? देखो जी, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं। तो जैसे हमारे देश के और दूसरे देश के अगर कंपैरिजन करें तो हार्डवर्किंग में हमारा देश नंबर 1 है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये हमने देखा भी है। बट जो लिटिल बिट जो वो है कि टेक्निक वाइज है, थोड़ी जो समझ हमारे रेसलर्स में थोड़ी बहुत अगर टेक्निक वाइज आ जाएगी तो हम गोल्ड भी जीतेंगे। बिल्कुल, हम गोल्ड जीतेंगे और आपके थ्रू ही ये सपना हम पूरा करने की पूरी प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, हमें पता है कि आप कोशिश करेंगे। आपका फेवरेट रेसलर कौन है? मेरा ऐसा कोई मतलब पर्सनल कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं सभी रेसलर को जितने भी मतलब भारत से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं? नहीं, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि इतना मतलब मैं फॉलो सबको करता हूँ कि भाई हाँ कुश्ती देखता हूँ सभी की, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई रेसलर नहीं है कि भाई हाँ यही। और आप खुद ही अपने फेवरेट है? बिल्कुल। दैट्स द एटीट्यूड, क्योंकि जब आप खुद ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको किसी और को फेवरेट बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ये बोलें कि इंटरनेशनली जितना आपको एक्सपोजर मिला है अभी तक, क्या कोई एक ऐसा दिन है जो अभी तक के आपके सफ़र में सबसे ज़्यादा यादगार रहा है? कोई एक ऐसी जीत जिसको हासिल करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपने सोचा हो कि अब मैं आ गया हूँ, नाउ आई हैव अराइव्ड, इसके आगे सिर्फ मैं ऊपर ही चढ़ूँगा? देखो जी, अभी कंटिन्यू हम जीतते आ रहे हैं, तो इसी से हमें मतलब हमको बूस्ट मिलता है कि भाई हाँ कंटिन्यू जीते रहे हैं तो मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं।
बाकी कोशिश कर रहे हैं जी, देने वाला तो भगवान ही है और आगे भी कोशिश करेंगे। चलो अपनी कहानी आप हम सबके साथ शेयर करो। कहाँ से शुरुआत की, किस उम्र में शुरुआत की और रेसलिंग में आना? हमने बहुत सारी दंगल की कहानियाँ सुनी हैं, सान्या मल्होत्रा थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने उनसे बात भी की कि लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कुश्ती में आना, पहलवानी करना, लेकिन हरियाणा के लड़कों के लिए क्या बहुत आसान है? मतलब अगर आसान होता तो हर कोई घर में एक मेडलिस्ट होता। तो आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? देखो जी, मेरे पापा जो हैं वो भी रेसलर हैं, वो भी इंटरनेशनल रेसलर हैं, तो उनका भी सपना था कि वो भी ओलंपिक में देश के लिए जीते, लेकिन ठीक है वो नहीं कर पाए। पर अब जब मैं 5-6 साल का था तभी से पापा ने इसी फील्ड में मेरे को रखा था और ये कह रहे हैं कि स्टडीज़ भी जो मतलब ज़रूरी हैं, वो उनका, मेरे पापा का ये सपना था कि भाई रेसलर ही बने। लेकिन ये अब मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं पढ़ाई में क्यों डाला, तो बताते हैं कि भाई ये भी एक सबसे मेन जो हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, वो है एजुकेशन। रेसलिंग तो बाद की बात है। और मैं आप सबको बता दूं कि क्लास 12 में इन साइंस सब्जेक्ट्स नॉन मेडिकल 80% मार्क्स आए हुए हैं सुजीत कलकल के। तो ये ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू बच्चा नहीं था, पढ़ाई भी करते थे और उसके साथ साथ कुश्ती भी करते थे। तो 12वीं के बाद क्या वो जिसे बोलते हैं ना दोराहे पे आई थी ज़िंदगी, कुछ चॉइस आपके हाथ में थी कि क्या स्टडीज़ में जाना है या रेसलिंग में जाना है, ये चॉइस थी? नहीं, देखो ये चॉइस भी पापा की थी। अगर पापा बोलते कि पढ़ाई कर ले तो मैं पढ़ाई भी कर लेता और उसमें भी मैं कुछ ना कुछ करता ज़रूर, मेरे को ये लगता है। पर जो 12 साल थे वो जो बचपन के जो स्कूल के थे, वो भी बहुत मतलब अगर वो ना होते तो मैं मतलब इतना सब कुछ नहीं सीख पाता। तो माइंड तो देखो बहुत काम, जैसे इन्होंने बॉक्सर ने भी बहनों ने बताया कि मेंटल गेम तो देखो सारे हैं, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो हमारे जितने जो रेसलर्स हैं वो थोड़ा मतलब बचपन से अखाड़ों में डाल दिया जाता है उनको, तो इतना मतलब पढ़ाई की ओर नहीं जा पाते वो। तो ये भी एक वीक पॉइंट है। अगर आप बात कर रहे थे कि जो कंपैरिजन करें हम, बाहर के रेसलर पढ़ाई भी करते हैं अपनी कंप्लीट और रेसलिंग भी करते हैं। मैं जैसे जापान मेरा एक्सपोजर था तो मैं उधर देखता था ये चीज़ें। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ भी रहे हैं और वो ओलंपिक चैंपियन भी बने हैं। तो इसमें हमारा थोड़ा इंडिया थोड़ा पीछे है कि वही। वाह, तो अगर आप रेसलर नहीं होते तो आपने कभी सोचा है कि क्या करियर चूज करते हैं आप? कुछ ऐसा है जो अभी भी सपना पूरा करना चाहते हो? सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला जी। बचपन से जब ये मान लो पैदा हुए थे तभी इस फील्ड में है। तो एक्टिंग के बारे में सोचा है? नहीं। सान्या के साथ आगे भी बात कर सकते हैं, क्या पता हम कोई बॉलीवुड में ब्रेक ढूंढ लें। आएगा ऑफर तो आप करोगे? नहीं जी, देखो ये नहीं, हमारे यहाँ हरियाणा में मतलब हैं एक्टर हैं हमारे, अच्छे एक्टर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा स्पोर्ट्स में फोकस रखते हैं तो हमारा वही। ठीक है, हम भी स्पोर्ट्स में ही फोकस रखते हैं फिर आपके साथ। आपने जो आपकी इससे फाइट्स हुई हैं उसमें आपने ईरान के जो बड़े जाने माने रेसलर्स हैं उन्हें हराया है, जापान के रेसलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, आपने उनको भी हराया है। अगर हम मतलब वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर्स के साथ कंपैरिजन करें तो आप खुद को आज कहाँ देखते हो और अपने देश के जो जितने भी रेसलर्स हैं उनको आप कहाँ देखते हो? हम कितने पीछे हैं या बराबरी पर है? देखो अगर मैं अपनी वेट कैटेगरी में बात करूँ तो 3-4 रेसलर हैं हम, सेम ट्रैक पे हैं, अभी सेम लेवल पे हैं। अब आगे जितने कंपटीशन होएगा उसमें तब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। नहीं, मैंने तो आपकी वेट कैटेगरी के ज़्यादातर इंडियन रेसलर्स को देखा है। मैं आपको बता दूं ये सेम कैटेगरी पे नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है। सुजीत बहुत आगे है। सुजीत की फाइट पे हम लोग प्रो रेसलिंग लीग में ये सोच के चलते थे कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, वो एक गिवन रिजल्ट था। लेकिन ईरान, जापान और जो दूसरे देश के रेसलर्स हैं उनसे मैं कंपेरिजन पूछ रही थी कि क्या हम उनके बराबर आ चुके हैं? ओवरऑल बात करें तो देखो है अभी नहीं पहुंचे हम, 19-20 फर्क है उनमें। और धीरे धीरे देखो जैसे हमारे फेडरेशन अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे आपने बताया प्रो रेसलिंग लीग है और भी काफ़ी कंपटीशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अब सीनियर एशिया जो चैंपियनशिप हुई उसमें 17 मेडल थे हमारे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे फ्यूचर ब्राइट हमारे रेसलर्स का। तो आगे अब जो कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, पहला टारगेट आपका एशियन गेम्स है, किस चीज़ की तैयारी चल रही है आजकल? हाँ जी, देखो एशियन गेम्स है हमारा टारगेट और बाकी 20-25 दिन का ही गैप है, बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप आगे उसकी भी तैयारी। और कहाँ आप तैयारी करते हैं और एक तैयारी करने का प्रोसेस जो होता है, एक चैंपियन का माइंडसेट क्या होता है, कैसे आप दिन की शुरुआत करते हो, वो सब हमें बताइए कि कैसे आप पूरा दिन जो है अपनी प्रैक्टिस के आसपास प्लान करते हो? देखो जी, मैं प्रैक्टिस तो सोनीपत करता हूँ कुलदीप कोच साहब के पास,
और देखो दिनचर्या सभी रेसलर्स की लगभग सेम ही रहती है। सुबह 5 बजे उठना, फिर प्रैक्टिस पे जाना, 2-2.5 घंटे उधर प्रैक्टिस की, फिर आके अपना डाइट वगैरह ली, फिर सोना पूरे। डाइट क्या है एक पहलवान की, वो तो बता दो सबको। डाइट ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होता जी, वो बस प्रैक्टिस के बाद जो हम लेते हैं बादाम पानी वगैरह, प्रोटीन शेक लेते हैं, और उसके बाद मक्खन है, रोटी है, कितनी दही रोटी है। खाते हो आप? रोटी जी कम ही भूख लग पाती है, अगर हम ज़्यादा पसीना निकालेंगे तो भूख ज़्यादा नहीं लगेगी हमें। अच्छा, प्यास फिर भी ज़्यादा लगती कितनी रोटी है? 1-2 बस। वाह, 65 kg के रेसलर है, सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, अनबिलीवेबल। और क्या है डाइट में आपके? और जी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, और बाकी फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वही प्रैक्टिस पे जाना, फिर आके फिर वही डाइट सेम। चूरमा खाने को कब मिलता है? चूरमा खाते हैं जी हफ्ते में 2-3 बार तो। वो अलाउड है डाइट में? अलाउ है जी, वो तो बेस्ट एनर्जी सोर्स है। और हरियाणा के लड़कों को तो चाहिए चूरमा। बिल्कुल जी, हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है वो तो। तो कौन बनाता है आपके लिए? घर में मदर बनाती हैं, या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि आप मेरे लिए चूरमा बनाओ, आज बहुत थकान फील हो रही है? हफ्ते में पापा एक बार घर जाते हैं तो अच्छा। पापा लाते हैं, कभी हलवा बनवा के लाते हैं, कभी चूरमा मेरी माँ ही बनाती है। हफ्ते में एक बार। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि आप अपनी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानते हैं, तो सुजीत का जवाब क्या होगा कि आपके गेम में या फिर मेंटली फिजिकली आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेंटली भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ काफ़ी, और अगर टेक्निक वाइज बात की जाए तो डिफेंस। आपका डिफेंस अच्छा है, और उसी के बेसिस पे आपको लगता है कि आप डोमिनेट करते हो सामने वाले रेसलर को? हाँ जी बिल्कुल। फिजिकली क्या आप अपने आप को उस लेवल पर पाते हो जो 65 kg के रेसलर का होना चाहिए, या अभी कुछ रास्ता तय करना बाकी है? अभी तो काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है जी, पर देखो जैसे कंपटीशन खेलते हो तो उसमें कमियां में मिलती हैं कि भाई हाँ थोड़ी बहुत पावर कम थी, या बाकी ये चीज़ें थोड़ी एज जब बढ़ती जाती है तो ऑटोमेटिक आती जाती हैं, ये भी मेंटलिटी स्ट्रांग होती जाती है। और जी, एक्सपीरियंस के साथ भी काफ़ी कुछ सीखता है इंसान। क्या ये आम बात है एक वेट कैटेगरी के रेसलर्स अपने से हायर वेट कैटेगरी में प्रैक्टिस करते हैं, ये होता है? बिल्कुल होता है जी। होता है? हाँ। तो उस टाइम पे मतलब क्या ये अच्छा है, या आपको अपने आप को मेंटली अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है? ये बिल्कुल अच्छा है जी, जैसे अगर मैं अपने से लाइट वेट के साथ करूँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा स्पीड का, और अगर मैं अपने से हैवी के साथ कर रहा हूँ तो मेरे को फ़ायदा मिलेगा अपनी स्ट्रेंथ का और स्टेमिना का। तो एक बात बताइए, जब हम कुश्ती का कोई मैच देख रहे होते हैं, 6 मिनट होते हैं, उसमें से हर 3 मिनट के बाद 30 सेकंड का मेरे ख्याल से ब्रेक होता है, तो वो 30 सेकंड में अगर आप पीछे चल रहे हो पहले 3 मिनट में, तो क्या कुछ घटता है? और जो हमने देखा है कि आपको हवा करते हैं आपके कोच साहब, टावल से पसीना वगैरह सुखाते हैं, उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोल रहे होते हैं, बड़ी एनिमेटेड सी कॉन्वर्सेशन होती है, क्या कुछ बात होती है और आप खुद को, आपका भी मन करता है सर आप चुप हो जाओ ज़रा मैं सोच लूँ, कुछ होता है ऐसे? नहीं देखो, उनका तो काम है कि वो हमें बताएं कि भाई ये कमी रही है 3 मिनट में, आगे हमें इस पे, लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत यही अपने आप को शांत रखता हूँ। अगर मैं पीछे चल रहा हूँ तो भी मेरे को पता है कि मैं लास्ट के सेकंड में भी कवर कर लूँगा, तो मैं सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को शांत रखना। क्रिटिकल और ये आसान होता है अपने आप को शांत रखना उस पल में? नहीं, काफ़ी रेसलर एग्रेसिव भी हो जाते हैं जो कि उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा आपको उकसा रहा था, अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने कंट्रोल किया और फिर वो मैच आप जीते? कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मैच आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ जी बिल्कुल, हर एक मतलब कंपटीशन में एक ना एक बाउट ऐसी होती है कि अगला बहुत मतलब फाउल काम भी करता है और मतलब गुस्सा दिलाने वाले काम भी करता है, पर उस सिचुएशन में भी शांति रहना पड़ता है। कुछ हुआ है ऐसा को जो आप शेयर कर पाओ? कोई कौन से देश का रेसलर था जिसने आपको उकसाया हो? जैसे अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में था एक रेसलर, यूक्रेन का था शायद, वो मतलब बार बार फाउल भी कर रहा था और फिर मतलब ऐसे चिल्ला भी रहा था, तो फिर मैं कहा कोई नहीं, बाउट खत्म होने दे, और आप जीत गए उस बाउट को। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो शांत स्वभाव
लेकिन अग्रेसिव अंदाज, बिल्कुल जी। अपने खेल के जरिए दिखाना है कि कौन बेहतर है। हाँ जी। ये आपने करके दिखाया है। बिल्कुल। सुजीत, आज के युवा को आपका क्या मैसेज रहेगा, खास तौर पर उन सबको जो स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर बैठे हैं, जिनको लगता है कि इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो यही करते रहते हैं, बाहर जाके कौन खेले कूदे। एक मैसेज दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया तो सबसे, ये मान लो एक जहर है हमारी जो जनरेशन उनके लिए। तो पता नहीं लोग क्यों इसे मतलब इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि भाई इससे ही हमारी इनकम आने वाली है। लेकिन एक इंसान मतलब चाहे तो स्पोर्ट्स चूज़ करो, सबसे बेस्ट तो देखो स्पोर्ट्स लाइफ है। घूमो फिरो, देश का नाम रोशन करो, हर चीज़ मतलब। और पढ़ाई भी बहुत देखो बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें भी हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो सोशल मीडिया, ये मेरे को भी थोड़ी मतलब इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती है कि भाई क्यों लोग इतना वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हो जाते हैं कि भाई हाँ इस ये चीज़ करने से भाई ये होगा, तो वो बहुत मिसगाइड करते हैं बच्चों को। चलिए, तो एक युवा जिसने करके दिखाया है देश का नाम रोशन, उसका संदेश आप सबने सुन लिया। बहुत शुक्रिया सुजीत, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नंबर 1 रैंकिंग के लिए और आने वाली सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए हम सब की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस हम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। A huge round of applause for Sujit Kalkal and NDTV's Preeti Dhaya. Come on, get the energy up, ladies and gentlemen. All right, are we ready? All set? We've got the mic placed for our next session, Arun. Yes, our next guest is someone who doesn't just perform, but she creates moments. They stay with you. She turns stories into experiences and words into powerful emotions. Well, they say, कुछ अल्फाज सिर्फ सुनने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं. I'm sure he would have done it better. But please welcome Nayab Midha, Indian spoken word artist and poet. You've seen her on Instagram. Please welcome her with a round of applause with NDTV's Meenakshi Kanwar. वैसे ये माइक बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं बना है क्योंकि नायाब मेरे सामने खड़ी है और जितना इनका नाम नायाब है उतनी इनकी पर्सनालिटी नायाब है, उतने ही इनके अल्फाज नायाब हैं और मुझे लगता है 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ हमें नायाब को सुनना चाहिए, उसके बाद फिर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो ज़ोरदार तालियों के साथ नायाब, माइक और स्टेज आपके लिए। अरे बाप रे, हाय हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं 2 कविताओं के बारे में यहाँ सोच कर आई हूँ और बस एक छोटी सी चीज़ करना चाहती हूँ कि जितने भी लड़के हैं इस कमरे में एक बार ज़ोर से चिल्ला देंगे 3, 2, 1 बॉयज़ इन द रूम, 3, 2, 1 गर्ल्स इन द रूम। क्या बात है, बराबरी का दम मुझे दिखाई दे रहा है। पर एक चीज़ मैं जानती हूँ कि जिससे हम सब डील करते हैं। आप सब लोग मुझे एक दफ़ा ये बता सकते हैं कि जब आप सुबह उठ के आईना देखते हैं तो आपको स्किन केयर रूटीन याद आ जाता है? आप पढ़ चुके हैं स्कैम में? हाँ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऑल दिस लाइफ एंड ऑल दीज ईयर्स हम कहीं ना कहीं से ये बातें सीख लेते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं, हम जैसे हैं, हमारे आँखों के गड्ढे, हमारे चेहरे पर कोई दाग है जो खूबसूरत नहीं है। और मैं सिर्फ आपको एक कविता के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि आप जैसे भी हैं आपके बारे में सब खूबसूरत है और बाकी सब एक मार्केटिंग स्कीम है। एंड इमेजिन द हिपोक्रेसी आई टेल यू हियर विद द हेयर एंड मेकअप फुल फेस, बट beyond that, when I remove this today and when you go home and when you change into your pajamas, I still want you to feel beautiful without all the layers that we wear for the universe. So, शुरू करें? Alrighty. Generally we do a कहा है कि या ना इरशाद, ऐसे ही to let the mood go. तो मैं कहूँगी कहा है कि और आप कहेंगे इरशाद। कहा है कि जहाँ कोई बात अच्छी लगेगी तो आप ये चुटकी बजा सकते हैं। Can you all click once? सब लोग आप ताली बजा सकते हैं। कैन यू ऑल डू दैट वंस फॉर मी? आप वाह कह सकते हैं, वाह कह सकते हैं और आप ये सारी चीज़ें साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कहा है कि
वाह वाह बात वाला है, बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव शोन इन मी। कहा है कि चेहरे पर मेरे एक दाग है, चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक ज़रा है इधर उधर। कि चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक ज़रा है इधर उधर, आँखों से ज़रा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। लोग मुझे देखकर नज़रें चुराते हैं, कि लोग मुझे देखकर नज़रें चुराते हैं, एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। ये पूछते हैं मुझसे, चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है? याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उन सबसे कि ये डर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है, मेरे बस चेहरे तक सीमित है। बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा, निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी। मुझे खौफ नहीं, मुझे खौफ नहीं, सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले, मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ, वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है। लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं, खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाज़त, वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाज़त करते हैं सफ़ेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छिपाता है, फिर ना जाने क्यों वो गोरा बदन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का, मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज़ छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हजार, लिखी जिस पर नगमे हजार, और मेरे चेहरे पर एक राग नहीं। क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना ज़रूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना ज़रूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छिपाना ज़रूरी। इस ज़माने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। इस ज़माने से तो वो साबुन ही अच्छे हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, एक निशानी है सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज़ है तमाम इस खूबसूरत ज़माने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, कि जो अंदर है, कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी? मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, जिंदा इसके लाखों ख्वाब हैं। Thank you so much. Did you feel a little beautiful about yourself? एक और कोशिश करते हैं इसी सेम चीज के लिए कि मैं जब कहूं तुम, आपको कहना है खूबसूरत हो। Can we do that? तुम ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, इन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफ़ा खुद से फिर कहो कि तुम तब तक
तब तक कहो जब तक ये आवाज़ तुम्हारी जुबान से निकल कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दें, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाएं, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दें, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाएं, तुम्हारे बदन के कन कन को बता ना दें, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए तब तक कहो कि तुम। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, मोटी हो गई हो सुबह उठकर टहलने क्यों नहीं जाती, रंग तो देखो दही बेसन क्यों नहीं लगाती, और ये ज़माना लड़कों को भी नहीं छोड़ता है कि ये पतली कमर 20 की छाती 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों लाखों बातों से हमें हर रोज़ नीचा दिखाया जाता, मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज़ उड़ाया जाता। तो अगली दफ़ा जब तुम्हारी नज़रों में तुम्हें कोई गिराना चाहे, खुद को बेवजह तुमसे ऊंचा कोई बताना चाहे, तो उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उनसे कहना कि मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफ़ा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच, दैट वाज मी। दैट वॉज लवली, वंडरफुल, ब्यूटिफुल, और सच में लगा कि खुद से कहना चाहिए तुम खूबसूरत हो। किस किस को ऐसा फील हुआ? 100 दफ़ा जोरदार तालियों के साथ फिर बजाइए। स्टेज पर ज़रा चेयर्स ले आइए, क्योंकि अब परफॉर्मेंस के आगे थोड़ी बहुत बातचीत होगी। जस्ट गिव अस 2 minutes बिफोर वी सेट अप फॉर द चेयर्स। एवरीवन सेटल्ड? मज़ा आया? तालियां बता रही थी आपकी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी इस सेशन से पहले मैं नायाब के साथ ऑलमोस्ट आधा घंटा बातचीत करके आई, और बहुत सारी उस बातचीत में ऐसी बातें निकल कर आई जिसके बाद मुझे लगा मैं शायद नायाब को ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, वैसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, लेकिन अब सारी परिचय की बातें जिस अंदाज में आपने सबको खूबसूरत फील करवाया है, 1000 बार फील करवा दिया है, तो वो ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी एक लाइन मैं ज़रूर कहूँगी, जब आप अपनी कविताओं का जिक्र करती हैं और ये कहती हैं कि मैं आज़ाद कविता लिखती हूँ, मेरे लिए ये आपका सबसे सशक्त परिचय है। थैंक यू। आज़ाद कविता। थैंक यू वेरी मच। इतनी कम उम्र में जब हम जेनजी की बातें कर रहे हैं, मिलेनियल्स की बातें कर रहे हैं, उस उम्र में ये कह देना कि मैं आज़ाद कविताएं लिखती हूँ, मैं इमोशनल कविताएं नहीं लिखती हूँ, मैं प्रेम की कविताएं नहीं लिखती हूँ, मैं भूख से जुड़ी कविताएं नहीं लिखती हूँ, लेकिन इन सबको जब आप समग्रता में ये कहती हैं कि मैं आज़ाद कविताएं लिखती हूँ, ये पहला थॉट कहाँ से आया कि मेरी कविताएं आज़ाद होंगी? मुझे दोनों चीज़ों से बहुत प्रेम रहा है। एक आज़ादी से, क्योंकि उसकी जंग मैं बचपन से लड़ रही थी, और एक जो इंटरनल एक लड़की की आज़ादी की जंग होती है, और फिर दूसरा प्रेम कविताओं से हुआ। तो दोनों को जोड़ करके हमने मेरे दोस्त सबसे अच्छी, जो सबसे पसंदीदा चीज़ों को जोड़ करके बनती हैं आज़ाद कविताएँ, जो मेरी जैसी लड़कियों की तरह रूल्स में नहीं ढलना चाहती, जो बात कहना चाहती हैं, जो दिल से दिल तक जाना चाहती हैं, बस जिनका, जैसे कला का यही तो पर्पज़ है ना कि वो मेरे दिल से निकले और आपके दिल तक पहुंच जाए, बस यही पर्पज़ है इन कविताओं का, इसीलिए वो आज़ाद है। लाइव तो मैंने आपको पहली बार देखा जी। इससे पहले मुस्कुराओ जब आपने कहा जी, और हर मोबाइल पर मुस्कुराओ पहुंचा, और उसको देख के हर व्यक्ति मुस्कुराया भी, उसने अंदर तक झिंझोड़ा भी, सोचने पर मजबूर किया। और मुझे लगता है किसी भी कविता की ये सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर वो आपके इमोशन को आपकी आंखों पर ले आए आंसू के रूप में, चेहरे पर ले आए मुस्कान के रूप में, किसी दर्द के रूप में, और अगर वो उस भावना को चेहरे पर या एक्सप्रेशन में लेकर आ रही है, तो वो उस कविता की सबसे बड़ी ताकत है। जब आपने मुस्कुराओ के जरिए वायरल होने वाले उस मोमेंट को जिया, वो वक्त कैसा था आपके लिए? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं 3 साल से आई वॉज स्ट्रगलिंग टू पे माई रेंट ऑनेस्टली। जैसे अगर महीना चलाने के लिए 50,000 रुपये चाहिए होते हैं दिल्ली में, किराया हो गया, आपका जो भी आपके बेसिक खर्चे हैं,
तो मैं हर महीने 10-15 माइनस में ही होती थी, बिकॉज मैं कुछ भी आई वॉज डूइंग वर्कशॉप्स, ओपन माइक्स, छोटे मोटे ब्रांड डील्स। तो पर एक वक्त ऐसा आया कि अब जो आपका कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है और आपको घर जाने का टाइम आ गया है। तो मुझे याद है मैंने मुस्कुराओ अप्रैल में ही, इन्हीं दिनों में कहीं 14-15 अप्रैल को कुछ एक इवेंट हुआ था, परफॉर्म की थी। इट वाज एक्चुअली परफॉर्म फॉर अ ब्रांड एंड मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके बस चढ़ चुकी थी गंगानगर की, जहाँ से मैं हूँ। दिल्ली छोड़कर आप जा रही थी? मैंने 1 महीने का किराया दे रखा था, मेरी सिक्योरिटी मनी पड़ी हुई थी, तो मैंने आधा सामान लेकर जा रही थी और ये अपने आप को मैं प्रॉमिस करके गई थी कि इस 1 महीने में मुझे कुछ समझ आ गया, कोई नौकरी लग गई तो मैं लौट आऊँगी, नहीं तो बचा हुआ सामान भी मंगवा लिया जाएगा, ठीक है। और मेरी मम्मी पापा बहुत खुश थे कि बड़े सालों बाद हमारे हाथ आई है तो हम इसकी शादी करा देंगे तो मैं घर पहुँची हूँ विद अ वायरल वीडियो। उस दिन रात को मैंने बस से कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया, नया फीचर आया था इंस्टाग्राम का, और सुबह तक तो हम वायरल थे, उसके 2 दिन में तो हम और ज़्यादा वायरल थे। तो ना मम्मी पापा और मैं कोई सीरियस बातचीत कर पाए, और चौथे दिन हमको बीबीसी से कॉल आ गया कि ये मुस्कुराओ गर्ल कौन है, इसको बुलाया जाए। तो मैं दिल्ली वापस आ गई, और लोग मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, मैं तो दिल्ली को ख्वाबों का शहर कहती हूँ, क्योंकि मेरे तो सारे इसी ने ही पूरे किए हैं। एंड आई हैव बीन डूइंग whatever I've been doing ever since. I think 400-500 शोज हम कर चुके हैं पिछले 3 सालों में। उस दिन से हम रुके ही नहीं, we didn't stop. थोड़ा सा मुस्कुराओ सुन ले कितने लोग इंटरेस्टेड है, मुझे हाथ खड़े करके बताइए। अरे वाह, यहाँ सबको मुस्कुराना है। मैं इन सबको देख के बड़ी खुश होती हूँ कि जेनजी भी कविताएं सुनती है, मेरी फेवरेट ऑडियंस। क्योंकि जब मुझे कोई 16-17 साल का बच्चा मिलता है और कहते हैं हम आपको सुनते हैं, तो मुझे लगता है अब ठीक है, गुड रिलेटेबिलिटी का एक रेंज है। बट कहा है कि एक बार फिर से कहते हैं, कहा है कि इरशाद, क्या बात है कि। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों मुस्कुराओ, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन्स 3rd लॉ के आसपास है वो कुछ, है ना कि फिजिक्स से निकली हुई कविता लगती है मुझे ये कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की ज़रूरत तुमसे ज़्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ वो जो दुनिया आपको कहती रहती है कि आप ग्लास को आधा भरा आधा खाली देखते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, आप उनसे कहिए कि मुस्कुराओ इवन इफ यू हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज इट्स ओके इफ योर ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यू कैन ऑलवेज फिल इट विद स्माइल्स। मुस्कुराओ। थैंक यू सो मच। हाउ लवली। कविताओं की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक कविता होती है, बिल्कुल। उसके एक्सप्रेशन के रूप में। और बहुत पुराने वक्त में अगर चला जाएं, या जब हम कहते हैं कि कोई इंट्रोवर्ट है, तो पहली कविता शायद आप अपने जहन में लिखते हैं, फिर आप उसे कागज़ पर लिखते हैं, आज की दुनिया में आप मोबाइल पर लिखते हैं या नोट्स पर लिखते हैं और फिर उसे आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन कविता जो किसी के लिए बहुत पर्सनल होती है, कई बार आप शेयर करने से भी डरते हैं कि शायद मैं अपने थॉट्स किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। नायाब ने जब पहली कविता लिखी, वो किस एज में लिखी और कब ये लगा कि अब मैं तैयार हूँ इसे दुनिया को सुनाने के लिए? तो मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी 9वीं में, 9th क्लास में, ऑनेस्टली टू विन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल। उसका कोई पर्पस नहीं था एज सच कि अरे मुझे ये करना है, दिस इज़ अ गोल, नहीं। सब लोग आर्टिकल्स, स्टोरी टेलिंग ये सब कर रहे थे और मुझे लगा कि क्लास में कोई पोएम नहीं लिख रहा है तो शायद मैं लिख के जीत जाऊँ। जीतने का बड़ा मतलब फर्स्ट आने का क्लास में जो शौक रहता है ना आपको कि कोई, एंड एज एन एवरेज स्टूडेंट जिसके 70-80% मुश्किल से आ रहे हैं, डांट पड़ रही है, जैसे पापा कह रहे हैं कि 100 की तैयारी नहीं करोगे तो 80 का, मतलब तैयारी ही 80 की है तो 75 ही आएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने एक पोइट्री लिखी कि यार ये वाला 10 नंबर मेरे को लेना है ना, ये मैं कर लूँ। मैं जीती नहीं उस दिन, पर मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में जीत गई उस दिन, बिकॉज आई कुड नेवर गो बैक टू नॉट राइटिंग पोएम्स। मैं हर रोज़ एक नई कविता लिखती थी। तो पहली 5, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंग्रेजी में लिखी, फिर छठी कविता निकली हिंदी में अंदर से कहीं पे, और दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई, मम्मी के ऑफिस में, हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, नीचे मम्मी का ऑफिस हुआ करता था। तो मेरी माँ मानी ही नहीं
कह रही तूने कहीं से उतारी है, ये तेरी नहीं है, तूने कहाँ से कॉपी किया? मैंने कहा मम्मा आई प्रॉमिस, आई स्वेयर मैंने लिखा है, क्या किसी की कसम खिला लो मम्मी। और मेरी मम्मी इतनी खुश हुई कि मेरी मम्मी अगले दिन अखबार में छपवानी चली गई कि आपका जो चिल्ड्रन वाला कॉलम रहता है तो मेरी बिटिया ने एक कविता लिखी है, तो वो अखबार में छपी थी अप्रैल के ही महीने में। हिंदी में कविता आई 5 इंग्लिश की कविताओं के बाद। जी, और उसके बाद सारी हिंदी में आई, उसके बाद अंग्रेजी में कभी नहीं आई। तो ये हिंदी में एक्सप्रेशन कहाँ से निकल के आया कि मेरी कविताएं हिंदी में होंगी? पता नहीं, इस बात का तो कसम से कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पहली 5 इंग्लिश में ऐसे लिखी कि स्कूल में ना इंग्लिश में ही वो नहीं होता आपको, हम जितने आई डोंट नो एज मेनी एज ओल्ड एज मी, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और जब मैं स्कूल में थी, तो इसीलिए आप मेरी भाषा में परिवर्तन भी देख रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि हमको फाइन लगता था यार हिंदी में बात करने पे। आपको स्केल मार दिया जाता था हाथ पे, पीटी टीचर आपको पकड़ लेते थे, और वो आपके दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि इंग्लिश बोलना तो बहुत फैंसी है और हिंदी बोलना थोड़ा अनकूल है। पर जब मैंने हिंदी में लिखा तो जो मुझे सुकून मिला, जो ज़िंदगी मेरे लिए खुली, वो कुछ और ही था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन हल्का हो गया, मुझे ऐसा लगा कि वाह आज कुछ कर लिया, अपनी ही कविताओं से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई। तो उसके बाद कभी लिखने का मन ही नहीं किया इंग्लिश में कविताओं को। फिर कविताएं और हिंदी और मेरा एक रिश्ता बन गया, हमारा एक। मैं अभी जितना आपको सुन रही हूँ, मैं नायाब के अंदर एक बागी भी देख रही हूँ, मैं नायाब के अंदर एक आज़ाद लड़की भी देख रही हूँ जो बची खुचे बंधनों को भी तोड़ना चाहती है, और मैं नायाब के भीतर एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी देख रही हूँ जो खुशियाँ बांटना चाहती है, मोटिवेशन बांटना चाहती है, और जैसा वो खुद फील कर रही है वो चाहती है दूसरे भी वैसा फील करें। ये सब कहाँ से शेप हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। राजस्थान का श्री गंगानगर, श्री गंगानगर का नाम कितने लोगों ने सुना है? पहले तो हाथ खड़े करके बताइए मुझे। क्या बात है, श्री नहीं लगाओ तो गुस्सा हो जाते हैं मेरे वहाँ के लोग। किसी ने मैंने लगा लिया। बॉर्डर पर है भारत पाकिस्तान के, बिल्कुल। और जब मुझे पता चला कि राजस्थान की माटी से आप आती हैं, जो राजपूताना की माटी, गर्व जहाँ पर लहू में बहता है, वहाँ से निकलकर कविताओं के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्या था बचपन में वो सब चीज़ें जिन्होंने आपके भीतर ये थॉट्स डाले कि चाहे आपकी वोकैबुलरी जितनी शार्प है, हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, आई एम श्योर आपने वो पढ़ा है तब जाके वो शब्दों में झलक रहा है, तो वो कौन सी चीज़ें थी जो आप बचपन में उस वक्त पढ़ रही थी आज की नायाब बनने के लिए? हाउ स्ट्रेंज, हमारे वहाँ से जगजीत साहब भी हमारे यहाँ से हैं, वो भी श्री गंगानगर से हैं, और उनकी ये चंद लाइनें हैं कि मुझसे वापस ले लो ये सब कुछ और लौटा दो मुझको वो कागज़ की कश्ती, है ना, वो बारिश का पानी, ये शोहरत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, और लौटा दो मुझको ये कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। एंड आई एम समबडी, मैं कहती हूँ कि मुझसे सब कुछ ले लो पर मुझे वो कागज़ की कश्ती बिल्कुल मत लौटाना, मुझे नहीं चाहिए वो सब कुछ, बिकॉज हैड अ वेरी वियर्ड चाइल्डहुड इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट माई पेरेंट्स वर नॉट इन लव। और जब आप फिल्में देखते हैं और जब आप बहुत एक आइडियलिस्टिक जीवन आप चाहते हैं कि फैमिली की और पे ना कि ये सब प्रेम में हो, पर ब्राउन फैमिलीज़ जो हमारी होती हैं, अरेंज मैरिजेस लेड, कि दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं और उनको छोड़ दिया जाता है ज़िंदगी बिताने साथ में। और मेरे मम्मी पापा, मैं अक्सर कहती हूँ कि उन दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज से अच्छी और इंटेलिजेंट, कि जैसे मेरी मम्मी का EQ इतना अच्छा है और मेरे पापा का IQ इतना अच्छा है कि आई हैव नॉट मेट पीपल सो इंटेलिजेंट, अमेजिंग, पर ये दो लोग ना कभी ऐसे गहरे प्रेम में नहीं पड़ पाए और उनके बड़े ये रहे आपस में बहस रही है एक ज़िंदगी को लेकर, आइडियल्स को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के एक जंग रही। और जब आप उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं, जब आप एक ऐसे घर में बड़े हो रहे होते हैं जहाँ पे बहुत नॉइज़ है, बहुत क्योस है, और ना तो वो गलत है, आप बड़े होते हो तो समझते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, कि अगर मैं भी शायद उनकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही बात करती, मुझे भी शायद उतना रेज फील होता या मुझे भी शायद उतनी डिसअपॉइंटमेंट फील होती ज़िंदगी से, और उन लोगों की शादी करवा दी। आई एम 29, मैंने अपने ख्वाबों को एक जगह पे लाके शादी की है। वो दो एम्बिशियस लोग, मैरिड एट 23, चिल्ड्रन एट 25, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने किया है ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर वाज अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी दैट वाज ग्रोइंग व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग। बस वो कविताओं के ज़रिए निकलने लगी और कुछ नहीं है। और उसका और मैं रीड बहुत करती थी, मैं बहुत पढ़ती थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर एक एस्केप ढूंढ रही थी। तो किताबों से कहते हैं कि आप एक जीवन नहीं जीते, आप किताबों के सहारे बहुत सारे जीवन जीते हैं। तो मैं अपने जीवन से भागने के लिए किताबों में घुस जाया करती थी, दूसरों की कहानियों में घुस जाया करती थी। तो शायद थोड़े शब्द वहाँ से मिल गए
और थोड़े किस्से ज़िंदगी से मिल गए और वो मिल कर के मेरी कविताएं बनी हैं। और तो मैं इनफैक्ट आपके भीतर वो सेंसिटिविटी देख रही हूँ जिसमें जब ये कहना कि मेरा बचपन वियर्ड था या ये कहना कि माय पेरेंट्स वर नॉट इन लव और एक स्टेज पर उस बात को एक्सेप्ट करना, उसके पीछे कितनी चीज़ों से आप गुजरी हैं, मैं इस वक्त उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। बट जब आप ये कहते हैं कि दो लोग, 2 people वर नॉट इन लव, एंड एज ए चाइल्ड जब आप उस फीलिंग को अपने भीतर महसूस करती हैं तो अधूरे इश्क की बात आती है, एक तरफा प्रेम की बात आती है, और आप तो प्रेम पर, मोहब्बत पर लिखती भी हैं। कुछ लिखा है इस पर ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है? मैंने एक तरफा प्रेम पे लिखा है एक बार ना, और आप यहाँ पे ये सब बैठे हुए हैं हमारे बच्चे, कॉलेज के लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना? कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे ये लोग, आई डोंट नो, आप लोग रिलेट करेंगे कि कभी कभी ना हम किसी को मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का इजहार करने से पहले ख्यालों में पका लेते हैं उसको, और वो ख्याली पुलाव इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है कि पहले ही डर लगने लगता है कि ये हाँ कर तो देगी। मान लो हम रिलेशनशिप में आ भी गए, फिर ये वैसा नहीं निकला जैसा हमने सोच लिया है, तो भी तो डिसअपॉइंटमेंट है ना यार। तो एक तरफा मोहब्बत की उस डिसअपॉइंटमेंट पे लिखा है कि मुझे चांद देखना पसंद है, कि मुझे चांद देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है, वो भी मुझे चांद देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है, वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदी नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देती है, मुस्कुराते ही समाज के सारे बांध तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना सवरना, उसे कौन सिखाए सजना सवरना, बदल न जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूँ कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती, ये वो हाँ नहीं फिजूल सवाल नहीं पूछती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, कि सोचो अगर वो काजल लगा ले, एक दफ़ा बस उलझे बाल सुलझा ले, ये ज़माना अपना रुख ना बदल दे, हर कोई उसके साथ ना चल दे, ये हवाएं रुक ना जाए उसे देखने को कहीं, मैंने जब से देखा है मैं हूँ वहीं, उसे देखा है जब से। आप देखिए, जब आपको गहरी मोहब्बत पहली बार होती है तो आपको होश और जोश दोनों ऐसे लगता है अभी अभी आया है, कि उसे देखा है जब से, होश आने लगा है, ज़माने का सारा खौफ जाने लगा है, उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, कि उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी, गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती, उसे उड़ना पसंद है, उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूँ, उसके पंखों को दिल की, कि उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूँ, उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूँ, फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का, उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। एक मोहब्बत होती है कि जिस लड़की से आप प्रेम करने से भी डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो इतनी आज़ाद है, वो मोहब्बत में भी ढलेगी क्या, है ना, कि उसका तो, कि उसे कोई तोहफा देने को जी चाहता है, मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी, गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती, उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूँ, उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूँ, फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का, उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। उसे मेरी ज़रूरत नहीं, कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं, वो आज़ाद है किसी भी कैद से, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूँ, ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे, ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे, वो मेरे नाम के कंगन पहन भी लेगी, माथे को घूंघट से ढक भी लेगी, मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। कि एक रिश्ता, एक शादी एक औरत को बदल देती है, कि मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। मुझे उसके दागों से मोहब्बत है उसके अल्हड़पन से, इसीलिए जब भी मेरे दिल में इस प्यार का इजहार आता है, मुझे उसकी आज़ादी का ख्याल आता है। यही सोचते हुए मैं उसकी गली से रुख मोड़ लेता हूँ, तिरछी आंखों से देखता हूँ उसे और बस छोड़ देता हूँ। क्या बात है। एट द एज ऑफ 29 प्यार की इतनी लेयर्स कैसे पढ़ ली हैं? मैं ना समझ ली हैं, लिख भी ली हैं और सुना भी दी हैं। मैं हमारी माँ बाप की जनरेशन को एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ना प्रेम में पढ़ने से ना रोकिए। आप उनको सीमाएं बताएं, सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, बहुत ज़रूरी है छोटी उम्र में सीमाओं का पता होना। पर अक्सर ना
आपको मोहब्बत से क्या नहीं चाहिए ये आपको मोहब्बत में पढ़ने के बाद समझ आता है। हम सब वो चेकलिस्ट बना लेते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसकी सारी ना पता होनी चाहिए, उसका गहरा गुस्सा पता होना चाहिए, उसकी सबसे ऊंची हंसी पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली मोहब्बत से क्या नहीं चाहिए ना करके समझ आता है। तो हमने 1-2 बार मोहब्बत ना करके देखी है तो हमें समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। नहीं, ज़्यादा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं। अच्छा, अभी ये जो आपने अभी पोइट्री सुनाई और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सारे दर्शकों की आंखों में भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक एवरीबडी वॉज समवेयर विद समवन इन देयर थॉट। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? ठीक समझा मैंने? एवरीवन। जी। पर मैं आपकी कविता सुनते हुए ये भी सोच रही थी साथ में कि महिलाओं के इमोशन के बारे में सब बात करते हैं जी, लेकिन अभी आपने जो पोइट्री यहाँ पर नरेट की उसमें पुरुषों के इमोशन कैसे वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ प्यार करने के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ उसे छोड़ देने के बारे में सोच रहे हैं। आप इस पॉइंट तक कैसे पहुँची कि उनके इमोशंस को मुझे शब्द देना है? तो जो मेरा पति है, अब नाउ आई कैन से द वर्ड हस्बैंड, मैं 10 साल से उनको जानती हूँ, उनसे प्रेम में हूँ, पर वो एक इंट्रोवर्ट है और वो अपनी भावनाएं बिल्कुल बोलता ही नहीं है, मतलब उससे पूरी खींच के निकालनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि उसके हिस्से का भी बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर एक जंग रहती है, मैं ये 4 लाइनें अक्सर कहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वो चाहती हैं कि उनका जो पार्टनर है वो अंतर्यामी हो, क्योंकि हमने यही देखा है कि फूल कोई लेकर आ जाएगा, हमारे मन के भाव कोई पढ़ लेगा। पर ये बात ना उनको किसी ने बताई नहीं, उनको किसी ने सिखाई नहीं। जैसे माँ ने कहा कि राजकुमार आएगा, राजकुमार को माँ ने बात बताई नहीं। हमारे कितने भाइयों को पता है कि उनको हमारे जीवन में राजकुमार बनकर जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रह गए। जैसे आप गाने सुने, कितनी लड़कियों की खूबसूरती पे कितने गाने हैं, 2 भी नहीं है लड़कों की खूबसूरती पे। ये सुंदर नहीं है क्या सारे के सारे? नहीं यार, 2 से ज़्यादा होंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब होंगे, पर इफ़ यू कंपेयर इट इन रेशो विद द अमाउंट ऑफ, आदमियों की फेमिनिनिटी पे बात ही नहीं हुई है। माँ की ममता पे कविताएं गाने क्या नहीं है। पिता की क्या होती है? पिता की ममता नहीं होती। वो फीलिंग टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन इज द सेम, बट इतना अनडिस्कस्ड है कि ना तो वो लोग खुद से कह पा रहे हैं, क्योंकि उनको हमने बड़ा किया है एंग्री यंग मैन जनरेशन में, और फिर अब आजकल के बच्चे बोल रहे हैं कि पापा पूकी बन के दिखाओ ज़रा, ऐसे नहीं चलेगा। तो पापा कंफ्यूज हो गए हैं कि जैसे मैं एक एंग्री यंग मैन पापा के साथ बड़ी हुई हूँ, पर मैंने अपने पापा के साथ एक जर्नी तय की है। तो अब मेरे पापा पूकी पापा हो गए हैं। अब वो मुझसे भावनाएं भी, जो भावनाएं वो अब मम्मी से नहीं शेयर कर पाए, मुझसे कर लेते हैं। पिंकी प्रॉमिस हुआ अभी तक या नहीं हुआ? पिंकी प्रॉमिस तो हमारा बहुत पहले हुआ। पर मैं वही कह रही हूँ कि कितना मुश्किल है कि उनकी भावनाएं किसी ने कही नहीं, नॉर्मलाइज नहीं किया इसको कह देना। वरना मैं नहीं मानती कि फेमिनिनिटी नहीं है उनमें, उनमें है, बहुत फेमिनिनिटी है, बट नॉर्मलाइज नहीं है। ये इनकी फेमिनिनिटी बड़ी लिमिटेड है, गर्लफ्रेंड तक, बहनों तक, माँओं तक, बीवियों तक, बस ज़माने के लिए नहीं है। तो किसी को तो कहनी पड़ेंगी। मैं तो अभी जितना आपको सुन रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले भी यही नायाब थी जो लिख भी रही है, पढ़ भी रही है, एक्सप्रेस भी कर रही है। लेकिन जिस वायरल मोमेंट का हमने जिक्र किया, जिसके बाद जिंदगी बदली, जिसके बाद दायरा बड़ा हुआ, और दायरा इतना बड़ा हुआ कि अब राजकुमारी शो जो है आप उसको इतने सुपर तरीके से परफॉर्म कर चुकी है। बिल्कुल। अभी 16 को मेरे ख्याल से दिल्ली में होने वाला है, 16 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस, मतलब कागज पर एक कविता लिखने से लेकर उस कविता को इतने बड़े स्टेज तक ले जाने तक का जो ये सफर था, ये कहीं ना कहीं उस वायरल मोमेंट से आगे निकला है। बिल्कुल। जिंदगी में क्या बदला उसके बाद? क्या लोगों ने ज्यादा सीरियसली सुनना शुरू किया, या ऐसे स्टेजेस मिलने लगे जहां पर कद्रदान आते हैं जो फीलिंग के साथ आते हैं, नहीं हम नायाब को सुनने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए कि किसी भी कला को अगर इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, अगर आप देखिए 2 तरह की कलाएं हैं। एक जो आपके अंतर मन तक है, जो डायरी तक लिमिटेड है, जो कागज़ तक लिमिटेड है, और जो मंच पे नहीं पहुंची है। लेकिन जो कला मंच पे पहुंच गई है वो ऑडियंस के बिना क्या है। मंच 2 तरफा महफिल होती है। अगर आप नहीं हो और हम ये बातें करके निकल जाएं तो क्या मज़ा है ना। तो ये 2 तरफा महफिल है जो हम करते हैं इसको ना, जिसको हम कहते हैं ये। तो जब मुस्कुराओ हुई तो मुझे लगता है स्पोकन वर्ड, जो स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट्री है, जो ये फील्ड है, इसको इतनी नज़रें मिली, और इसको एक बस आपको 1 सेकंड की रोकिए। स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट्री, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? मुझे हाथ खड़े करके बताइए ज़रा एक बार।
क्योंकि मैं देखिए कितने कम लोग हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ नायाब को परफॉर्म करते हुए या जो इस फील्ड में अब प्रोफेशनली आ रहे हैं, आप उनमें से बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग इसे करियर ऑप्शन के रूप में चुन रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं इनसे पर्सनली बात कर रही थी मैं पूछ रही थी। लेकिन आपको जब लोग स्टेज पर देख रहे हैं और उसे अपना करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या घर में अगर कोई अपने पेरेंट्स के पास जाके ये कह सकता है कि जी मैं कागज पे भी लिखता हूँ बट ये मेरा करियर भी होने वाला है, बिल्कुल दिस इज एम्पावरमेंट। हाँ बिल्कुल, है ना, वो हमें ये कहानियां मोमेंट चाहिए। से आया। एग्जैक्टली आप दिल्ली से कोई एक्टर क्यों शाहरुख खान बनने निकल जाता है? क्योंकि आपने सक्सेस स्टोरीज देखी हैं। तो जिस भी फील्ड में अगर सक्सेस स्टोरीज नहीं होंगी तो कोई क्यों घर से निकलेगा? तो मुझे हमेशा से, मैं अपने दिल से कहती हूँ कि मुझे हमेशा से इतना विश्वास था इस फॉर्मेट पे, स्पोकन वर्ड पे, कि मुझे पता था कि एक दिन उठेगी। बस मुझे ये मालूम नहीं था कि उठने की वाली लहर में मैं भी बह रही होंगी। क्योंकि मैं बैठी थी हॉस्टल के कमरे में, हॉस्टल का लैन लगा करके लैपटॉप पे वीडियोस देखती थी मैं, यूएस के स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट की, इंडिया के स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट की जो वीडियोस निकालते थे, और लगता था कि यार एक वीडियो कोई हमारा भी रिकॉर्ड कर दे। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा बजट होता था 2017 में, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट नहीं था, इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो मुझे करना है। तो मुस्कुराओ से देखिए कि बहुत सारी आंखें मुझे मिली, बहुत सारे प्रेम करने वाले मुझे मिले, और उस प्रेम को हमने एक शो में बदला। हमने एक 2.5 घंटे का शो बनाया है जिसका नाम है राजकुमारी। मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहला स्पोकन वर्ड पोइट्री स्टेडियम शो है। इससे पहले स्पोकन वर्ड स्टेडियम में, इस पे तो म्यूजिक आना चाहिए बाबा। तो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है ये कि 3000 लोग एक कमरे में बैठ करके 2.5 घंटे आज़ाद कविताएं सुनेंगे। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो 20 लोग होते थे उस कमरे में, 10 लोग होते थे, और पता है वो 10 के 10 परफॉर्मर्स होते थे। तो जब आखिरी परफॉर्मर का नंबर आता था तो ऑडियंस में 2-3 लोग बचते थे, क्योंकि सब अपना अपना करके निकल जाते थे। तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि कमरे में 20 से ऊपर लोग होते हैं तो हमें लगता है हमने जंग जीत ली है एक। तो टुडे इज अ विन दैट यू आर ऑल हियर। तो देखिए, ये जो छोटी छोटी जंग जीतने के बाद इंसान जब ऐसे मंच पर पहुंचता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ नायाब अपनी पूरी ये स्टोरी शेयर कर रही हैं, मुझे लगता है हम सबके पास भी कहीं ना कहीं वो सारे क्षण हैं जिसमें हम अपने आप को नायाब की कहानियों के साथ में यहाँ जोड़ पा रहे हैं। आपने आंखों का जिक्र किया। हाँ जी। और मुझे लगता है कि जब भी कविताओं के एक्सप्रेशन की बात आती है और एस्थेटिक्स की, सौंदर्य बोध की जब भी बात आती है, तो आंखों का जिक्र तो उसमें आता ही है। जी बिल्कुल। आंखें, हम कहते भी हैं कि किसी के भी व्यक्तित्व का आईना है, या उसकी सोल आंखों से रिफ्लेक्ट होती है। तो जो आपने लिखा है मैं चाहूंगी हम जरूर सुने आपसे। मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ परफॉर्म करने से पहले, कि मैं जब भी आंखें परफॉर्म करती हूँ तो मैंने देखा है, सब मैं पूछती भी हूँ लोगों से कि किसके बारे में सोचा, तो लड़के भी लड़कियों के बारे में सोच रहे होते हैं और लड़कियां भी अपने ही बारे में सोच रही होती हैं। ये इसीलिए मैंने पहले वाली बात आपको ये बताना नहीं चाहिए था। हम लोग वी शुड हैव आस्क्ड देम टू रेज हैंड्स और पूछना था कि किसने किसके बारे में सोचा। मैं वो कर सकती थी, पर सॉरी, मैं चाहती हूँ कि ये लोग खूबसूरत फील करें, क्योंकि मैंने अपने पति के लिए लिखी थी और मैं देखती हूँ कि सब लोग अपने फेमिनिन, हर कोई फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लड़के इस रूम में बैठे हैं, आप भी बिल्कुल खूबसूरत फील करें। और फिर से एक बार कहा है कि, और लड़कियां तो मुझे पता है कर ही लेंगी, हम लोग सेल्फ लव कर लेंगी, है ना? डू वी अग्री? है ना? चलिए, कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती। अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूँ या यूं कहूँ कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है, या यूं कहूँ कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूँ तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है। तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूँ, तेरी नज़रों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं। अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत हैं तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज़ ढूंढना छोड़ दूं, तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। क्या बात है। किसने किसके बारे में सोचा, कोई बताना चाहता है? किसने किसके बारे में सोचा इस कविता को सुनते हुए? चलिए, they want to keep it secret, let it be. इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बारे में सोचा है ना जी। नो प्रॉब्लम, आप करिए जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।
ये सारे शब्द जब निकल कर आ रहे हैं जी, तो आजकल नया आप पढ़ क्या रही हैं? मुझे पता है कि जावेद जी को आप बहुत प्यार करती हैं, जावेद अख्तर को, अमृता प्रीतम जी की शब्दों की और उनकी गहराई की झलक आपकी राइटिंग्स में और आपके अंदाजे बयां में दिखती है। लेकिन और ऐसी क्या किस्से हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं जिनको आप पढ़ती हैं जिसके आधार पर आपका एक्सप्रेशन इतना मजबूत और इतना गहरा है? मैं जादूनामा पढ़ रही हूँ अभी फिर से, जावेद साहब किसी ने मुझे गिफ्ट किया तो मैंने मिली है उनसे अभी तक? मिलना हुआ? कुछ सुनाया उन्हें? उन्होंने मुझसे पूछा कि जानती हो नायाब का मतलब क्या होता है? और मेरे पापा जब भी मुझे बचपन में कहते थे, और ये चीज़ें आप गूगल नहीं करते हो ना, तो आपके मेरे पापा मुझसे कहते थे दुर्लभ, रेयर। तो मैंने उनसे कहा दुर्लभ, कह रहे नहीं गलत। तो मुझे इतना बेइज्जती फील हुई कि जावेद साहब ने मुझसे पूछा मेरे नाम का मतलब, और मैंने कहा नहीं सर दुर्लभ, रेयर। कह रहे यस रेयर, आर यू रेयर? आई सेड यस सर आई एम। तो बस इतनी सी मेरी बात हुई उनसे और मेरा दिन बन गया। क्या बोलूँ, मतलब क्या बात है। आई थिंक ये वो वाले मोमेंट्स होते हैं जो मतलब आपकी डायरी में रजिस्टर होते हैं। मैं गुलजार साहब से भी मिली हूँ। हाँ, बताइए कैसा रहा फिर वो अनुभव? वो गुलजार साहब से मिलना ओके। तो मैं एक इवेंट में गई थी और मैं पॉपुलर भी नहीं थी तब, बस शायद मुस्कुराओ रिलीज़ हुई थी, 5-6 महीने हुए थे। ऐसा नहीं था कि लोग मुझे जानते थे। तो उनका एक बुक लॉन्च था जिनमें वो आए, उन्होंने अपने किस्से सुनाए, और तो उन्होंने बोला था कि वो रुकेंगे स्टेज पे अगर आप तमीज़ से लाइन बनाएंगे। पर हम लोगों ने कहाँ तमीज़ से लाइन बनानी थी। मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी और सब लोग चढ़ गए स्टेज के ऊपर और सब साइन कराने लगे। तो फिर वो लोग गुलजार साहब को वहाँ से ले गए। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने करीब आकर के बिना मिले कैसे चली गई। तो सबने कमरा खाली कर दिया और मानेंगे जहाँ गुलजार साहब बैठे हुए थे, मैं उस कुर्सी पे जाकर के मैं वहाँ स्टेज पे बैठी घूम रही हूँ, एकदम परेशान कि यार मतलब इतने मैं मिली नहीं, मैंने आशीर्वाद नहीं लिया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर ना उनके मैनेजर हैं, मुझे नहीं पता वो शायद मुझे कैसे जानते थे, शायद उन्होंने मेरा वीडियो देखा था। वो नीचे पानी के लिए या चाय के लिए बोलने उतरे और उन्होंने सब में से मुझे देखा और कहा यू वांट टू मीट? आई सेड यस सर। और वो सबके बीच में से मुझे ले गए और मेरे हाथ में उनकी किताब थी और मैं उनको देखते ही आई फेल्ट सो मच इमोशन कि मेरे आंसू यहाँ और बहुत ही, और मैं ऐसे कांपते हुए बोली कि सर मुझे आपका आशीर्वाद लेना है। और उनका नहीं। मैंने कहा मैं बेइज्जत होने के उसमें निकलती हूँ घर से क्या। फिर उन्होंने कहा कि बेटियाँ पैर नहीं छूती। एंड और पता है मतलब इट्स द यूनिवर्स। और मैंने उनको इतना नहीं बोला कि मुझे आपके साथ तस्वीर लेनी है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आई वाज देयर और मैंने कहा सर साइन कर दीजिए। तो वो बुक पे साइन करने वाले थे और उनके बुक कवर पे उनकी तस्वीर थी। मैंने कहा नहीं आप इस कवर पे कीजिए ताकि मैं इसको निकाल के फ्रेम कर पाऊँ, किताब तो सिर्फ रखी जाएगी। वो भी मुझे अटपटी नज़रों से देख रहे हैं कि क्या फ्रेम कराना चाहती है। और फिर जो उनका मैनेजर था उन्होंने मेरी बहुत सारी तस्वीरें मेरे बिना कहे खींच दी और फिर मतलब इट वॉज द डे। क्या बात है। अविनाश जी आ गए हैं यहाँ पर, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अब बस इस सेशन को हम एंड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जाने से पहले आपकी एक प्यारी सी कविता के साथ हम यहाँ पर इस सेशन में बातचीत को विराम देंगे। अब आप सब जानते हैं कि क्या करना है ना। हमने खूबसूरती की बात कर ली, हमने सेल्फ लव की बात कर ली। मैं हमारी उम्र की लड़कियों की बात करना चाहती हूँ। जेनजी बेचारी इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी है कि कामचोर है ये। मैं बताना चाहती हूँ कि जेनजी रूल ब्रेकर है, जेनजी स्टीरियोटाइप ब्रेकर है। और मैं आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि मेरी उम्र की लड़कियाँ अल्हड़ बागी, जितनी आज़ाद उतनी ही जिम्मेदारियों में कैद। इसलिए पलकों पर जब कोई बड़ा ख्वाब रखती हैं तो देखती हैं उस पर पहले से ही पुश्तों की इज्जत का बोझ रखा है। कि आप देखिए कभी आप कभी भी सपने देखते हैं तो आप बहुत बड़े सपने नहीं देखते। बहुत ही कम लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि हम अपेरेंटली ख्वाब औकात अनुसार देखते हैं और हम ही डर जाते हैं कि यार ये तो टू बिग हो गया है ना। कि मेरी उम्र की लड़कियां अल्हड़ बागी, जितनी आज़ाद उतनी ही जिम्मेदारियों में कैद। इसीलिए पलकों पर जब कोई बड़ा ख्वाब रखती हैं तो देखती हैं उस पर पहले से ही पुश्तों की इज्जत का बोझ रखा है। फिर भी नाचते हुए कर लेती हैं उस जिम्मेदारी की रस्सी को पार और पहुंचकर मंजिल पर जला देती हैं वो रस्सी, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए पक्की सड़क बनाई जा सके। मेरी उम्र की लड़कियां। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्र की लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं जी, और आपने अभी जिस अंदाज में यहाँ पर हमें अपनी पूरी जर्नी बताई और आपके शब्दों की जो गहराई है, आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में हम और बहुत सारी खूबसूरत रचनाएं देखने वाले हैं। और इंतजार रहेगा राजकुमार का तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में। थैंक यू। ऐसे अच्छी बातें कोई अकेला कर ही नहीं सकता, बातें दो तरफा महफिल है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गर्ल पावर। हाँ, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Lovely. It's been a star-studded affair while we had the radiant Sanya Malhotra here with us. We have an actor here with us who will make you believe in love. Absolutely, Arun. From hits like Laila, Majnu to Bulbul to the Mehta Boys, please welcome with a round of applause Avinash Tiwari in conversation with NDTV's Vedika Sood. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Well, if it's not intimidating enough, sitting next to someone so tall makes it even more intimidating for me. But sometimes, ladies and gentlemen, success doesn't arrive on opening day. It circles back when the world is finally ready to see you. Our next guest knows that journey far too well. From a film like Laila Majnu, once written off, later reclaimed as a cult success, to carving a space without chasing templates, he's quietly built one of the most interesting careers in the industry today. He's played the lover, he's played the outsider, he's played the antagonist, and often that character that stays with you even after the credits roll and beyond. At a platform like NDTV YUVA, where we celebrate voices that challenge the norm, it's only fitting we speak to someone who refuses to be boxed in. Please welcome Avinash Tiwari. Thank you. Are you feeling the love? I'm feeling the love for sure. Good evening, everyone. That was such a lovely introduction. Thank you. All right, we're going to start from the beginning, Avinash. How did the journey to Bollywood happen? Journey to Bollywood. Okay, I'll have to get back to my engineering days. I was in second year engineering. In fact, the first semester itself, I think I was away from my sheltered space. I was away from home. I was staying in a hostel, had time for myself. And somewhere, that stupid 19-year-old boy thought that he's good at acting. He had never done an acting ever in his life, but he thought that he's good at it. And I think from there on, I think double that age now, and I'm still trying to prove that young boy that I'm good at this. And this has been my journey. I'm trying to make him feel right, that he was right when he started off, and hence proving everyone here too that I am a good actor at my job. I do a decent job at what I do. Of course you do. Now let's talk about Laila Majnu. Initially, it didn't find the space that it should have. Later, it became a cult. Audiences loved it. Did you all love it? So, Avinash, I want to understand from you, what did that experience teach you about success? You know, it took me 15 years to get that film. Okay, 3 years of work on that film. On the third day, the posters being pulled down. No one has seen the film. 6 years later, 7 years later, it re-releases out of nowhere. And so two things. I think one thing I definitely realize is that one thing that Imtiaz sir has said, if you have a good film, it will keep finding its audiences. And the fact that the way success has been imagined by me or people like me changed in a certain way. I realized, you know what, we talk about gratitude. I realize what self-awareness does to you, and why self-awareness is much more important than gratitude for me, is when you realize that you are knocking on a door, knocking on a door, knocking on a door, and that door doesn't open up, and you feel like everything is gone to waste because you've put in so much hard work at a certain point, only to realize that something opened somewhere else. I'm just not aware of it at this point of time. The effort that I put in here, I didn't see a result, but something has happened already. I truly believe equilibrium. Equilibrium is the biggest law of this universe. It has to find a way to average out. But at that time, was that the thought? No, which is why the question is that success. Yeah.
success is when you realize it, not when you have failed. And once you realize this, you want to spread it out and let the world know about it. That, you know what, I felt that I was knocking here, there was nothing here, there was nothing here. But something opened somewhere else. And I got aware of it. So if there is a way that you can get aware of what has opened for you, you'll always feel successful. So the delayed success of Laila Majnu, if I could speak about it for another moment, did it make you less dependent on validation and more aware about how unpredictable Bollywood is, how unpredictable people could be, how unpredictable the industry is? I mean, that was quite clear to me that this industry is very, because it's dependent on responses of the audiences, right? I create a product, I come to you, you like it, you don't like it. If you don't like it, gone to shelf. Who's giving you another opportunity? And that's one problem of being an outsider, right? There's not many opportunities that are going to come to you. So your one failure is gone. That's it. That's about it. But at the same time, this belief, and we have always heard this, that if you really are talented and you put in the work, there would be results available. And I had kind of stopped believing in it. I'd stopped believing that it would really convert into something. So that has changed for sure. What has changed is that this belief, and I want to again reach out to people and say that कि अगर आपने की है ना मेहनत, आपने कहीं एफर्ट डाला है तो कुछ ना कुछ तो है. आपको यहाँ नहीं दिख रहा है बट कुछ तो है. ढूंढना है मुझे. आपको शायद वो नहीं मिला कि कहाँ है वो, कहाँ रखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ निकला है. That is something that definitely came out. Industry was always tough. It is, I keep saying this, and Is it still tough? I think you look at it from this point of view. My film released in 2018, and I was just having a conversation कि 2015 से 2020 के बीच में किसी भी आउटसाइडर की अगर हम बात करें तो कितने नाम आते हैं जो आपको याद हैं कि वो फिल्मों में उनको मौके मिले. मुझे 2 नाम थे उस वक्त याद. So it's been that difficult, right? And like I said, that opportunity came after 15 years of already being an actor. So it was always tough. I was never expecting it to be easy because I really wanted to do this. How do you pick up the pieces and move on? Because life goes on. वो कहते हैं ना, जिंदगी एक मुसलसल सफर है, करीब आई मंजिल तो मंजिल बढ़ा दी. And that just keep going on. I feel in this, definitely, there are so many other thoughts that come through, right from your existential crisis that pop out. Why am I doing this? What is this for? And you get a chance to delve into all of that, indulge in it. I'm not sure many people are interested in existential crisis at this point of time. It can be inspiring. I know it's not aspirational to talk about struggles, very honestly. Struggles make you. Yeah, I truly, like, I've sat down on the other side of the stage many a times, and I know I've sat there. I have not liked struggle stories. You know why? Because they're very inspiring, but I don't want any struggle in my life. I want to be up there. And the idea that we have been presented is that that is aspirational. If you're not that, you're not enough. You're not enough. So I think what has driven me now is to get beyond the idea of the struggle and hardship, because it is something that everyone goes through. Your struggles would be your own. My struggles would be my own. And we all go through those struggles, but it's about how do I become aspirational to a point that you want to be like this. Even वो हमारे यहाँ भी हो गया कि झंडे गाड़ना, जो हम लास्ट हम बात कर रहे थे झंडे गाड़नों की. मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि क्यों गाड़ने हैं झंडे, क्यों चढ़ना उस एवरेस्ट पर, उस एवरेस्ट पे जाके झंडा गाड़ना है, क्यों, और उसके बाद फिर नीचे उतर के आना है, फिर एक झंडा गाड़ना है. This doesn't end, right? It's a ongoing thing. We'll keep going on. So अगर आपने एक झंडा गाड़ दिया, like दूसरा भी गाड़ ही सकता हूँ. That's the only thing that keeps going on. यहाँ हार गया, दूसरी जगह जीत जाऊंगा यार. And I think that is what keeps making me go on. I think everyone here, people who are sitting here in their lives, they would all have felt a bit of failure around. Pick them up, themselves up and moved on. Because और कुछ जिंदगी उसी का नाम है. जिंदगी इसके अलावा आपको कोई और options देती ही नहीं. It's Option 1, 2, 3, all the same. Option 1, get up and go. All right, we're now going to talk about the label character actor Avinash.
Do you see it as a compliment, or do you see it being, just kind of stereotyped within a box? I don't understand character actor. What does that mean? I understand actor. I also don't understand versatile actor, because actor is supposed to be versatile. So it's how are we using these words? And they are become so easy in our conversation that we don't even question it. Iska kya matlab hai? Oh, he's a versatile actor and he's an actor. So like, what is the difference? You understand what I'm saying? So I don't understand. The words have been used very loosely around. Nobody questions it. I'm sorry if anyone gets bothered by it, because I genuinely don't understand it. Kya matlab hai? It'll be so interesting if this was off camera. Vinash is sitting in his room with his friend talking about these words. I can imagine what you would be saying behind the scenes. Right now, you're being a bit restrained. I swear to God, I'm not. This is the real me, because I have no reason to be restrained. Who to fear for what? All right, I want to talk to you also about, the audience here. You've said this in the past that, there's celebrated actors like Irfan Khan, Manoj Bajpayee, my personal favorite as well. People love their work, but not all of them turn up in the theaters to see their movies. Is that, an indication of the audience then? So I was having this conversation. This is just a thought, observation that I want to share with you guys. Let me know if you agree to it. And it's an observation. I feel if you look at film industries around the world, I'll start from West, because all we do is most of the times clone what happens there in a cinema. I don't think only vanity and desirability is rewarded there. If you start looking at what brings the footfalls eventually, is people who you look up to, and what they are really selling you is this desirability and vanity, right? From the youngest actor to the oldest, everyone will be having a six-pack. All the girls need to be this template bodies. It's just desirability. And that's only for me, I feel, I won't say only in Hindi film industry, but majorly in the Hindi films. And that has to do with the audiences somewhere, because it's not seen anywhere else. It's not that all the actors want to come with a six-pack, तो कि आप उसे ही पसंद कर रहे हैं. I'm not just saying six-pack. What I mean is the desirability quotient of it, the way you portray vanity, and how vanity is such an important thing. I feel that also happens because there's so many other verticals that are associated with films. Fashion, brands, XYZ, which we start catering more than the films in itself. So when you talk about some of these stereotypical images and looks, do you try and fight that, resist that? And if you resist it, to look a particular way, to dress a particular way, to talk a particular way, does it come at a cost? I think my vanity is only dependent on the vanity of my character that I play. And which is why, if you're playing different characters, you would be looking different. You can't be looking the same guy all through your films. But we have enough films that we have seen where people don't take that effort and they are rewarded. So I sometimes feel the audiences are very, very easy on some people. The audience are very tough on some people. Some get a lot more opportunities, some don't. Because eventually the buck lies with the audience. It's not to do with on the other side. I've heard a lot of people keep talking about the responsibilities of the creator. और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है. पर आप जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? Is that not worth asking a question? Is the responsibility always only on the creator? Somebody had rightly said, you get the government you deserve, you get the cinema you deserve. Because you are the one buying the tickets for it. You're the one going and voting. So rather than putting it on us, we should. And because before an actor, I'm an audience myself. I'm an audience even today. It's a worthy question to ask to self and everyone around, is this what we want to reward? Because this is what eventually is going to come through. And it's not only for films, because that's an audience. I'm talking about developing as consumers, not just for films. But India is is the country that's going to be one of the most heavy consumption countries in the world. What we consume will derive what will be made in the world. How we evolve as consumers is going to drive this world. Do you see any conversation about it? Is there any conversation that we sit down and talk about these things?
And I feel like I want to, because I say I can walk in right now and we have those glasses with cameras on, right? And it's prevalent, everyone is, and we have heard so many stories of men holding their phones and making some videos, right? Today, if they want to do it through their glasses, there's no way you would ever know. Have you heard any conversation about it? Because paise, capitalism, nobody would say a word. But it's worthy as a consumer to ask a question. Because I have a mic, I can feel important and ask these questions. That's the only thing. As a role model to the youth, do you feel that pressure that at times you must speak out? Very often we do see in Bollywood, we don't hear enough on issues that we must. No, I only speak because I don't feel people speak about certain things. I feel the need that this conversation needs to happen. I feel frustrated about it. I can't deny it. I also know a lot of struggles in my life that I've experienced, and many around me have experienced it because of the system. It's not people. It's not people who do anything wrong. It's the system that does wrong. And the system can only evolve if we make the conversation and say, okay, let's do something about it. We should change and shift. There should be a voice about it. But that will take so much effort. It will take so much of मेहनत. कौन करे, क्यों करे, तो छोड़ ऐसी ही है. सब कुछ चलता है सर. चल रहा है जैसा है चलने दो. All right, coming back to your career and the path you've taken after Laila Majnu, one would have anticipated, expected that Avinash is now going to come as the lead in another romantic movie. That didn't happen. Why? So first, the film got taken off on the third day itself. So who's gonna come and give me an offer, right? Secondly, I want to stop there. I want to stop you there for a moment. Tell us about those days also while you talk about this. After the third day, saying that offers didn't come immediately. I think when it takes 15 years to get to that point, and you've really put your heart and mind into something, and on the third day it's taken off, you have nothing more left to feel. You know what I mean? Like it's the end. मतलब वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आपने जितनी चीज़ें सुननी थी, सफ़र करना था, जो कानों में पढ़ना था, पढ़ ही चुका है. And then you feel like maybe it is not for you, Avinash. And I felt that several times. After that film, I felt that even more. Honestly, I feel that even now. Every third day, my film released yesterday. Okay, it has not made an opening. Maybe it's not a good film. Okay, but it does make you feel and ask this question: is this for you, Avinash? Is this really that you put in this kind of effort for this kind of reward? Is this what makes you keep going on? And I'm honest enough to have these conversations because it's fine. It's fine, absolutely. I really appreciate that you're being so candid. Looking back now, I want to understand from you what has been that turning point, that Hawa Badlegi moment in your life in the last 2 decades perhaps, where it all turned around for you in terms of looking up and saying, I'll pick up the ashes, I'll pick up the pieces, I'll move on. When was that moment of realization that dawned upon you? Genuinely, I feel that it's from day one. I have only felt that I have to keep moving on, pick my things up and keep moving on. Sometimes I felt like Sisyphus, who's rolling this huge boulder up the hill and is being cursed by the gods, that the moment it gets to the top, the boulder will roll down again, and he's in this relentless act called life. Okay? So sometimes in this, I also go back to Albert Camus saying, imagine Sisyphus to be happy. So I say that I'm also happy in life, also. But that's what life is. I mean, sometimes it feels, it's a great highway, and you're like, life is amazing, beautiful. I'm on Bandra Worli Sea Link between the sea, and I feel like life is great. And cut to, you reach to a certain point, and there is a bottleneck again. And that is life. Chaliye, Ruhani conversation khatam. Ab let's talk about other things as well. Let's talk about OTT versus Bollywood versus films. I want to understand from you, where do you think you get more creative freedom between the two? You've aced both, so tell us more. What do you look forward to more? And if you don't want to answer it, where's the creative freedom more? See, I think there is no OTT versus films, first of all. I think they coexist. And in fact, what OTT has really done is brought so many jobs to this industry. There's so many people who are working today because of OTT. What I see the biggest power of OTT is that we have a distribution system for 200 countries now.
Your films, your shows can reach to 200 countries, which was not there earlier. It's the biggest power that we needed at this point of time. I feel personally, and we have been struggling to find a pan-India film, a film that can be looked by our country and say, ये हमारी देश की film है, because अभी तक तो हम इस industry की film है, उस industry की film है. I feel we have a great opportunity with OTT to bring a cultural impact on the world as cinema. I feel we watch a lot of content from around the world, which we should, but this is a great opportunity now because we reach to 200 countries. Cinema will always be a space, theaters I feel, will be a space that will become the home ground for actors. But personally I'm asking, आप generic answer दे रहे हो यहाँ देखिए पे, मुझे पर्सनली बड़ी सिंपल सी बात है. अगर मैं मुझसे आप पूछेंगे तो मैं चाहूँगा कि लोग टिकट लेकर मेरी फिल्म देखने सिनेमा घरों में आएं, क्योंकि they have taken that time out, taken the effort to come and see me. That gives the biggest joy to an artist, rather than you sitting on a pot in the morning and just scrolling through your, that's genuinely. No, if you but ask me this, I can be in my room watching you on OTT, giving you 2 hours of my time as well. Yeah, but with my family. See, the point is that's what the difference is. I say कि the date is at my place and the date is we go out somewhere, for an evening. I book a table. There's a difference, right? So I would want people to come and give me that kind of love. I'm a greedy man. All right, you have a lot of young people here. It's an audience where the average age must be between 20 and 23, 25. I want you to speak to them and tell them about Bollywood. There's so many, not only here inside the hall, but outside, who want to enter Bollywood. What is the one illusion you think that they should absolutely do away with if they want to be aspiring actors? Illusion, you need to be slightly delusional anyways to be part of this industry. You need to have some bit of, because the world is going to say, "Arey, nahi, ye nahi ho sakta, bhai, it's not possible." Like for a guy like me who was born in Bihar, 7 came to Bombay, it seemed too far away for it to happen, right? So you need to have some amount of delusion anyways, right? Also, sorry for this, but I wouldn't want to call it a Hindi film industry. Bollywood anyways is a taken word from the West. I really despise it, but we can't stop taking that name continuously. I think one thing that definitely would like to say is that come here because you really want to do this. Come here because you really enjoy coming and performing, because that is the eventual certainty that if you'll work, you'll get the joy of working. What the audience rewards, what the industry and the trade would reward is beyond our hands, our control, God's grace. तुम हीरे होगे, चमकोगे तभी जब रोशनी तुम पर पड़ेगी. But हीरे होने का काम मेरा है. So I would say that is one thing that you can definitely or should be definitely working on, that you ensure that you are that diamond. And one day when the light falls on you, bro, you shine and glow like you were supposed to. So you have a lot of difficult days. From what we've seen and talked to you about, you have very difficult days in Bollywood as well. You come with huge aspirations. So for those aspiring to be actors in this hall and outside, what is the one thing, Avinash, they must hold on to? Jo bhi ho jaye. Failures aaye, flops aaye, criticism aaye, critics diss the film completely. What is the one thing they must hold on to irrespective? I can share what I have tried to hold on please. to. And couple of things for me was, I always felt I don't want to live my dream at the stake, putting my responsibilities at stake. अपने सपने जीने के लिए अपने जिम्मेदारियों को ताक पे नहीं रखते. ऐसा मेरा मानना है. There is a certain value system that you've been brought up with. You should know what you say no to defines your character. For me, whatever I have gotten to, good, bad, might be different, but it has only happened because I always had the freedom to say no. Whoever says this to you, that beggars are not choosers, who the hell said that you are a beggar? First of all. So why do I believe this conversation?
having that faith, I think, is the most important thing. That faith that मैं जब मेरी फिल्म एक्चुअली लल्ला मजनू बंद भी पड़ गई थी बिफोर इट स्टार्टेड, तो उस वक्त मैं अपना ये कहता था कि अगर ये बन गई तो जीनियस, नहीं बनी तो मजनू, है ना. और यही है एक इस करियर में कि इफ़ यू आई हैव द फेथ इन इट, बिकॉज इट्स ओनली फेथ. It's faith in God, it's faith in you, it's faith in your talent, whatever you want to have faith in. Don't let that go. I think because that is the reason you will be able to move or take any step in your life. वही साथ था जब कोई नहीं था. That faith in you. Even your parents didn't believe you at that point of time. You had that faith in you. Don't let that go. That is what I would want to say. Don't let the faith go, guys. Wherever you are, whatever you're facing, that's what Avinash has to say. Let's talk about Khaki now for a moment. The role of the antagonist. How difficult is it to play such a dark role and not let it impact you? Did it impact you? When you would go into your room after, whole day shoot, would you be able to keep that role aside and get back into yourself, into your skin? Or were you fighting that? Did you have to live that character day in, day out during the shoot? See, I keep saying this is the job of an actor, right? कि मुझे थोड़ा अपने आप को छोड़कर किसी और की तरह रहना है और जब काम खत्म हो जाए तो वापस अपने आप आ जाना है. यही काम है मेरा. So I don't know why actors sit down and glorify this process and it is spoken about a lot that मैंने ये किया, मैंने वो किया. ये हमारा काम है. ये ज़रूर है. The only thing that happens is, and चंदन मैं तो specifically नहीं कहूँगा, but most times what definitely happens is, you know how when you lose weight you have stretch marks on your body? When the parts leave you, you feel like there are some marks on your body. They don't do anything wrong to you, but they leave a certain mark on you. I do feel that. I sometimes feel that there are certain moments in real life and you feel ये कहाँ से आया? Maybe there is a remnant somewhere. Yeah, that's the only thing I feel. Otherwise, cool. You pay me also for this, so I'm glad. I'll take on tougher parts, just pay me well. All right, we spoke about the antagonist. Let's talk about Majnu for a moment. In real life, not at that intensity, have you ever been a Majnu of sorts? I think Majnu also would have to learn from me. I think love is something that we have, especially if you are one of those sensitive kinds, you would have experienced it. And heartbreak? Of course, we all have experienced heartbreaks. And for me, like I keep saying, for me that heartbreak was not necessarily loss of love, it was more loss of faith. And nothing breaks you more than that. Because I've had love in the sense, love तो माँ बाप घर वालों से प्यार सबसे मिला ही है. हम एक रिश्ते को खास अहमियत देते हैं. But we only to realize that it's not just love, it's more that you're putting into it. And when that faith breaks is what puts you all in dismay. You don't know how to function. So yes, I have felt some intensity. Majnu didn't have any responsibilities, didn't have any aspirations, didn't have any dreams. I do. So I'm here. And he's Majnu. All right, I'm going to go into a very quick rapid fire round. But before that, one last question to you. What does success mean to you today in your perception? Very quickly, a quick answer. Success? Yeah. Success for me now is happy family, healthy family, good money coming in, not to worry about EMIs next month's what I have to pay for. And then keep getting love from people. What more? It's amazing. Perfect recipe. Okay, rapid fire round, very quick answers, very little thinking. Let's start. OTT or theatre release? Theatre release. Okay, a script or director, what makes you say yes to a movie? If there is a legend director. Otherwise, script is the first one that I... Fame or freedom? Freedom with fame. सब कुछ नहीं मिलता है इतने आसानी से. ये तो मैंने आपसे कहा मैं बहुत greedy आदमी हूँ, बहुत greedy आदमी. Method acting or instinct? Acting. Acting. We don't believe in method acting, okay? And, it's a very abused word. We still don't know. It's a debate on it. Chalo, we'll have the debate after this. Someday. Chai pe charcha later. Okay. One co-star who genuinely surprised you, Avinash. Co-star. Co-star,
I think, when I met Tripti for the second time in Bulbul, something had happened to her. I was taken aback at that point of time. Her performance in Bulbul really made me feel like, why? मैंने कहा कि अच्छा मेरे साथ फिल्म की कुछ तो सीखा है. A recent role that you wish was offered to you and you think you would have done a stellar job with. I wish तुम फिर मैं कहूँगा धुरंधर है. I would have done a good job too. I think I would have done a good job. But yeah. Okay, one film of yours that you think deserved more love than it got. All my films. All of them. Okay, Laila Majnu, Heartbreak or Healing? That's for the audience to answer, generally. Okay, we'll go with Healing. One emotion you find hardest to perform on screen? Maybe two of them. Fear and genuine laughter. Absolutely genuine laughter in that moment is slightly difficult. Okay, Avinash, what's the most non-actor thing about you? Everything. Zero vanity, let's put it this way. I've been forced to wear these clothes. I've been forced to sit down on a chair and put makeup. These are the realities that people don't know of me, but this is what it is. I'm a lazy man. I only like to get up and work when I'm paid. And only because I have to earn a livelihood that I would do what I do. Otherwise, I'm quite happy sitting at home, chilling. All right, before I let you go, your favorite dialogue from Laila Majnu? One favorite one, someone from the audience is going to be Laila. आप मुझे आके डायलॉग बोल दो मैं रिपीट कर दूं. आप मुझे आके डायलॉग बोल दो मैं First, रिपीट let's find your Laila. Who's going to be Laila? Chalo, guys. Nayab, you want to come? Yeah, sure. Let's go. We have a Majnu also. Chalo, aa jao, ek aur Majnu. I don't even remember it, which is why I called it. I might not have a cue, but can you say that one कि तुम्हें मैं कैसे दिख गया? तुम भी तो अपने क्या था डायलॉग क्या था? मैं इजी वाला कर देता हूँ. Yeah, not being lazy at all. I'm with her. I am just asking for help because 7 साल पहले की थी मैंने ये फिल्म यार. जब मैं नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे. I'll do this. तुझे क्या लगता है? ये हम कर रहे हैं. हमारी कहानी लिखी हुई है. और ये दुनिया क्या, दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी इसे नहीं बदल सकते. And Avinash, before I let you go, very quickly, you have another movie coming up. If you would want to quickly tell us about it, it's with Imtiaz Ali. I'm doing a show with Imtiaz sir, which is O Saathi Re, which hopefully comes by the end of the year. My film Ginny Wed Sunny 2 has released yesterday. Please go watch it. Please take time, go and watch it with your family. I think if you go it with your family, you're really going to enjoy this. You can go with your friends as well, but family के साथ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा. Thank you so much. Thank you. It's been a pleasure, Avinash. All the very best. May we always see you at the top, and may we always have these conversations with you. Thank you so much for being with NDTV YUVA today. We have a graphologist, Avinash. One second. If you could get you back on stage, where's the graphologist? Graphologist? Not there? We're wrapping up? All right, we're wrapping up then. Thank you so much. Pleasure. We need a photo to Avinash. Very much. That was quite a lovely and insightful session. Now, before we start to wrap YUVA 2026, we want to thank our sponsors who made this event possible. Absolutely, Arun, and also a huge round of applause for a very engaging audience. Please give a round of applause for yourselves. Louder, that too.
Well, coming up next is an artist, an actress herself. Please welcome Aditi Saigal, who is also known as A. Dot on stage. Okay, she'll be coming in sometime from now, but let's get our conversations also going on. Tell us more about, we'll get the mic rolling in the audience, but your thoughts on NDTV YUVA 2026, because we were just wrapping up and we've entered our last session. Can we get the mic Yes, in here, the audience? please. And let's quickly go here. Can we please get the mic? Sure, we'll come to you as well. अरे 8 नंबर माइक है ना स्टेज पे. We're just getting Is there a the mic that's coming our way? Yes, yes. Lovely, we have a mic and... You guys have been so patient. We want more answers about your thoughts this edition. Yes, please. I'd really like to thank NDTV for organizing NDTV YUVA, which has been an amazing event, inspirational too. And this has somehow set a benchmark, a yardstick to measure the future events with. And I'm really thankful. When I walk out of this room today, I'll be a more enlightened human, more enriched and more aware. And I'm really thankful that you have served this platform for promoting the interaction between the young minds, YUVA, and the achievers, Akka Baddies. The anchors were really good. And the anchors, the team, in fact. course. You nailed it, guys. You killed it. Thank you very much. Thank you very much. And now there was a gentleman who wanted to speak. And before we hear him as well, we also want to thank our band. Can you give a huge round of applause? They've been lovely. I love each and every SFX that they added. Thank you very much. Now, yes, go ahead. I would again like to thank NDTV for this opportunity. I got to meet a lot of new people, a lot of new thoughts, a lot of new insights from different fields, from entertainment, sports, and everything. I would walk out of this room as a new and a better person with more inspiration and a new, different thing, or in something I would call a naya chul inside me to do something better and be a change maker. And the anchors were really good. The anchors were I was just trying really hard to fetch compliments. Of course, thank you very much. I mean, Do you have any more such organic comments. Thank you very much. Anybody else who wants to say something? Yes, there's a hand there behind. Sorry. Yes, ma'am. Please start with your name. Yes, I'm coming to you. We'll come to you after Hello, the answer. hello, sir. So I want to say that you are really handsome. Okay, I didn't ask her to say that, okay? And the way you spoke and the whole energy, you are so full of energy. Thank you very much. And ma'am, you too, you are so I also beautiful. got a compliment. Yeah, lovely. We'll send you You the check. people are amazing. Thank you. I love the way you did today. You were so energetic, the way you spoke. Ma'am, you too. Thank you. Dinner is on us. Sir, you are really handsome. Thank you, ma'am. So Thank you very look much. it. First of all, I would like to thank the NDTV that gave me the honor to be here. And I would like to say something about you, Spacely. Our anchor is really smart and very attractive. Thank you. Too Of many course, compliments for Arun. Again, dinner is on us, ma'am. Thank you very much. And payment will be cleared in 3 business days. Thank you very much. Anybody else who wants to share Our their thoughts? anchors really ate it today. Okay, guys, now we are overdoing it. No, but really. Now we can talk about You low-key NDTV. ate it. Sorry? You guys ate low-key it. ate it. Did you Loki get- ate it. Yeah. Ah. You killed it. Okay, lovely, lovely, lovely. We Loki ate it. Love that. Thank you very much. And again, moving on from the feedback as she started this, now Loki ate. Teach us some Gen Z slang, like, other than this as well, if you have. Go on, get the mic. Okay, this one I came across as like a few days back. It means shrekking. Do you know what shrekking is? What? Like shrekking. Shrekking? Yeah. No, I Do you haven't. want to take a guess or something? I just know trekking. Shrekking. No, yeah, shrekking. Has it got anything to do with Shrek? Yeah, the kind of. character? Yeah, kind of. Shrekking, wait. To avoid. No, No. somebody who's... Oh, wait. Shrekking, you're trying to portray yourself as ugly or something? No. Okay. Wait. It's basically mean that you date someone that you're not attached to, like in a hope that they will love you. Okay. Wow. I know this is This messed up. generation is complicated. I know, this is messed up.
But thank you very much for teaching us shrekking. Is there anything else that you have for us? Okay, I'll teach you one. Okay. Slay girl! अब हमें बता भी दो, when do you say that? What does it mean? What you just did was slaying, both of you. Thank you. Thank Slayed. Thank you. Too many dinners on you, Arun, now? Too many people. Sorry? Anybody? I say too many dinners on you. Oh Too yes, many people. 100%. Anybody else who's got a Gen Z term for us? Okay, there's a hand behind. By the way, just letting you know, there's an absolute amazing performance waiting for you. We're just setting up for that, and then, of course, you'll see that spectacular performance. Yes, ma'am. Ma'am, you look like a diva. Diva. Thank you. That's great, but is that a term? Is that a Gen Z term? Or you guys just use it too much? Anybody else, guys? Okay, that guy in maroon shirt. Can you pass the mic to him, please? What's your name? Lakshya. Lakshya. We need a music performance by you now. Oh, we all know you are a very good singer. No. Of course. Just one song, just one. उसके लिए हम एक अगला युवा रखेंगे. But anybody here who has a Gen Z term for us to learn? Okay, I have a term. What does Riz mean? Oh, Riz Or is that too easy for everyone to guess? Riz means trying to impress someone. That's what it means. Like, I'm trying to raise you up means I'm trying to impress you. Okay, I have another Gen Z word. I'm not a Gen Z myself, but I'm trying. What does ick mean? I-C-K. Guys, anybody from here? Ick? You got a take chance. this? Anybody else? A song from. Soon. What did you say? What does ick mean? Ick, I-C-K. Wow, Sorry, Gen sir. Z. What did you say? Ah. Something that makes you feel weird about something. Yes, so it gives you the absolutely correct. Thank you, guys. Thank you. Do you have any other term for us, Resha? Sus, but that's easy. Anybody here wants to tell what sus means? Yes. It means suspicious. Yeah. No. We're right? No? No. You're sus about something. Okay, then I'm confused with that Gen Z term. Isn't that what sus means? You want to share something? We're getting the mic. We're just setting up a last performance. Till then, we can have the conversations amongst us also ongoing. Yes, please, your name and what do you want to say? My name is Deepshikha and I have a 6-year-old. So I just ordered a toy for him. And when he opened it and he was like, oh my God, this is so sick. And I was like, is it that bad? Like, you know? Right. Because I ordered Roblox and it was quite expensive. Like for a 6-year-old, I did the hamper thing and everything. Then he told me, no, sick is cool these days. Yeah. Like, this is so cool. And what's the tea with your work? And I was like, what's the tea? Any gossip around work? And I was like, 6 years old telling me, what's the tea with this? And this toy is so sick. I was like, So amazed. sick means that you're doing that. It's been super cool exceptionally kind well. of a So do you think NDTV 2026 was sick? Yeah, absolutely. A huge round of applause, guys. While it's being set up, we can continue having more Gen Z terms. What does tea mean? I mean, that's an easy guess. Gossip, yes. We all love having tea. It's not. Say. Anybody else who wants to share with us how they liked NDTV YUVA 2026? It's been a power-packed day. We had sessions from young leaders to fashion designers to even world champions. Yes, please. Your name and you can share with us. My name is Prachi and I have a word for you, Delulu. Sorry? Delulu. Delulu means delusional, am I correct? And one more word, touch grass. No, that I can't guess. Okay. Well, that's... Yes, please. No, ask audience. Touch grass. What does touch grass mean? There's a request by her. Touch Not the grass, matcha Gen Z grass. word, but we don't know what it means. Does it mean to go out? Okay, it means to go out. Okay, guys, a few more minutes, and of course, then we'll have the artist with us
who we close YUVA 2026 with. But before we wrap, I know we've learned a lot of Gen Z terms. But if there was... Maybe one word that... one more if we had to go back with. So what would it be? Okay. Okay, don't tell the meaning. Okay, we'll ask the non-Gen Z maybe. The term is locked in. Locked in? Locked in. Sealed. Am I correct? Wait, sir, are you Gen Z? You're not Gen Z. So what does locked in mean? Just take a guess. Locked in means just sitting at home and doing work, whatever you Sitting at home and working. Confirmed. There's another non-Gen Z taking a guess. Logged in is? Confirmed. What is it? Can you explain? It's being focused at something. Oh, so you're logged in with YUVA. Like Yeah, that. I was about to say that. Love that. I can't skip that plug. But anyway, a few more minutes. And then we'll, of course, have the performance of the night. My name is Arun. My co-host is Rahesha. So let's also talk to you guys more about our Delhi edition of NDTV YUVA 2026. If you guys could describe in one word before we go towards our last performance. One word. Anybody want to start? Yes. Vibrant, and one more, impactful. Okay. Anybody else? Aspiring. That's lovely. Okay, with too many hands, I'll start from you. Fabulous. Insightful. Can we also have a round of applause for all of you for being such an engaging audience and sitting here patiently since morning towards the evening now. In just anybody else who wants to share how they felt about NDTV YUVA. Of course, the conclave was aimed at the Gen Zs, the youngsters, because NDTV YUVA, they're not just the change makers for tomorrow, but also the leaders at this point of time. Anybody else who wants to share how they felt? Okay, I think the audience is tired now, sharing the insights with us. I'm coming towards you. Yes. So it's again a Gen Z term if you can figure it out. It's low-key hard. No, I can't figure it out. You tell? You can ask. Low-key hard. Yes. Is it 2 words? Is it 1 word? 2 words. Anybody knows what it means? Low-key hard? Nobody knows. Is this a Gen Z term? Are you cheating? No, it's Gen Z too. Okay, what does it mean? So low-key hard means that it was great. Like we expected it to be less, but it was low-key better. So NDTV YUVA 2026 was low-key hard. Definitely. A huge round of applause on that. Yes, please. Will you try again making that matcha ceremony tree at home or not? You want to try making matcha? The specific anchor. Arun, will you make matcha at home? This is a request by... will you have matcha? Yes. No. No, he faked it on stage. Of course, Yes, please. You have a matcha question for me. Yeah, did you fake it on stage? No, honestly, I did. I didn't fake it because it was decent. It's just not my cup of tea. Matcha is not my cup of tea, maybe. I'm a chai person. I'm a true... I love chai with all my heart. Typical Delhi boy. So, yeah. And my producer is saying, chi, 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 chi. So, Mala, we should have a chat after this. But anyway, so what we'll do, Rahesha, now is we'll let them set up. Yes. Right? And we'll give you guys a little breather and brace yourself for the performance that's gonna be in front of you in a few moments from now. Right? So just be there, and of course, you will remember this for a very long time because this is going to be spectacular.
Performance. My co-host Arun can join me on stage. And ladies and gentlemen, welcome Aditi Saigal, who's also known as Dot. You have seen her in the movie Archies, but she is also known for her perhaps vintage style tunes. Please welcome with a round of applause, Dot on stage. A round of applause for Dot, ladies and gentlemen.
scented wind blows, lifting the artist and engineer. Let go, wrap yourself in indigo. Just take it slow in the terracotta glow. I can tell that you spend most of your time tucked away. It's just as well that you keep flipping pages through the ages. Ivory lights, windows, look to the stars, my dear. Whoa, Narcissus and windows, lifting the artist and engineer. Let go, wrap yourself in indigo. Just take it slow in the terracotta under the narangi. Spend your witching hour with me. Let all the words you keep sink to sleep. Let go, wrap yourself in indigo. Just take it slow in the terracotta glow. Let go, settle down in indigo. Just take it slow in the terracotta glow. Let go, wrap yourself in indigo. Just take it slow in the terracotta glow. Thank you. When I was young, I had a big narangi tree in my house in Allahabad, where I'm from. So that little line in there about the narangi tree comes from there. This next one is called Asymmetrical. I wrote it when I was in school. It's all about not being perfect and being not symmetrical on either side of your face. When I was a high school girl in my 11th year, took a psychology class. I learned fast with Mrs. Pearson. She wore spectacles and curls in her hair. She walked with a flair never found. She said to me, page 143, today we're learning about the mind. She said that love and attraction are just chemical reactions in the brain. We like our lovers to be with symmetry, just perfectly written on the face. Oh, Mrs. Pearson, I'm asymmetrical. Am I still beautiful? When I told her that, she looked at me and laughed out loud. She said if I could fit that in an essay, she'd be quite proud. You know, I only have the one dimple living in one cheek, and when I speak, it's all out of line. My right hand's strong, but oh, my left's so weak. And don't get me started on my spine.
I'm asymmetrical. Am I still beautiful? Am I a pretty girl? Am I still lovable? I'm asymmetrical. She carries herself like she's somebody else, and she doesn't sleep around, but she makes her way around the room. She sits on a shelf and sighs like it's hell, and when you ask her why, she lets out another sigh of doom. Oh, Lillian, you blow my mind. You can pedal it better than I. How can a person be so blind? In her head she can practically fly. In her head she can practically fly. She gets really vexed if she can't have sex, but if she does, it finds a way to slip into what you're saying to you. Oh, Lillian, you blow my mind. You can pedal it better than I. How can a person be so blind? In her head she can practically fly. In her head she can practically fly. In her head she can practically fly. I don't know if I should be right. The state of humanity. Lillian's hands, oh baby, won't you come here? Oh, come and save me, save me. Oh, Lillian, you blow my mind. You can pedal it better than I. How can a person be so blind? In her head she can practically fly. 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 Thank you. I just want to take a moment to thank NDTV for having me on board. Big round of applause for this whole evening. I'm really happy to be here. I'm Dot, and this is the last original I'll be playing. It's a new one, unreleased. It's called Strange Kid. As wide-eyed as I was before, back on the pretty stone floor.
Thank you.